ये 6 घंटा चलेगा शायद, 6 या 4। कौन किधर है? और तुम आज ये खेलोगे क्या बीजीएम में? हेलो आवाज नहीं आई। हेलो आवाज नहीं आई। और चैट बताओ क्या हाल है? क्या लगता है आज कौन जीतेगा? आईएनडी, वाइटैलिटी, कौन टॉप 3 टीम्स होंगी ये प्रेडिक्ट करो जल्दी। चलो कौन होंगी वो टॉप 3 टीम्स? हाय हाय, जब तक मैं ना आऊं मिस्टिक से काम। अबे चलो निकलो इधर से। गाइस, यूनिकॉर्न कॉडम हैज हैंडेड ओवर अ चैनल टू मी, सो थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। काइंडली सुपर चैट कर दो 10,000 का, मैं बाकी का देख लूंगा। क्या गॉडलाइक स्टेज 5 के लिए क्वालिफाई? गाइस, गॉडलाइक हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड नहीं, मतलब गॉडलाइक इज आउट। टीआर ने कल उनको हरा दिया, तो दे आर देयर। चेंज थंबनेल। थंबनेल तो इस यूनिकॉर्न को स्पैम करो ना, मैं नंबर देता हूँ। यूनिकॉर्न के नंबर पे स्पैम करो, अभी लिखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। मिस्टेक हो, अरे थैंक यू। चेंज थंबनेल, चेंज थंबनेल। What's up homies? Nothing much bro, what's up? I'm just too excited for the match. Let's see कैसा होता है आज यूनिकॉर्न की आवाज लड़के जैसे। अबे चलना, आज यूनिकॉर्न की आवाज लड़के जैसी क्यों लगी? अबे गधे हो क्या तुम? मैं हूँ ये। दीदी मेरा इनवाइट एक्सेप्ट। अबे दीदी किसको बोल रहे हो? अबे ये नंबर किसका दे रहे हो? हैप्पी रक्षाबंधन। We want mystic only। अबे where is vision? vision पता नहीं है, उसको जाके इंस्टा पे डीएम करके बोलो जल्दी आओ। उसको मैंने बोला कि आ जाओ, टाइम पे नहीं आना उसको भी। एंड क्लच इज ऑन वीसी ओनली, बट उसका माइक ऑफ है। आज ये चैनल मेरा हो गया ना अब से, तो बस अब मेरे से बात करो ना। क्या चाहिए क्लच तुमको? मैं हूं ना बस। ओह मिस्टेक, यस ब्रो। गाइस जल्दी, मैच शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, तो जल्दी से अपना प्रेडिक्शन बताओ कि हु इज गोना विन। लाइक द फर्स्ट मैच इज आईएनडी वर्सेस वाइटैलिटी, सो हु इज गोना विन एंड व्हाट्स गोइंग टू बी द स्कोर? लाइक 3-0, 3-2, कौन सा? हेलो मिस्टेक, हेलो अब्बास गेमिंग, आप लड़के हो? अबे यस ब्रो। विजन इज बिजी विद, सो हाँ विजन इज टू बिजी। आई एम कंफ्यूज हाउ यूनिकॉर्न साउंड्स लाइक अ बॉय ब्रो। मैं हूँ बे। Spryzen CODM RNT इंडिया है क्या? यस ब्रो, RNT इंडिया वर्सेस टीआर लोअर ब्रैकेट्स में है। जो भी जीतेगा दे विल गो टू स्टेज 5। IND will win। IND 3-2 0-0। यस ब्रो, IND। हाँ ये स्टार्ट हो गया अभी तो। गाइस लाइक कर दो, 13 वाचिंग बट 9 लाइक्स। अरे आई एम अ बिट बिजी है भाई। यूनिकॉर्न हटो, मेरा चैनल है। बॉबी ओपी, बॉबी को चाय मिलेगा कि नहीं देखो पहले आज। आई एम नॉट श्योर बॉबी को चाय मिलेगा कि नहीं। मिस्टेक चैट्स देखिएगा तब निकल। IND 3 वाइटैलिटी 0। IND 3 वाइटैलिटी 0। अच्छा ये प्रेडिक्शन है तुम लोग का। आई गेस 3-1 और 3-2। मैं को इससे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट 3-1 3-2 विल बी माय प्रेडिक्शन।
बेड मिलेगा, अरे बेड क्यों मिलेगा, चेयर से नहीं हो पाएगा। 17 16 15 अबे 10 सेकंड होगा। हैशटैग चेयर फॉर बॉबी, चिन्मय कांडेलवाल, अरे चिन्मय और व्हाट, टेंशन मत लो, टेंशन कौन ले रहा है भाई। लेट्स सी व्हाट इज स्कोर, स्कोर चिन्मय स्टार्ट नहीं हुआ है ना अभी, तो अभी स्टार्ट हो रहा है, देखो ना, अभी आईएनडी वर्सेस विटालिटी शुरू होगा। गॉडल बाहर, शॉकिंग, अरे गॉडल लिटरली भाई, गॉडल फिनिश्ड 5th आई गेस, एंड टियान ने कल जो परफॉर्मेंस दिया ना भाई, बहुत बढ़िया। और बता मिस्टिक क्या कर रहा है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, चैनल हैंड ओवर हो गया ना मेरे पास, तो मैं वही, आप किससे सपोर्ट कर रहे हो, आईएनडी वाइटा, देखो मैं तो ऑब्वियसली इंडिया तो जीतेगी, मतलब इंडिया तो स्टेज 5 में जाएगी ना, तो आई सपोर्ट, आई थिंक वाइटलिटी का पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था जियो में, तो पास परफॉर्मेंस के हिसाब से आई फील वाइटलिटी हैज अ गुड अपर हैंड ऑन आईएनडी, बट इट ऑल कम्स डाउन टू टुडेस परफॉर्मेंस एंड ऑल। हाँ बॉबी को चेयर मिल गया गाइस, बॉबी को चेयर मिल गया। वाइटलिटी, अरे ये गंदी चीजें मत लिखो यार चैट पे प्लीज यार। प्रेडिक्शंस हु विल विन, I feel either vitality or IND, Mystic GF reveal, अबे चुप कर, कौन सी टीम बाहर हुई 3RB, Unbroken, NS and Gordel। कौन मेरे चैनल यहाँ पे चोरी करना चाहता है? बॉबी गॉट चेयर, बॉबी गॉट, मिस्टिक तू वैसे यहाँ क्या कर रहा, मिस्टिक मैं इधर ऐसे ही आ गया, चैनल मेरा ही है, मोबाइल नहीं होता तो गॉडलाइक जीत जाती। हाँ ब्रो, कौन सी टीम बाहर हुई कल बोल तो दिया गाइस, बॉबी गॉट ए चेयर, मिस्टिक, कौन सी टीम बाहर हुई, अरे अरे ये बंद कर यार तुम्हारा, मिस्टिक हर जगह मिलता है तू, अरे भाई ये कॉडम के उधर मैक्स फॉरेस्ट कहाँ चालू है ये, पता नहीं भाई हमको मिलेगा इधर, देखो मैक्स फॉरेस्ट कहाँ चालू है ये, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ एको हो रहा है, बंद करो। मिस्टिक बेस्ट है यार, यूनी से भी ज्यादा, अरे भाई इनसे कौन, क्या जानो, थैंक यू फॉर द चैनल, आई रियली अप्रिशिएट मिस्टिक बॉड, अबे निकलना। हाँ मिस्टिक ही, मैं बिजी हूँ, मैं आई हूँ बस 5 मिनट के लिए। ये ब्राटॉप आया, ब्राटॉप क्लच कॉडम, यूनी चढ़ दो आज, मिस्टिक ही करेगा, छोड़ दो आज, छोड़ दो, अबे ओए शॉर्टकट, जीवन में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, कॉडम इज गुड। फर्स्ट प्लेस पे 15,000 USD गाइस, कॉडम, अबे यार कॉडम इसमें तो है, मिस्टिक इज बेस्ट, एक्सपोज विजन एक्सपोज्ड है भाई, उसको और कितने स्ट्रीम इंग्लिश में नहीं बता रहे हैं बे, वो मुझे नहीं जानती ब्राटॉप को, यूनी नहीं मिस्टिक, अबे क्या ब्राटॉप, That's Brat OP, Mr. Insane, thank you. Bratop is अबे लौड़े का हैकर भाई, बॉटम फ्रैगर इसका हैकर। Guys, Arab stream सुने क्या? अरे मस्त था वो वाला, अरबी stream is too। हाँ मैं बस इधर हूँ, मिस्टिक ही बोलेगा, मैं चुप हूँ। चलो मिस्टिक भाई तुम ही करो भाई, मिस्टिक को ही स्ट्रीम करने दो, अबे नहीं होगा मैं T3 स्ट्रीमर नहीं हूँ, स्ट्रीम पर होता नहीं हूँ ना, तो मेरे से स्ट्रीम नहीं होगा। I'm very sorry guys। शॉटगन हैक, अबे यार let's see, I think कमबैक कर सकता है विटालिटी। आस्क सैटर्न, अरे यूनी आर यू इवन ओके, क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ उसको, वो विजन को राखी बांधने के लिए। रुको मैं चैट पढ़ता हूँ, 2 मिनट दो मुझे, इसको बुला लूँ पहले।
All right, Bobby, you were actually fortunate enough to get your Hey, hands on this Bobby, beautiful device. Bobby. What is your favorite thing फिर about बॉबी this phone? बॉबी शुरू हो गई So है। as a content creator, one of the really cool features that it has that I have not seen another phone have सोए नहीं is बेचारा, actually इसकी the आंखें देखो ability to छोटी-छोटी record in सी हो गई है। 120 FPS. So that gives you just so many opportunities to slow things down, make some cool highlight plays, and really create some content that you can't do with Okay, any other so device. अरे थंबनेल चेंज किया But क्या तुमने? also, speaking कर दिया, about the कर दिया। games, let's go ahead हाँ, and हो jump गया। right into them. मिस्टेक तू भी बोल, तू भी खोल ले वाईटी, तेरा पैसा ही पैसा होगा नहीं भाई। Also, my girl Beef Mommy, मेरे को नहीं how खोलना about you वाईटी। feeling this morning? हमको actually वाईटी से छोड़ो What a भाई, beautiful बाबू, day बाबू। to kick this one तू off. हंस क्यों रहा है भाई? इधर आकर तू तेरे को इधर ला कौन है बता? We're kicking it off with a lot of अरे excitement. टीचर Bobby got a chair. टीचर अरे मैम आ We're गई। fight with a gladiator, no holes in my shirt today. And I ओ think इट्स आरएनटी वर्सेस टू रिपर, जल्दी बताओ कौन जीतेगा? आरएनटी वर्सेस टीआर में कौन जीतेगा? अबे तुम एंथम का है क्या यूनाइट में? एंथम नो ब्रो, एंथम डिसबैंड हो गई मोस्टली, जितना पता है मुझे एंथम डिसबैंड हो गई। मेरा मैसेज डिलीट किया। अबे क्लच कॉडम कौन है? मेंबर है ये, छपड़ी हुए मेंबर। Yeah, you know, it is so much coming into this RNT matchup, versus folks. TR, guys, Just to let prediction you is guys up. know, the way we're kicking off this stream, we got our RNT, qualification TR, match. This let's is our go last bro. one. What's the The winner score? of this one Predictive with moves the on to score champion. 3-1, We also got 3-2. our मुझे winners लगता है कि finals, which is gonna be देखो मैं happening at बताता हूँ the मेरा same क्या time. सीन है। But before RNT we lock played into very this good one, against we want you guys to learn a TR little bit yesterday, more about True but TR ने कल गॉडल को बहुत गंदा पेला, तो बहुत टफ होगा। But I think TR has an upper hand advantage. But let's see. क्योंकि अबिस अबे ये मत करो, स्पैम मत करो। हाँ आरएनटी ओके ठीक है भाई। प्लेयर प्रोफाइल सुन लो भाई। South Asia and the Middle East, ठीक है। and we were one of the first team to qualify for the stage 4 of the CODM World Championship 2021. I've been playing the game for over a year now. I started the game pretty late compared to my other TR3 teammates. RNT2. Let's see, bro. I'm also predicting the same. Season 3 of the rank. Let's Basically, see. I started for fun in the starting, but then everyone got pretty serious, so we were like, let's give comp a try. And then by the end of season 5, our team was like one of the teams which joined the comp very late, and they're like still in stage 4. So what makes us different is मिस्टिक भैया एक बार आपके साथ कॉर्ड खेलना ही है। and still we are able to get good results. ठीक है भाई out of खेलेंगे। it, and we मिस्टिक तेरी majorly कौन सी just टीम use है this अभी? strategy अभी majorly एक तो मैं in मैनेज like करता हूँ, rounds. विन Somehow रेवोल्यूशन we are pretty अरब good की with टीम the है, gunfights compared तो to the वो teams मैनेज who are करता हूँ playing मैं। since बट the आई वर्क beta, फॉर 7 and that's what I टीआर think. 6 अबे इसको बैन दो, Outside of क्लच the कॉडम को game, बैन दो। since टीआर I में was और आरएनटी में kind F1 of के a प्लेयर है person क्या? who does टीआर में really नहीं है। build आरएनटी relationships का outside जो the भी game रोस्टर है with my दैट्स फुल्ली teammates and F1 with the प्लस other मास्टर। teams and all. So it has helped Why me develop my 3RB team? character outside the 3RB game, team as in isn't there making anymore. friends Like with other in people, the opening up with other WC, people. they got So I just eliminated say keep yesterday grinding and by the I guess opportunity will find you. RNT. तेरी जीएफ का नाम भूल गया मिस्टिक में। अबे लौड़े निकलना इधर से, तू इधर आया ही क्यों है भाई? What an awesome video, and the one thing I take away from that one is just esports what bringing is full form of people TR together. sir? I know it अरे definitely, True Ripper, what's up has simp connected for me, Bobby? to a lot of It's people the- over the अरे years, and helped Unibot grow me आप as a person बढ़िया, as well, just being able to और bond with your Unibot आप teammates बढ़िया। and get better as a मिस्टिक squad. भैया माय Most आईडी definitely. When we were watching that निर्भन video, सिंह, Blaze ठीक and है I भाई। just like looked at each other फेकर्स for that हीरो moment. का We didn't प्लेयर है actually क्या? said, हाँ हाँ it ये brings me confidence. Call हीरोज of Duty ऑफिशियल में Mobile जो था just brings फेकर्स, so many people together, and it's तो वही amazing है। to see. Yeah, it is amazing to Hero- see, Hero and you know Focus. that's gonna be true rippers right there. Great piece from them, but also on the flip end, their opponents आज in Revenant. अरे Let's learn a little bit चिन्मय more about वेलकम टू द them. लेजेंडरी Check this out. फैन मेंबर बन गया। हाँ ये पैसा ही पैसा है ना इस बंदे पे, तो मेंबर तो बनेगा। मिस्टिक का असली नाम T69 प्लेयर है। अबे निकल। प्लेट कॉडम यूनिकॉर्न कॉडम, हेलो हेलो। मैं यूनिकॉर्न नहीं हूँ। ये बंदा बहुत लेजिट है भाई, ये अबिस ना बहुत बहुत डाउन टू द अर्थ बंदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूनिकॉर्न कहाँ है? यूनिकॉर्न पता नहीं भाई, विजन को राखी पहनाने गई है। यूनी को बताऊंगा, खुशी होगी। We used to look up to. These were the people that we learned from, But then now, we've gotten over it. We play more and more with them. We study the greatest, and I feel like we're the greatest right now. नेम रिवील कर दे जीएफ का, तेरे लिए 100 रुपए। अबे मेरे लिए क्या 100 रुपए? तू पागल है क्या भाई? We play with them every day. We talk to them ये every day. सब We मत share करा everything कर with इधर them. आके। And I guess the other ये biggest क्या कर रहा है thing तू? that Call of Duty has आपका फेवरेट कॉडम प्लेयर कौन है? मेरा with my फेवरेट कॉडम education, प्लेयर। as surprising as it would Nice sound, because question, I'm bro. using the winnings that I earned फेवरेट from the कॉडम game to fund my प्लेयर education and in a way to ease a show off Favorite my ओए parents. ओए They मेंबर just मिला thought मेंबर। I was wasting 100 रुपए भी money. दिया Not उसने। necessarily Hi, wasting my चिन्मय। time, because my parents have फेवरेट कॉडम प्लेयर, मेरा फेवरेट कॉडम प्लेयर मेरा whatever I want. And what I want is
also thank you for joining in as a member. And thank मेरा you अबिस, for मेरा अबिस, भाई तेरे लिए था 100 तुझे भेजूंगी मैं. मेरा अबिस फेवरेट बोल प्लेयर रहे है. नेम रिवील कर दे गर्लफ्रेंड का तेरे लिए 100 रुपए तुझे नहीं दिया रख ले है. तू 100 रुपए, तू 100 रुपए रख ले, मुझे नहीं. तू रख ले. मिस्टिक की जीएफ का नाम राइट हैंड. अबे लोड़ी क्या आप ट्राई हार्ड करते हो माँ का निकल. गुड लक ऑल इंडियन टीम कॉडम या मैं इंस्टा पोस्ट करके आती हूँ का न्यू वीडियो देख सकते हो क्या? हाँ देख लेंगे दोनों. भूल गया कि अबे नहीं भूला, मैंने बोला ना अबिस अबिस बोल. अरुण आपके जीएफ का नाम वीपीएन है. जिनमें पैसा इतनी खुशी यूनिकॉर्न को. अबे फिर से 100 रुपए का सुपर चैट. थैंक यू चिन्मय फॉर द लव एंड सपोर्ट. बट यू कैन डू वन थिंग. मुझे पता है तुम 10,000 रुपीस देने आए हो, मुझे पेटीएम कर दो यार. And we keep saying it's more than just esports, it's more than just gaming. We have families, we have the financial ability to pay for everything just because of this one little game. ओए मिस्टेक प्लीज अपना टैग अलाउ करना इंस्टाग्राम पे प्लीज प्लीज. नहीं मैं नहीं कर सकता. अरे मेरे लिए कर सकता है प्लीज. अबे नहीं, वो मैंने सबके लिए ऑफ करके रखा है. मेरा इंस्टा नहीं है अभी इधर पे, इसलिए ये देखो. झूठा. तो फिर से 100 रुपए दिया चिन्मय. We got Takeoff Hardpoint as map number 1, Fire Range as map number 2 on Search and Destroy, and then Crossfire on Domination. Now, the last time both these squads played, Mommy, it was a 3-0 in favor of Revenant, but it was a close series. How you feel about the layout? I am loving this layout. This takeoff hardpoint is going to be so spicy. Just because Revenant was actually able to beat out this team right now. True Rippers are going to have such a hard time here. An absolute amazing time. 100% win rate for the side of Revenant. 2 maps in a row. And they were able to actually have Vitality lose here. यूनिकॉर्न दो मिस्टिक बेस्ट. अबे भाई दोनों के लिए 100 रुपए. अबे निकल जाओ इधर से मत आओ. Thank you, True Rippers versus Revenant, and we're kicking it off, and it has already started off with some heat here on P1. Nothing but straight carnage. I like where I'm actually seeing Revenant right now, that even though they're not really stepping on the hard point, they're actually positioning themselves to go in for those power positions and tackle and maybe even get the contest. And speaking of contest, that's where we're going to be seeing it right now. Oh, you're going to see Zyro. He moves in, able to pick up 1 kill there. Being in a great position to contest this hill, but it's like playing ring around a rosy. Oh guys, match has started. Oh damn. And you're going to see Abyss and ओए आवाज आ रही क्या मेरी? The verticality, they being able to just shoot down and cover their teammates' Hey, hello, आवाज आ रही क्या guys? Hello, am I audible? अबे हाँ आ रही है गधे. अरे मादर चोद आ गया. I mean विजन आ गया. They need to clear out that side first before they're actually going to be able to Vision go आवाज आ there. रही क्या But मेरी? then it's Hello. going to be very good for them as the spawn is going to be in their favor here ठीक है. in launch. Guys, the match has started. What a game is going on. 11-17. चिन्मय आप बहुत खुशी हो. कमेंट्री क्यों कर रहा है तू? अरे सुनना मैं विजन जा रही अपना हूँ. प्रेडिक्शन दे जल्दी. करेगा भाई. हाँ भाग इधर से भागो. ये बताओ कॉडल कैसे जीतेगी टीआर आरएनटी में? किसका मैच है? टीआर वर्सेस आरएनटी. कितना स्कोर प्रेडिक्शन बताओ? But he's got with the slide and burn, he's able to take out 1. मादर चो 3-0 3-2 ऐसा. अरे जो मैच चल रहा है उसका देखना बाद में क्या बाद में देखना. अच्छा मैं बोल रहा हूँ टीआर जीतेगी 3-1 या 3-2 मुश्किल से. ठीक है. Wow. Coffee for Bobby. आज भाई coffee for Bobby. And they keep doing this for every single one of the hills. They keep having to slay कहाँ हो everyone तुम that's सब outside, VC and पर? then that's when they decide हम to लोग actually go हैं. in there for the kill. But then the rotation needs to come key for them, just because they go in there a little bit late, and the spawn control is not going to be that good. They need to go in for the Oh. rotation, knowing that there's only 10 seconds left on the clock. Mystic Toxic. What is? ये कौन सी टीम है? अरे अरे मैं गरीना खोल दिया. गरीना मत देखो. गरीना में अलग ही चल रहा है भाई. गरीना ये जिगर सुबह से यही टीम खेल रही है पता है गरीना में. हाँ यूडू आरएसजी ना लोअर ब्रैकेट का चल रहा है उनका. 10 kills to his name You so do far, RSC बहुत ऊपर as he gets taken out from Hello behind guys, the hello Ayush. You're gonna see Abyss, Death Machine in hand. He picks up a double, and now Nice one, Betty. MP3 यार, is यार, doing a fantastic job locking क्लच it है down. इधर ही बट माइक ऑफ करके बैठा है. देखो उधर चैट. गरीना मत देखो. गरीना Your देखो. operator skills as well. Yeah. But then, just Karina, when you saw who is such heavy Karina? defense, you were able Vision to आज actually तुमको see किसने True राखी Rippers पहना है? absolutely ripping their way into P3. And now, और बाकी किसी ने नहीं पहना है. सबके साथ पहना है. अरे he's gonna be going back to the टीआर front जीतेगी line. लग रहा. हाँ The early ब्रो. rotation यूनिकॉर्न paid छोड़ी off for गई. him. They were able to get in, get set up. जिगर Now, प्रीत contest should be for sorry. Revenant.
Which entryway can they break through? तुम क्यों They चैट पढ़ रहे finally हो? get यूनिकॉर्न को in. पढ़ 20 लो। seconds left on the hill. यूनिकॉर्न नहीं है ना I आज think तो they should be यूनिकॉर्न able to सॉरी get ना majority ओ of भाई this कितना time क्लोज मैच that चल is रहा है यूनिकॉर्न left पता नहीं without being नहाने के लिए या contested राखी any पहनाने longer. के लिए Cheese is gonna move in. He doesn't want this lead change to get too out of control. True Rippers have had such a great start so far, mommy, but मेटा as भाई we see, man, अरे both तुम these squads तुमको लिंक नहीं मिलेगा तुम अपने They keep अपने उसमें losing जो the दिया है hill, ना and Revenant always has to play ग्रुप catch up, पे but they're उससे getting खोलो majority ऐसा of कैसे the link points. नहीं Not मिलेगा? only that, they got पता scrap नहीं points in मिस्टेक मैं P3, and also the spawn मेरी crew in वीडियो their में favor. मैंने When they बताया spawn है out कि into कैसे मैं generator, you हैशटैग need 1 to have पहुंच that, गया especially लीडर the बोर्ड पे transition going to फ्रेंड्स P3, लीडर going to बोर्ड पे P4. That is the most essential. all right, now Yeah. we see Revenant picking up Please most of the stop. time here. Oh, Made RNT that अच्छा great किया। transition mommy was talking about, but the hill is contested. We're watching चलो Bones with the जब Hoger in शू hand, राइडिंग looking to really क्लच engage फॉर in these long range अबे sight lines दे towards these players in the back of the spine. He almost took out Fate's जिगरप्रीत death कल machine. का He still सूरी will याद है fall. But in the moment, True Rippers, they're collecting a majority of the time here on P4, and they're looking really comfortable. Yeah, they're winning their gunfights right now. It's going to be so impressive to actually get all of these points. We keep seeing the scrap points going this side for Revenant, but not today. They need to go in for the setup for भाई that कल first तो mark. आरएनटी And ने again, they're gonna be कल having that आरएनटी ने reset. टीआर को We're gonna हराया be बट seeing कल right टीआर now ने Oil's गॉडल going to को be in हराया that 2F तो in बहुत launch डाउट phase. हो That रहा is one है power कौन position you जीतेगा need to बहुत have क्लोज for मैच that P1 and P2 control. Abyss, he slides in. Him and Kevin टीआर they work एफटीडब्ल्यू together हाँ ब्रो to टीआर take इज down a few. आई Kevin बेट got ऑन a टीआर double kill there. तो And, अगर but टीआर even with जीतती है that तो kill आईएनटी coming through, वाइटैलिटी he टीआर विल needs to बी get गोइंग set up फॉर for P1 द again स्टेज after the first 5 rotation of heals, folks. It's only going to be a 7-point नॉट differential एक्सपेक्टेड भाई ये between टीआर both पता the है सिर्फ squads. And we're 8 to going 9 back to मंथ्स this पुरानी scrappy टीम P1. सिर्फ We're 8 to on 9 board. मंथ We're oil. ये गन पावर वाली ना वही जो बोल रहा था हमको हमारे हाँ, Trying to हाँ, take down हाँ, Kevin. हाँ, Jeez is going to be able और to flank डेंटिस्ट का him. सुझाया नंबर And 1 now this ब्रांड moment we will have Goliath hit the hit Yes, the tarmac, free but at the same time, I'm Vitality kinda, you know, की क्या रिपोर्ट है? having a personal Vitality moment here. Like I said, I got into a का fight with a Goliath yesterday. ये नहीं and I'm दिखाया ना still अभी not तक fully मैच recovered. दिखाया नहीं है पता नहीं बीच में Not से being able दिखाएंगे to recover, but मिस्टेक then आप कहाँ just से हो like मैं that, कैलकाटा Revenant is द actually बेस्ट gonna विल be बी able to वाइटैलिटी get वर्सेस that आईएनटी hard इफ इट point. हैपेंड या Revenant इट wins विल those हैपन big टुडे kills. You need to इन pick सम up टाइम इट विल all of हैपन your ये मैच के kills, बीच में clear out दिखाएगा the area देखो before you step on अरे that मिस्टेक hard को point. तो And we can see सुपर that चैट Revenant is आई gonna be able to actually do that for the अभी first देखा and तुमने second hard point. मुझे Even नहीं getting मतलब the kills यूनिकॉर्न at को the आया very मेरा end, चैनल really होता तो getting those 10,000 का scrap आता points down. But मैं the छोटे छोटे rotation छोटे needs to रेसिपी go कर रहा down here. मिस्टेक We can डब्ल्यूसी see स्ट्रीम the की setup चैट for में P2 देख is बॉबी gonna be आया solid ही right now सेइंग as Kevin आई is लव gonna be able to चैट actually put that sentry gun. Oh man, that sentry gun is going to be useful here. बॉबी Abyss ओपी कर gets दो taken out. वाइटैलिटी इस Revenant टीम looks आईएनडी like they got ओनली a व्हाट decent सॉरी setup. Well, a little bit of a decent setup. They still तुम्हें have पता to नहीं deal है with the sentry तुमको turret that's मालूम going to था be the बहुत ये hill चीज contesting it. But that sentry क्या क्या turret is giving वाइटैलिटी True इस टीम Rippers आईएनडी ओनली मतलब क्या just भाई it's alleviating some pressure for them to be able to move up अरे and दोनों contest एक on ही these तो है sidelines इंडिया के तो up है here on the stairs. But as you see, it's तो Revenant. They'll be जो taking चिन्मय out the खांडेल sentry इंडिया ही turret. जीतेगी ना They'll be able to collect a majority of the time खांडेल so far वाल on his hill. चिन्मय But खांडेल still वाल ये कौन plenty है left. 40 seconds on the clock. Revenant सुना हुआ can लग win रहा है off of this सुनने one, but भाई they are भाई ये heavily कहाँ से आ contested गया by XP True Rippers. This is still anyone's game. The sentry gun didn't quite do its job just because of that cheeky little corner that you can actually camp on. Oh, nice, It's still going to be BRNT. the side of True Rippers, but We it's are not giving going to be close enough fight, points but as it's contest a after fight. contest. Revenant is giving them the hard time. 150, As 130 20 seconds is बोल left दिया on the clock, the rotation into P3 needs to be मेरे को key for दिखा both नहीं of रहा these उसमें teams. डू लाइक It एंड seems सब्सक्राइब like right now सब्सक्राइब कर दो Revenant गाइस is going to be the आज first one in. 1.7 की And you know, in this matchup, I feel like True Rippers are kind of the clear underdogs based off their performance yesterday. Surprising And they have just not been able to take the a map off of Revenant, but with this lead change coming through in करेगा the late पार्टी game, मिस्टेक True नहीं Rippers feeling comfortable. पार्टी भाई But you कितना gotta क्लोज चल रहा है take गेम देख ले close note, Revenant, they rotated early towards P2. ओ We got टीआर kills 130 आ coming in गई for True Rippers. This is the prime opportunity टीआर for them जीतेगा to move in, तू clean छपड़ी house, माइक ऑन and take करना over उधर क्यों लिख रहा है P2. तू The pinch needs to ensue for तुम the नहीं True Rippers, but then विजन तो Bones ट्राइहार्ड with कर so many यार kills already, ओ multi-kill टीआर जीत for गया Bones. ईस्ट 24 और already वेस्ट just named the मिस्टेक death यूनिक machine is going to ज्यादा be causing अरे havoc here. They can अरे hold आरएनटी but then बॉन्ड finally ओपी Kevin मारती finishes आप the job.
job. But here comes Abyss to be able to clean Sab up. ko ओ भाई क्या मार रहा है Death machine that could have been. नहीं भाई ट्रेडिंग डे अरे Still a ट्रेडिंग lot of डे time left, but as you see, True Rippers कल coming रात off फुल the पार्टी respawn, चली अबे तुम trying डेली to का get पार्टी in, करते trying to हो कल रात contest, को but they can't get their footing. 3 more ओ भाई points भाई here भाई for भाई Revenant, and a contest is here. चल जीत मैं जीत prove जीत कर रहा हूँ। आरएनटी जीत आरएनटी जीत They can't win off 131 this if they रुपए can लेट्स गो actually मैंने come बेट have किया it तो come मुझे back. 5 They करोड़ can't. रुपए They need to go in for that P4 control already, 134 but then the spawn is already 135 generated for the side of True. Oh, it's coming down to the 137 wire. 3 more seconds, the 139 lead changes ओ very भाई quickly. क्या मैच है बे Map number 1 क्या against मैच है Revenant, ये doing an unthinkable. आरएनटी आर यू निकल गई किडिंग मी आरएनटी ब्रो निकल गई व्हाट द फक क्या The contest
Oh It man! was so TROP guys, close, and TROP कर दो Revenant chat पे. finally comes out of their Oh throne माँ as the kings of कसम. Hardpoint here in takeoff. And obviously, True Rippers are going to be the team to do माँ that. कसम बे, what which the is fuck? absolutely wild. Guys, मैंने बोला था TR जीतेगी यार. अरे let's go. We're gonna TR have to go कर back गई and, like, comeback. break What it the down heck? and watch it over Let's again go because it was go. absolutely insane the TRFW. way that it ended. चिन्मय And we खांडेलवाल go का back and सर look पड़ गया. how Revenant Yo, to let's go. Hardpoint, It's so how Revenant intense was playing now, भाई. Hardpoint yesterday, damn near Yeah. flawless, okay? True Rippers was Insane kind of support struggling Unicorn against stream. them, अबे even कुत्ता. up against Revenant, and every Hardpoint they lost was about Vision? by ये 80. रफ्तार ने कपड़े But अच्छे they पहने came हैं. to play आज today, रफ्तार mommy. का Let's कपड़ा take a look कोई at the खाड़ा late नहीं game. है. Not only did they मेरे came teacher to को नहीं play, देखा they came UNCODM to में. slay. So इसको नहीं much देखा? opportunities for Revenant to actually go and pull हमारे through, but teacher. no, they weren't able to do that. At the very last moment, as we can see here, I actually thought that Revenant was going to win that, especially Yeah. how heavily defended it is. Yeah, and the Death Machine picked up down there 6 kills. Abyss came through, and it looked good, but this is where it First gets one, crazy, yeah, folks. no. Pay attention, because 147, they need 3 seconds to win. And then who came in and got Arey, that how kill? I did I think win? it was, क्या हो रहा है? it was Cheese. Cheese and कौन जीत Techno रहा है? came in and cleaned house. And at this अबे moment, Revenant भाई just क्या watching comeback this मारा है game slip TR away ने. from भाई their RNT fingers. कितना सही It was खेल रही थी. almost perfect, but Guys, folks, update what's this happening. Yo, will भाई, show your you business मैंने is तो कहा up. था RNT जीतेगी. focus throughout the entirety Yeah, of RNT the हार गई. map. You can't lose it. You gotta play I to am the final seconds. 7. That's I'm map C. number 1 in our ये loser मिस्टेक की semi वजह से Mistake. हुआ है. that नहीं qualifies the savage. chance, but we got अरे back भाई on पता नहीं over मुझे लोग towards our अबे winners मुझे लोग finals. I TR know you मिस्टेक क्यों guys बुला want to see रहे हैं this भाई. one. It's Insidious versus Team Vitality. TR में We're in मैं a 7 map से number मिस्टेक 1 हूँ. hard point. We got all that क्लच between कहते हैं guys today. गरीना मत देखो करीना Speaking of देखो. हाँ, that, TR this मिस्टेक is तो going to खेल be रहा है. so crispy here, just because Insidious Yeah. versus तो भाई मैं- Shut up, Vitality. Tejas, shut up. Nobody is laughing on your jokes. Goliaths of the championships. Parallel Nobody is पे laughing on your through. jokes. This is the Okay. number one आना है and top तुझे two क्या? teams that we can see here in their particular Clutch region. बात क्यों And नहीं it's कर going रहा to है be पर? Crossfire and Hardpoint. Clutch- You guys already know Hardpoint is going to be that tricky map because a comeback is definitely going to be seen here, just like what we saw a while ago. Yeah, so अरे so तो माइक far in खोल this के map कर number देना, 1, उसमें क्या है? we're looking at it's going to be so far just close engagements across the board. And now, as we're heading here towards P2, मिस्टेक ने अपना we're gonna पहला have some सुपर top logic चैट. control. अबे Neutrino गांड में. trying to move back here, some long range Hey, shots from him there with the ज़्यादा नहीं RPD. बोलेगा. Able to connect with that. अरे वो Now looking for his teammates here Group towards देखो, mid-street. group देखो. Vitality needs to get Guys, needs ग्रुप to में break. ट्राई करने के लिए बोल रहा है. ये मैं नहीं That करूँगा. corner building is ओह essential right Vitality now वर्सेस for आईएनटी. Vitality. माँ कसम. They need जल्दी to देखो, get जल्दी देखो, सब बैठो. ये आधा आधा मत They're दिखाओ gonna be बैठ. having such a hard time, बंद but कर. then Learn is going to be such a nuisance, just laying all around and about. They're going to be getting big points here, 62 and 18. And I'm going to be surprised if they actually will get that final kill as well. But the scrap points are going to be going in here for the side of Vitality. But then that's what Team Insidious wants. When it came down to Insidious's performance yesterday, throughout all their respawn game modes, this squad had a 1.92 KDA, okay? Like, a Hello KDA, guys, what's up? I'm back. 1.92. Oh, IND. Completely Guys, IND का Forget score the बताओ. assist, मतलब but credit that just करो. shows how talented कल this मेरी team team में is. IND Vitality, bro. vitality, How vitality. deadly they IND are as bros we're in कौन है भाई? regional वो playoffs for the Middle spelling East and गलत South दिखाया Asian तुमने. region. I This is the best of the mistake. best, folks. क्या And मिस्टेक Insidious, कर रहे they're हैं क्या? showing us यूनी मुझे why एक बार ही their आपके KD साथ is पॉट what it खेलनी is. है. बिग This फैन. is the map where Learn actually Unicorn dropped नहीं a खेलती 40 कॉर्डम, bomb. उससे खेला नहीं जाता That's औकात के बाहर. absolutely crazy. But then the cluster strike यार is ये gonna लोग be going दोबारा down here in डायल three. It's ओए. gonna be so hard right now for the हमने side of टाइटल Vitality to actually go क्योंकि in अभी for the मेन contest. स्ट्रीम नहीं दिख We're रही gonna तो see पहला one person here रिकमेंडेशन left in the तुम्हारा hard है. point. Now that's going to be मेरा Vegas हो with रहा the है. OBJ and हाँ. always ओए Learn. जल्दी जल्दी Overall. जल्दी You जल्दी know, क्या throughout the entire weekend, we've talked क्या a lot करने about को बोल रहा है? Vitality being समझा. the first seed, the best team in this Group tournament. But as we're watching this Recording map line number लिखा है न्यूट्रिनो ना? I न्यूट्रिनो think फोर्ड that we're all देंगे starting to come देंगा. to the consensus अबे ओए that हिजरे. we may have थोड़ा been पीछे wrong लिखो. with Pretty who was मार the देगा. deadliest squad in this tournament coming into नहीं it. चिन्मय अच्छा Because लड़का है भाई, लेकिन वो Insidious, the गलत consistency which they've shown इन्फ्लुएंस में आ throughout गया two था एक days बार. is वो very, very impressive. So, in the गलत moment, influence they होता है. have already eclipsed past that ये 100 देख, point marker. first, second, third, Just third 38 तुम्हारा आ रहा है, पता है points अभी? needed to lock this one in, and we're गरीना heading के on ऊपर over towards तुम्हारा आ P4. रहा है. अगर Goliath ऐसे is going to be But सब तो doing पहला their खोलेगा. P4. I'm not quite sure how to feel about that. Just आज because of how well you can actually defend आज this already सबके साथ without it. I खेलोगे. feel like हाँ they ब्रो should have मैं probably utilized बोल it. अरे लाइव Really स्ट्रीम just फर्स्ट rotating तुम्हारी it आ to रही है, P5, बाकी but you के know what, let's see पैरनेट where का it आ goes. रहा है. Maybe they नहीं want to go यूनिकॉर्न over टाइटल heal. चेंज
करो ना here we go. guys Jimmy share the Mom stream going down. हाँ guys share चेंज करो करूँ ना shift चेंज करके करने मिस्टेक ने जो बोला वही रखा बोल क्या रखूँ चेंज नहीं नहीं ठीक है अभी चेंज करो मैंने ग्रुप में मैंने जो भेजा है भेजा ना वो वो You कॉपी guys was पेस्ट wondering why I had the holes in my shirt. This guy over here. Nice, but IND is winning Studio today. yesterday. There Had to to go. stop him outside. We gotta protect Beef Mom IND out here for in the the win. States.
Now, as we're going to be जिसमें closing this न्यूट्रिनो है P वो आईडी for up, just Oh. 5 more points needed for नहीं Insidious. तो लगे करो Vitality not even able to get 50 in his first Amazon map. India And बोलता Insidious था have set the pace in the winners finals. अरे बॉबी को इंडिया फिर लगा था से पता है तेरे को टीम फिर इंडिया से बोल रहा था फिर से ये Victory 40 रुपए there. का They will सुपर strike चैट first, करता है Mommy. Are you surprised by that? No, ये I'm not 40 surprised रुपए by का that. सुपर They चैट really करके wanted बोलता to है end the मिस्टेक hills there. मूव है That's तू why the थैंक यू Nexus फॉर द Goliath 40 was रुपीस pulled out. And they And absolutely fuck did off. it with such finesse. And like you said a while ago that with the Goliath, ये really just tectonic protected भी me. आया Thank you क्या so था? much. I'm protected by IND three always really OTS bro strong damn mid IND players. on We got your back, another Mommy. level Okay, man we got IND कर बनाओ दिया waiting अभी out चेक here, करो folks, but we ये need to चिन्मय hop खांडेल on वाला over आज towards खंडेल our चिन्मय last खांडेल वाला our क्यों कर रहा है ऐसा COD Global उसकी Champs मर्जी qualification खांडेल वाला match क्यों here कर रहा है for the Middle East and South Asian region. हाँ तो क्योंकि मिस्टेक तू मूव है खंडाला तो ऐसा जाएगा। कब Teams is सुपर moving चैट forward. मारता है We're in map number चूतिए 2 fire अरे range, अरे and we're still in the first वो round. यूनिकॉर्न के लिए आया of तेरे लिए War आरएन की तो वजह से situation यार for तुझे True शुरू हो गया Rippers रुक as मेरे they को take in map क्या number ढूंढना 1. था We see them मेरे play on लिए the आया attacker मिस्टेक मूव है side. तो यूनिकॉर्न को इसके तू ही ना पहले बोलेगा भी कोई मिस्टेक के लिए गर्लफ्रेंड ओ को नाइस बोले डे बट यार इसने किया नहीं 1v3 scenario. He sees Techno, but Techno's going to TRF disengage, does not want to give him a fight in which he wants, and Nice Techno day. plays it smart. Techno had a 4-piece in that round. What an opener for True Rippers. मिस्टेक And कल इतने honestly, if we're ट्राइहार्ड going क्यों to be लेके आया था comparing स्क्रिम्स Revenant में and True Rippers वो are तो the true Rippers here in विजन नहीं Smart था Digital ना game mode. किसी Search को and तो चाहिए Destroy था ट्राइहार्ड Revenant करने are के their लिए butter and bread. Just because of how well they actually perform, Yeah. especially with Kevin on their side. guys It's if we hit crazy. 30 And watching also, two guys, when they Unicorn played will this do map, DP giveaway and I think it was the तो बाकी आप quarterfinals or देख the लो semis Battle Pass yesterday, बोल यार it went यार ये to बॉबी की round वॉइस कम कर दो 11 ए between these बॉबी two का teams. वॉइस कम So कर दो we जरा can only hope यूनिकॉर्न it goes the distance once again. But as we're in round number 2, it's a 5v5 situation. We're on Semis board क्या with होता है Kevin, भाई one of the best semi-final snipers I've seen in COD Mobile since I've What been a is part of the semi-final? scene. And Semi. we'll see if he can find his semi. opening play for his अरे squad. और Looking एक वर्ड है towards जो ऐसे बोलते back हैं A site. He sees his player rotating towards 10. Woo! Just misses the shot. try hard That wall just blocked it for him. That would have been such a big kill. And I feel like this Oh, actually my deja vu God, all for over those again. wins. These two teams battle it Oh. out here in firing range. But then Syro with that opening pick off a cheese. ये Oh, मैडम कुछ बोल Tyro रही है with आज the तो first blood. We'll आई see डोंट वांट if बैटल the पास मेरे Revenant मेरी finds साथ Vinci, जस्ट एथर but के when it लिए comes ग्राइंड down कर to लो the बस defenders, they are ठीक है भाई आप currently शेयर in कर दो the स्ट्रीम पहले the power position, having his man advantage and being a I have no defensive team and squad. I hate randoms. Trophy Yes, system's bro. going down towards A. Randoms are It just seems shit, like just True like Rippers Unicorn. I wanna mean, prioritize sorry. the site. The trophy system got destroyed, I believe. Nope, there you go, right there on the screen. ये फिर से चिन्मय खांडल वाला सुपर चैट करता है बोलता है यूनिकॉर्न के लिए अबे ओए सुनो वो पहले 200 का सुपर चैट किया हम दोनों के लिए अभी 100 रुपए 300 फिर 40 रुपए का मुझे नूब बोलने का यार कम कर लो वॉइस इनकी अरे वॉइस कम कर दो यूनिकॉर्न इनका Kevin never Share the misses stream. the shot. Unicorn You will है ही नहीं always depend on him if you need to go down to that 1v1. Guys, वो आने के Speaking बाद of his बोलते हैं, team, thank though, you. you can see Revenant is also Chin, going to have boy. that response as well as Loyal. We did see that 1v3 clutch plus defuse. आज वो That was 10k का बजट लगी All right, low early trophy system in Oh, one, भाई protecting themselves from any चिन्मय grenades that may come through that door. to पैसा stop है the पैसा rotation, आएगा going towards the B site. But कुछ हम we देखो heard from Fakes earlier. They Hey, talked about Unicorn how के लिए esports has super changed chat. him, ओए how esports has changed his ओए life. ये करो तुम creative साउंड कम bonds करो with his बॉबी का teammates, मेंबरशिप creative भूल गया brotherhood तू for his squad, and थैंक यू बे now we see them working Thank together, you. trying to थैंक यू fight चिन्मय for ऋषभ the प्रणव champs. अरे What a story. प्रंजल है क्या Both these squads शेयर द here. स्ट्रीम कहाँ This is an शेयर कर रहे important हैं matchup for them. They work all year long अबे किन के मैं वॉल्यूम बोल कम देता अगर करने बिना हैं बताइए तो to go further than this. बॉबी बॉबी Be प्लीज champions, and बॉबी we'll see if they कैसे can do that. कैसे करूँ कैसे True Rippers. स्ट्रीम का ये तो होता है हो मैं नहीं मैं पाएगा। ज्वाइन नहीं करूंगा ये बॉबी इसका तो बात ही नहीं कर रहा रफ्तार और वो आंटी है अबे लाइव है ना इसलिए नहीं होएगा इसका ये काम They need to पोस्ट actually के go बाद and from होता the है side of Revenant just because नहीं of होगा। how एक मिनट well they've been चिन्मय ने कौन सा playing. मेंबरशिप लिया है Not here. They lost that one. Legendary? Especially with that clutch, and the confidence right now is on the side of True Rippers. हाँ They लेजेंडरी had a lot of confidence on their side. ओह One thing I अच्छा will say is that when it 159 comes to वाला Revenant, प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स एकदम नहीं मेंबर शाउट आउट एकदम नहीं गेम प्ले विद यू तो एकदम नहीं भाई I know you think you can, but you know, in this ये मुझे first बैड Who is game, नहीं this Raftar? big time on this big stage. वैसे सब मिस्टेक के लिए था अपार्ट फ्रॉम जोक अरे रे थैंक यू मिस्टेक चिन्मय रफ्तार क्या वो तुम बाल एक काम वाला। करो
solidifies their setup just a bit more. चिन्मय तुम इसको डीएम Now, करना I was यूनिकॉर्न को talking इंस्टा about पे how when it came down वो to the खेल defense लेगी of तुम्हारे Revenant, साथ I love their composure. They didn't get too aggressive. God, They were nepotism waiting for है that pick, but after the pick from अभी स्ट्रीम की क्या वॉल्यूम nepotism? लो कैसे करूँ? स्ट्रीम की वॉल्यूम लो कर लो हो गया फिर यूनिकॉर्न वॉल्यूम मुझे कम कर दो एक बस सेकंड दो, रुक जाओ। जस्ट फन हु इज रफ्तार इज And they're being a little bit Abhi more Arre, aggressive, and I like that from Revenant. Whom They know are they you have the calling him advantages, Raftar? Whom का the spelling man क्या था सर ये? advantage, and they're working together Whom to are you clean this calling round up Raftar? and अरे get their रफ्तार first वो on the जो board. कास्टर है ना, That was such a clean retake for Revenant, even though they जिसके didn't कपड़े have फाड़े that थे first कल blood, बॉबी they ने were able to actually utilize that man advantage and actually go in चैन with नहीं the मिल रहा था backstab. इसलिए। That was the great push right now. I अभी like ठीक है, seeing अभी plays ठीक like है। that, just because Guys, you don't iPad really only get to see comp. it that often. And speaking of, they actually और leave the बता bomb right Mystic, now. Mystic Someone got gets to fans pick it up, and यार। finally Mystic is going to be able to pick up Shut the up. bomb. Very passive मेरी play फिक्स yet हो again जाएगी, here. उसकी They're just टेंशन gonna मत be here लो। hanging out in wood. अभी से Oh है my ना, God, it may मजे have been करो a मजे। beautiful defensive read or defensive Oh call from the boy. side of Revenant. They stack 4 players towards B. ओए It was विजन Zyro कम्युनिटी got पोस्ट the opening डालना pick once again, I want to say, with the अरे हाँ। snipe. कम And now कम वॉच Revenant लाइक with the ये advantage, this is where they feel the most comfortable. This is where they're going to slow it down, allow themselves to gather some more intel before they possibly switch from the defensive squad to really going on. बोल रहे कि कम वॉच स्टेज 4 विद अस Zyro, big plays. He's such an essential player for his team, and the role of the sniper is always to get that opening pick, and he's been doing that job. Kevin needs to step it up. Just there can only be बस one तब तक sniper, कोई chat and that's करो, what मैं Zyro थोड़ा ही says. काम And कर रहा हूँ, Cheese also brings it down into a and 4v4. बस Oh, 4v4 situation. Bomb down, 38 on the clock. Mystic trying to guard Community back A post डाल, site. But as we see towards the mid डाल map, the दिया kill Call of Duty being Mobile picked up World from Zyro. Championship Mystic trades it ठीक out. है Oil मैं goes down. Kevin with a double देख snipe in बराबर the है क्या? round. 2v1 is all up to Zyro. Can he do it? Will he हाँ, take बराबर down है, Cheese? कोई- Will this भाई end in the Kevin। sniper battle? We're about to find out as he moves in. He knows where Cheese केविन is, गॉड है but भाई केविन Kevin, सच में बहुत he ओपी स्नाइपर है takes बहुत him out अंडररेटेड with बंदा है the valve, gets Zyro. in. Enough time for the decap. And once again, हाँ। Revenant, they're going to clutch up in this round. Zyro's here to play. Zyro नहीं, is नहीं। not joking अरे, around, stage 4 लिख देना। right? He ain't अबे playing, इतना like, अच्छा not only कैसे? is he good with that sniper, but he can also use the AS आईपैड का battle. Like, वॉल that was कम smart करो to actually not मिस्टेक whip out his बैंगलोर कब आ रहा sniper, मैं and देखता हूँ eventually रे even things out and अपना do माइक वाला I'm not ज्यादा gonna lie, करी I'm gonna whip it स्ट्रीम out and चैम्प्स go में जो chow. कम किया था अभी Just to मस्त shut- गेम just चल to रहा shut हाँ it बे down and बहुत make it अच्छा feel a गेम little चल bit रहा है bad, but अभी देखो that's बाद why I'm में मतलब not मस्त playing here. That's why I'm not a professional. कुछ नहीं भाई अभी करो Zyro, अभी he करो made the smart play, ठीक है, मेरे बाप picking का up both those kills with the valve. SND में क्या स्कोर रहेगा इनकी predictions guys? अरे मैं बता रही इनका भी ना All tied up कितना 2-2 in map number 2 as we're watching the पता last नहीं। round of दिमाग Can की Revenant शूट get इस one more बंदे की defensive round in their books? मैं Or is बोला Kevin इसको gonna have डीएम something to मत say करा about कर it? मुझे I mean, Blaze, I heard that It you were beacon? pretty good with a sniper, so I'm pretty sure you'd be good in this game as well. But speaking of greatness, Kevin is going to be having that 5. Just They're going to be heavily stacking A, but then they're still trying to see Vision if they का can actually go get a server pick तो before एकदम they go active in है। for the push. But then one person is मैं going to be active going server in for मैंने that नहीं trailer देखा। control. That is going to be absolutely essential. Fake. और उन कहते हैं हेल की Now, स्ट्रीम one देखो team ज्यादा that's इंटरेस्टिंग going भागें to be Abyss. Now, Cheese in a अरे difficult जो जिसका situation, सीन but he knows he देखो can't move from his spot. हाँ वही बस He has देख to लो fight his way out. But देखना the है ना flank देखो came बस through. काम Bones was able बहुत to collect one. We're going to have a 4v3 in favor of Revenant. Can Techno even it up? He cannot. A 4v1. It's all up to Mystic. The last hope in this first half. He can't do it. But I will say, as an attacking team, taking 2 rounds, that's a pretty good job. That was आ जाओ very साथ impressive. देखते And for the हैं। side of क्या? Revenant right now, Abyss actually made चल, the play. And look at Fakes. Hell Having की streak। 0 kills in already in 5 Punch. rounds. We are in round number 6, but he हाँ, still यही has सही। nothing. That is going to be very heavy, and he's being हाँ carried right टीआर now by जा his रही team. यार ऑफिस Hey, well, you know, we know it's a brotherhood over there. We heard from Fakes earlier when we watched the player profile piece, so hopefully they are able to pick each other up here in the moment. We'll see if he has any better luck playing from the defensive side of the map. We're seeing an A stack here from True Rippers on the defense,
But down low at the B hill, can Bones find an opening? Can he find one pick to give his team another option? Because if you find a kill down here, you're going to force your opponent to pretty much spread out this defense. अबे मेरा फोन इतना लैग कर रहा है. Really great. A 3-2 split is going to be very solid for the team of True Rippers. They need to get that opening pick though, and it's probably going to be for the side of Techno, just because of how well he's already placed here inside the site. They need to go in for the push, but no, Abyss is actually going to be able to shut it down. Really big kills for Abyss 7 already. Now the trophy system's destroyed. Guys, Gonna okay. have to reposition. हाँ, Abyss, he needs to be careful. भाग जाओ. RNT OP ये chat पे बता रहा है जाके. TR will lose SND. हाँ bro, RNT is playing too good SND. How was your match yesterday? Match now 4v3. Zyro with the shorty in hand, he's gonna disengage, and it seems like Revenant. भाई Zyro का ये sniper जो complete switch here on this play call. They're gonna have to be careful crossing towards the middle. They'll be okay, but looking at the mini map, it seems like True Rippers got the intel in which they needed to shift on over. Rekte कितना hard scoping हो रहा है. Rekte. अरे hard scoping नहीं, but जीतने के लिए तो भी कुछ भी. Oh nice बे. क्या मारा है माँ कसम बे. मिस्टिक क्या खेल रहा है बे? है ना मिस्टेक एक मिस्टेक. देखो नाम का कितना वो होता है. एक मिस्टेक यहाँ, एक मिस्टेक वहाँ. कितना अंतर है. ऋषभ प्रणव कॉडम ओपी यस ब्रो. ओ भाई वेरी क्लोज मैच नेक टू नेक. यस ब्रो एकदम नेक टू नेक है. मुझे डब्ल्यूसी के बारे में कुछ नहीं पता. आरएनटी कल हारने के बाद आज वापस खेल रही हैं. आरएनटी देखो ये डबल एलिमिनेशन है ना. हाँ तो डबल एलिमिनेशन है तो एक बार भी हारोगे तो यू कैन प्ले वन मोर टाइम. बट बेसिकली यू नीड टू लूज 2 टाइम टू गेट आउट ऑफ द बुल. Unicorn buffer. Hey, buffer, legit. Restart. मैं refresh कर लूँ. अब नहीं मेरा नेट ये कौन चैट पढ़ रहा है? As I said 5-3. नो बफर में मेरा बफर हुआ था बे. तुम लोग का नहीं. देखो आरएनटी का अभी टीआर कमबैक करेगी मुझे लगता है. केविन जो स्नाइपर है ना बे कर दिया इसको इंस्टा पर फॉलो एंड मैसेज. हाँ अब यूनिकॉर्न तुमको ना चिन्मय जो है वो मैसेज किया उसके साथ तभी उसका यूआईडी आईजीएन लेके खेल देती. लेजेंडरी मेंबर है ना वो. हाँ ठीक है मैं कौन सा मना करती हूँ. ये पर्क्स दिए क्यों इनको. देखो बोला मना करेगी. ए ओ भाई क्या मारा है बे. टीआर क्या खेल रही है बे. A 4v1 situation. I don't know why they went into the rotation. They should have just pushed as a team, use the numbers to their advantage, but no, they didn't. माँ कसम बेटी यार तू. Yeah, they did. True Rippers, they're not playing around on the defense, folks. And now Fakes देखो भाई comeback हो रहा है. 3-2 से 3-4 on a 6th street. He says, I will not be killless any longer after that first half. He has absolutely turned it up on defense. Now, as we're watching Revenant, they feel like they need to go for the B push, but with these early smokes and these early nades, they may have possibly given up the play, or we'll see if the Rippers can get the read. आईएनडी का मैच दिखाया नहीं ना. They're not doing too much. They don't want to get TRFCW तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो? वाइटैलिटी आईएनडी. आई एम सपोर्टिंग आईएनडी. आईएनडी का एक मैच दिखाया ना इसमें आईएनडी की हार्ड पॉइंट क्रॉस फायर. भाई सबके पास मिथिक रेटिक है, मिथिक फेनेक है. क्यों इतना. अरे देखो क्या है कि हमारे इधर पे ई स्पोर्ट वर्जन नहीं दिया ठीक है, बट गरीना एनएयू इनको एक अलग वर्जन दिया है कॉडम ने और उसपे लिटरली सब गन्स के लेजेंडरी मिथिक है ओनली फॉर द टूर्नामेंट. दे आल्सो नो कि कितना इंपॉर्टेंस है लेजेंडरी मिथिक का. तो इसलिए उधर पे हमारे इधर नहीं दिया. नहीं तो हमारे इधर भी सब एज वेलकम मिथिक सब कुछ मिथिक चलाते. तो बस गरीना साउंड्स करीना. तुम भी लो साउंड. And now the play is busted as Bomb is lost towards back alley. टीआर ने तो जी मार ली. अरे भाई भाई वाइटैलिटी ब्रो. हाँ ब्रो दोनों टीम कर गुड बट
2-0 lead over मैं Revenant. IND भाई मैं भी IND को ही सपोर्ट IND करता ने हूँ। गॉडल को डिमोटिवेट हो गए, पता है गॉडल को नहीं गॉडल का वो गलत आ रही बे 4-170। अरे गॉडल का क्या सीन है, गॉडल का ये जो है ना लेजरा, तो उसने मोबाइल पे प्रैक्टिस किया है। हीरो टीम का क्या हुआ आफ्टर सैम व जोको जाने के बाद? हीरोज डिसबैंड हो गई ना, क्योंकि उनका जो मेन प्लेयर था बाउंड, तो ही लेफ्ट फॉर कॉलेज। हीरोज का एक बंदा याद है और मिस्टिक बढ़िया, हाँ ब्रो बढ़िया। नारुतो कॉडम है, यूनिकॉर्न हाय हाय। और अगर इनको सब मिस्टिक वगैरह दिया है तो कुछ लोग इधर का इनको नहीं मिला ना ब्रो, मतलब एक इंडिया वालों इनको को मिला ही नहीं। इंडिया मतलब हाँ अरब्स है ना, मतलब जो एशिया रीजन है, ईस्ट एशिया एंड हाँ इनको नहीं मिला, इनको नहीं मिला, बाकी सबको मिला है। हम लोग को गरीब समझते कॉर्डन वाले। नहीं दिया तो था बट उसमें प्रॉब्लम था। आई लव बोथ विटालिटी एंड आईएनडी बट नाउ आईएनडी इज इन दिस आईएनडी ऑलवेज ओपिया। रेवेलेंट नहीं है, एक मिनट, ऑकोस्टिक अमन ये रेवेलेंट नहीं है, मैं नाम भूल जाऊंगा, रेवेनेंट है, रेवेनेंट। आईएनडी भी अच्छा है भाई, सभी टीम स्ट्रांग है। हाँ ब्रो सभी टीम स्ट्रांग है इसलिए ना। ओह टेक्नो, ओ भाई क्या खेल रहा है बे, आग लगा रहा है। फट गई उनकी। गलत खेल रहा है बे। और एक इजी। Techno is going to be able to do it. 10 kills on his name, but 17 seconds left on the clock. The pressure is on him. क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, देख ऐसा खेलना होता है। हमारे जैसा नहीं ना, यूनाइट के जैसा हम लोग मेंबरशिप पॉक स्टिकर नहीं, हाँ स्टिकर बनाएगा ना, स्टिकर बनाएगा, रुको बैच ना सब फेनेक और एजवेल पकड़ रहे हैं। अबे ब्रो देखो सबको जीतना है ना, देयर इज नो वन हियर टू शो देयर गन फाइट एंड गन स्किल, और ऑल ऑफ देम आर हियर टू विन ना। तो और जीतने के लिए अगर उनको करना पड़ेगा तो करेंगे यार। ये लोग तो खुद ही खरीद सकते हैं मिथिक गॉड को देने की। अरे मतलब कुछ होता है ना, जैसे कुछ स्किन नहीं खरीद पाते ऐसा वैसा, तो देख ऐसा क्यों इंडिया को कॉर्डन में पैसा है बट नहीं है इतना जितना तुम सोच रहे हो। ऐसा क्यों किया? इंडिया को दिया था ठीक है, बट इंडिया का जो वर्जन दिया था दैट वर्जन हैड सम डिफिकल्टी, तो उसके लिए फिर जब बात किया हमने तो उन्होंने बोला कि नहीं चलो ग्लोबल वर्जन पे ही खिलाएं, दे आर प्लेइंग इन द ग्लोबल वर्जन। बॉट को बोल इंस्टा चेक कर लो ब्रो, एज विलन मैंने कॉपी गन फाइट देखी है ब्रो। चैट आई एम बैक, हेलो। ये लोग होलगर फैन के एज वेल डील को चला रहे हैं। हाँ ब्रो तनवीर दैट्स व्हाट आई सेड ना, सबको जीतना है, तो जीतने के लिए दे यूज ओनली द गन्स दैट विल हेल्प देम। हीरो का क्या हुआ? मेरा नेट गया था, सुन नहीं पाया। हीरो डिसबैंड हो गए ना हीरो, बिकॉज उनका जो आईजीएल था ही लेफ्ट, सैम्स एंड जोकोस केम टू वाइटैलिटी, देन ये और कौन बाकी था? डिस्पैरिटी लेफ्ट फॉर्म, डिस्पैरिटी लेफ्ट फॉर्म। नहीं लीव नहीं किया वो, लीव करने से पहले हाँ अरे भाई 5-5 हो गया बे, 5-5 हो गया बे। ये was the play mommy बोला ये। जिसको जो गन चलानी आती है वो चलाएगा। यस ब्रो मजा लैग रहे देखने को। गाइस थोड़ा रिफ्रेश कर लो, बहुत ओपी गेम चल रहा है बे। ओह टीआर हैज द लीड बे। यार कुछ कल भी ऐसा ही सीन था बट फिर जीत गई थी ना। आईएनडी में कौन कौन खेल रहा अभी? आईएनडी में जो नॉर्मल रोस्टर है वैसा। विजन अबे क्या विजन खेल रहे हैं। लेट्स गो बे यार, अगर तो टीआर फॉर द विन बे बोला था मैं। बट ज़ायरो का स्नाइप बहुत ओपी है बे, बट टाइम नहीं है ना। ये देख क्या बैठे हैं भाई, माँ कसम गागी रे। अरे डैम अबे अनएक्सपेक्टेड यार। ट्रू रिपर जीत गए नहीं ब्रो, अभी वन मोर मैचेस है तो ए आईएनडी लगा जल्दी। गाइस चैट पढ़ेंगे थोड़ा, रुको ठीक है, मुझे आईएनडी का मैच पहले देखना। सॉरी ब्रो, यूनिकॉर्न चैट करो प्लीज गाइस। क्लच माइक ऑन कर स्पैम करो चैट में। हाँ
करो 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 You करो know what? I Eh. think we probably only got 2 deaths after that. Okay. चैट पे ऐसा कुछ तो है नहीं जो टीचर मैं आज follow टीचर ने अभी लगी The अपनी way he was है ना आज able क्यूट to लग रही है just step it up under pressure What the on fuck? championship आज Sunday teacher in a जवान हो गई। qualification match. Not a lot of विजन को players देख can do के that, आ folks, गया okay? लालच गाइस विजन को Man, विजन what a बढ़ finish गया this is विजन map क्या number हुआ? 2, but folks, विजन we को got देख के the थोड़ी first लालच one आया। towards our winners finals. It's Insidious versus लालच क्यों आएगा? Vitality in रफ्तार। match मुझे आ number गया देख 3. के, ऐसा वो The कह रहे winner हैं। of this one ओ आईएनटी वाइटैलिटी शुरू हो गया ना ये देखो। series lead in the ओ grand वाइटैलिटी लीड finals. कर दिया मैंने And as बोला we था can समिट see, में Tommy, you वाइटैलिटी get का a chance to स्ट्रांग see the पॉइंट है बे। search and अरे destroy, समिट but में एक दिन तो Insidious, गलत ही किया था you're up टॉक्सी 2-1 वॉच को नहीं करा early था as देख we're in याद है? the domination. 100 150 14 मालूम है मुझे। हाँ भाई माँ कसम। Let's see what's gonna happen here. No English. IND, 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 IND. Toxic. ओए ओए क्लच एक काम कर जल्दी से अरब वाली स्ट्रीम पे जा बंदे जाके पूछ रहे नो इंग्लिश तो उधर जाके बोल फॉर वाचिंग इंग्लिश इधर आ जाओ ऐसा जल्दी से अरब वाले पे जा या काम दिया अरब वाले पे जा काम कर लवड़े अपना काम कर ओ शॉटगन मार रहा है जो ओपी वे नाइस वन अरे 2 हिट मार कर भाई गांड मार रहा है क्या तुम्हारी यार मिस्टर कुछ भी कहता है यार आईएनडी लेट्स गो उसको एक्सपीरियंस है ना उसको सुना है अरे अरे वो तो तुम सुना रहे थे उस दिन ओ भाई ओपी मैच बहुत कनेक्टेड का ए रुक मैं मोंको सब्सक्राइब करते हुए अंदर मेरा नाम आएगा ना उधर सब टू विजन नाम लिख के जाओ सब टू विजन Wonka spec off You it. know what? I tell you, I've seen some great shotgun gameplay in my life, folks. Okay, and Joko's here. मैं 5 तो कर सकता हूँ in बट नहीं Championship ये भाई Sunday. नाम आ जाएगा Man, फालतू he is का hitting some full फिर spreads बोलेंगे with this shorty. But Sam, बोला ए, इसीलिए बे, तो किया था energy, he can't do it. He's gonna इनको get बोला pulled होगा down तो there स्टिक by बंद Learn. करने को And हो now सकता है this ना B-Hill ओ will माँ कसम transition. बे चिल Well, बैंड it's about to get decapped and transition back over in favor I'll of miss you, Ropi. Obsidian. ए लेट्स गो आईएनडी ने ले लिया अरे बट Just नहीं in the nick of time, वाइटलिटी they को did it. जीतना चाहिए But that needs ये to be कौन है careful. ये ग्रेविटी स्पाइक कौन है Joko's ये in with the grab बहुत step. पीछे चल रहा है तू आरएनटी के गेम प्ले का पता नहीं पर प्रोफाइल ओपी है आरएनटी का प्रोफाइल इसको ऊपर देगा देख गेम प्ले वाइज आल्सो दे आर टू गुड अरे ओए 60-64 चल रहा है ना स्कोर मैं पीछे हूँ क्या हम लोग को नहीं तुम्हें जैसे मतलब मेरे IND is on another level in this stage, not gonna lie. Bro, IND is always on the next level in every stage. ए 71-69 है ना स्कोर जल्दी बता Yeah. Matchup, मैं सही it तो goes in favor of Insidious, and talk about Hashtag me for बोल रहा है bitch. इसको vitality. They have to pick it तो up. बोलेगा इसका भाई नाम है क्या In this series. MI नाम है उसका मॉमी क्यों बोल रहा है ये बोलेगा इसको डैडी बोला शायद कुछ भी बोला होगा बॉबी बॉबी लाओ भाई ये जरा करवट लग रहा है मेरे को रास्ता घर पर तो विजन तुम भी लगते हो मुझे बट कल का जो डॉम हुआ था वो बेस्ट था 75-4 वो सिग्नल के अगेंस्ट ना IIT is always good at hard point and domination hard point yeah bro essentially also भाई MS9 तो गलत है भाई इस बार लेजेंडरी MS9 जो थी भाई एग्जैक्टली टू क्लोज नहीं मैच भाई फालतू है अबे अरे बहुत नहीं, अच्छा है बे मैंने चलाई ना कल देखना मुझे दो अरे इतना बड़ा किल इफेक्ट है उसके पीछे का बंदा दिखता ही नहीं फिर अबे किल इफेक्ट बड़ा है बट बाकी सब सही है अबे क्या सबसे बेस्ट है रियल की हॉलिडे रियल की नथिंग बेटर अबे क्या तुम मुझे भेज देना यार मुझे कितना प्यारा लगता है वो जो साइकिल चलाना आना चाहिए मिस्टर उस दिन तो स्ट्रीम पे बोला था फिर तुम कितनी घंटा जा across inside control room number 2. But then now that they've used it up, you can already know that it's going to be Vitality's turn to really just use up all of their arsenal. And then we're going to be seeing a full push here, go into that top L, go into that top flag. Oh, Sam's got hit with a concussion. He gets taken out. Here comes Insidious off the respawn. They still But Vegas they है still क्या? got multiple players in the B hill controlling it. हाँ थोड़े Doing a क्या good मारा? job taking down these players on the back stairs. Vegas super aggressive here towards the back, but he has drawn a lot of players' attention, and this is what he should be doing. What a beautiful double kill, not allowing Vitality to get past nerf or first ref layer है, defense इनसे to क्या बोल रही even है? be able to get into gunfights with his teammates.
finished. अरे नहीं वो बोल रही है कल भी शॉर्टी के लिए कर रही थी नॉफ कॉल करके And they need to go in for the control. ये तो here. खेलती वो बोली रहोगी। it's getting finally now. Their gunfight here, but finally gets a hold of that top L, going in वो पागल हो गई overextending है। into the spawn, but then Neutrino's gonna हैप्पी shut that रक्षाबंधन down. विजन तुम मुझे राखी पहनाओगे ना अरे हैप्पी विजन तुम राखी पहनाओगे ना बांधोगे होता है मिस्टेक अबे ले Delete the bot, folks. ये मेरे But बहन का now शक्ल क्या है Vitality, देखा मैंने they still need to use this opportunity to get into B. But look at the Happy score. Rakshabandhan, my We've brother, I already will always reached that protect 130 you. marker, and Also, IGN Happy Insidious, Rakshabandhan to everyone I have they chosen. have done the hard part already, but they just need to control one hill. Just keep doing what they've been doing. They have a lot of aggression being pressed towards the A hill as well, and they just keep moving that first layer of defense so far towards their opponent's side of the map, Guys, 50 likes making Vitality dreams look hopeless here to ये जीत गए बे win एंडी finals. Obviously, but It's not looking good. Vitality may be the first team in the loser bracket finals, and I think, folks, it is going to be official. Wow, They have one exclusive versus the Kickoff today. Andy, किसको बजा रहा है विजन? So far in this tournament. भाई किसको बजा रहा है विजन? क्या तेरे है दिमाग में वो सब क्यों चलते रहते हैं हमेशा किसके पास दिमाग ही नहीं है अबे लोगे ये बात मैच सुनो चल तो रहा है मेरी अबे तुम इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो एंटरटेन तो विजन करेगा अबे शुरू हो गया आईटीआर का मैच शुरू हो गया ये चल रहा है कॉडम के उस पे स्नैक्स गेमिंग आके चैट पे लिख रहा है बीटी आईएनडी They only have to win one more series to be your team. Who is going to play up मैं तो बोलता हूँ against them? स्नैक्स We ना know तो पूरी टीम Vitality, लेके they're knocked down to अबे रफ्तार आज मूड में नहीं है मेरे को लग रहा है इसको समझ आ कि हमने फटे हुए कपड़े के काफी इसलिए आज फुल कपड़े पहन के आया है these two winners. This is Vitality. देख रहे हो कहीं से भी कुछ नहीं कौन कपड़े पहन के आया अबे रफ्तार को स्पैम किया था ना हमने In Revenant, क्लोथ्स फॉर as we रफ्तार know that matchup इन्होंने has दे been दिया भाई, उसको कपड़े wild, but True Rippers up अरे अभी चेयर फॉर ये लड़की against Revenant. And we ए know नहीं चाहिए हम लोग को Revenant अच्छा वो had भी so तो many चलो close games throughout the day. Delivered your They product. gave Guys, Vitality Unicorn will a start good playing matchup to BGMI. and we don't Team know IND how is like Team Vitality Tapatap in will play, PUBG, and Team Vitality is we Emotion. understand Oh that it's yeah, levels to bro. this now, okay? You got Insidious, True you words got coming from Vitality, Chinmay Khandelwal. then you got Revenant, but True Ripper says, hey, you know what? नहीं, We इसको want सलाम to लग गया। climb the ladder, team by team, starting with IND Revenant के first. तीनों मैच हो गई लगता है बे super hot right Don't now. know. It's going to be that crossfire domination. That Charlie flag is going to be essential. And this just seems to be like Revenant is going to be having that easy time. They need to go in for के that तीनों defense, मैच हो and that गई BC is probably going to be very nice. चैनल नेम बता देना मेरे को नहीं मिल रहा भी इधर देख ले We'll see if they can stay true to it. तो इधर नहीं They're देखोगे not उधर ही gonna जाना stay है true to this, folks, okay? लूजर ब्रैकेट में जो जीतेगा वो IND को फेस करेगा आई फील सो ब्रो Now, as he's looking to rotate towards the next. नो आई डोंट फील IND they'll face Kevin Vitality is going to be okay having his It's gonna be tier this height advantage. कल ऐसा लग रहा था having कि the ये राइट sidelines में जो here बंदा है वो towards कुत्ते mid-map. से The लड़का है setup's लॉल looking good too as भाई well. Now we'll see That's how can True Blaze. Rippers find themselves another hill. Okay, so I thought that True Rippers was actually finally going in for that rotation, and see, they had 3 players in Butchers. रुको and guys just वो one चेंज कर लेता person हूँ for मजा the आएगा Revenant, यूनिकॉर्न and they बीजीएमआई कब should have खेलोगी had that push. We keep seeing कब तक चलेगा Revenant पहले ये just बता being a little bit hesitant in terms of being a वो little bit डिपेंड aggressive. फिर भी मैं तो अभी कुछ देर बाद जाऊंगा नहाने हाँ चलेगा 5 6 7 8 9 10 ए तू नहाने जाएगा तो चैट कौन देखेगा मारूंगी मैं बिजी हूँ 3 मैं मिनट नहाने नहीं जाऊंगा क्या मैं नहीं मैं नहाने जाऊंगा कुछ देर में तो अभी नहा उसके क्या? बाद तब तक तुम विजन है अबे मैं नहीं, हूँ अभी ही नहीं नहीं। फ्री मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं ना हाफ एन आवर फिर मैं नहीं मेरे तो उसको निकाल दे ना आईडी वाज ऑलरेडी मैं एसएलटी खाना चाहिए आई गेस एसएलटी का आई थिंक बेटर तो वापस देखने मिल सकता है ये How do you get in there? Because it looks so difficult being tightly cornered in his back alley. Yeah, and this is going to be very hard because Crossfire is known to be so open with your sniper angles, but you also have those tight corners at the very edges. You definitely want to have control of that center building, and also for Butcher as well. You're going to be seeing a lot of the time that True Rippers is going to be going in for that Butcher control, but then they just can't get any breaks. As we can see here, Abyss is going to be going in there for the slay, and it's going to be very interesting just because for the side of True Rippers, they have a very bad map here just because they have 2 losses and 1 win here in domination. Revenant, on the other hand, they've only had 1 loss in domination. All right, and you know we're starting to see that. You know those numbers and those stats. You know, come to fruition in the scoreboard is going to have the 75 to 46 lead for Revenant. When it comes down towards the kills, this is a team effort across the board for Revenant. No one in negative for them.
They're feeling comfortable, but with the spawns being flipped, Revenant, I do believe they have the more advantageous side to the control is B Hill. Oh, actually, it's going to be True Rippers that has the advantageous Okay. side because they are in that Charlie flag. So the blue people really just heading on over and rushing here. They're going to be having a hard time, surprisingly, in that even though Alpha is going to be the less favored side, Revenant still has that. A big triple kill coming out here for True Rippers. Techno with the death machine in hand. He's able to pick up a few, but the Predator Sir, R&D, actually, it does not take out Kevin. Kevin will Voice changer हार गया अबे चल be able to keep this hill locked in. Water dedication by team today. It's Rocky, but they're doing their best. They need to make this comeback happen. RBD King दिखा नहीं RBD Win it King. here 3, or will Revenant be able to keep this lead? It's not looking good for Revenant in this moment, but we're seeing a push come down low towards the C side, mommy. Yep, that C push is going to ensue, but then it's going to be one person. Techno is going to be able to go in for the push as well. Gets one! And also his teammate is going to be coming in for the backup. Fakes and Techno, very big plays, just stopping that Charlie push and eventually flipping the spawn just because you know very well that they are going to be able to do that. Oh my, I honestly, like, it's getting scary for the Revenant fans here. I know that they still have the lead, but these last few kills coming from True Rippers, it seems like they have all the momentum in their favor. They're starting to streak out. We're going to see Reckles be able to pick up a double kill across map. We'll see how influential that's going to be here, but Techno, he's going to be in the middle. He's able to find one. TR again going for comeback. Yes, bhai, TR is long-range sight lines with the Holger. He picks up one, gets help from Fakes, but Fakes with the finish. Can't win that gunfight against Bones. The B-Hill starting to get decapped, but as you see on the Vision का पोपट हो गया ये भूल गया कि वो देख सकता है स्ट्रीम विजन तू भी इरिटेट कर वॉइस चेंजर यूज करके Vision का hand bond कर दो Rippers come back. Revenant still has the lead in their favor. The A-Hill is still in his True Rippers doesn't have to set up वहाँ क्या तुम्हारा आवाज इतना भारी कैसे हो गया भाई गले में क्या डाल दिया तुमने गलत गलत चीजें मत करो They just have to win their gunfight. Cheese can't get the third. Reckles still in the hill. भाई इसका आवाज सबके दिमाग में से सेक्सी आता है वो आवाज लगा ना प्लीज मजा आ रहेगा वो समझ में आएगा देगा था भाई अभी लगा ना प्लीज I am only 16 It's going to be so hard. 120 and 112 with B and C capped right now. आवाज लगा ना उसका Solid defense. They're not going to be taking their eyes out here in Charlie. आंटी का लगा ले और ट्रैक करना चाहिए बस Squad of Revenant. What the fuck भाई क्या खेल रही है बे गेम प्ले देख सकते हो You know, I think the play was made by तुम्हारा तो गेम प्ले तुम्हारे मुंडी जैसा छोटा that's what won them the map. They were in that they were losing every single gunfight, but they found a way to get back control of this map. भाई क्या खेल रहा है बे They were able to use that lead that they had and use that lead to really just kind of slow the map down and allow अबे मिस्टेक तेरी आवाज किसी को पसंद नहीं आ रही है बंद कर मेरी आवाज मुझे पसंद है Quick, they were there. They made in through that rotation in that second half, knowing very well that they're not going to be spawning into the favorable side. They kept going. It was shut down a couple times. Yeah. And for the third time, they finally went through. Third time's the charm. Third time's the charm, folks. And that map number 3, Revenant was able to come through and keep themselves alive in this series after Vision, हल्का आवाज लगा ना close maps and one maps 1 and 2. अभी सही है भाई आवाज बहुत बेकार मिस्टेक नो बंद कर You are in the chat and they lost it as well. This could have easily और विजन कैसा लग रहा है तुमको हल बन के सस्ता वाला in the highlight package. This game number 3 was just as close. भाई गाइस हल कॉपी कर देना चैट आईएनडी का मैच हो गया आई ठीक तो ब्रो the very last second. When we saw that Charlie cap, it was game over. Able to capitalize everything. And I thought they were going to be going down just because of how heavily defended Bravo was. You saw that. Vision का sound कितना
quarter takeoff. फनी है भाई. And you know, just अच्छा भाई तो वॉइस चेंजर को थोड़ा पैसा दो और वापस बुलाओ. लॉल talk about an भाई. exciting day of Call of Duty mobile action, folks. This championship Vision Sunday, क्या है तुम्हारा? and the winner of this series will be the क्या आया? qualify from champs. इसको डैडी बोल लो, उसको मम्मी बोल. तुमको दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ? This one is, and we're about to head on अजीब over लग to रहा a है. standoff on Hardpoint. क्यों अजीब लग रहा है? Mommy, how you feeling about this Yeah, map and both चुप of बैठो. these squads Hardpoint gameplay? चलो मेरा. Hardpoint is going to be so अगर ब्रूस बैनर ने ये सुना तो भटक के. But then for Revenant, I think they have a little bit more of an edge just because पता they नहीं beat कौन है out ये ब्रूस. Vitality one map साले. here. They were able to Sorry, actually sorry. win one Yeah, search right. and destroy as well from Vision them. But then you know updated what? that one. It's going to be Hardpoint, and it's going to be Oh, instead watch party. Standoff, they were actually able to win Yay! against RBA, Bot. so that's an advantage. Charger. It's going to be an advantage here. They got some reps on this map already, and they got some big victories so far in this tournament. What the but fuck, bro? it'll What get are you us to saying? Game 5. That's what we want. I know you Chalo, want it as chalo, well. chalo. I know you guys wanted it in Chalo. chat also Get it on, because, get it. man, when it comes down to the gameplay in which we saw so far to just kind of kick off the championship Sunday, we got our winners Yeah, finals. We had a yeah, man. qualification match. We watched Insidious stay perfect in this tournament. Oh man, it's just a lot going on. Can Insidious 12-0 everybody to beat the champs? It's crazy. It's very possible, but honestly, whoever comes out from that lower bracket will definitely stop that. Yeah. If we see Revenant pull through Yeah. here, I feel like that could be the team that gets Bruh. Ooh, Revenant. Oh, Hey, man, Mystic, you know what? progress. And I'm not Oye, even- Sol. I don't disagree with you on that one because Sol when it कहता came आ down रही to थी Revenant उस- series yesterday against Lol. Vitality, it was one of the Solo. closest throughout the day. 250 रुपीस का सुपर चैट करके बोलो डॉग खेल. SMD खेल. Thank you, Solo. यार सही में मिस्टेक ना is so irritating. वो दो सुपर चैट किया क्या? हाँ. Solo. What's up, Solo man? जल्दी रिपीट. अबे मेरा तो साउंड सही है बे. पागल हो गया तुम लोग. क्या बोर्ड बनते हो यार तुम? रुको एक मिनट. Most definitely. अबे but चल you ना, were- sound we're सही है seeing a मेरा. different team today. It's like everything just flipped and turned around. And speaking of आईएनडी that को turnaround, तीनों में this is आई the फील आईएनडी के Revenant तीनों game मैचेस हो right गए now, बे. full side of True Rippers. If they win this, they're going to be moving forward. And for the side of Revenant, if they lose ये it, देखो it's अभी game हाँ over हाँ. for them. आरएनडी का मैच. यार अभी क्या आरएनडी जीतेगी यार. क्या है हम देख भी रहे. टीआर जीतेगी. लेट्स गो. आरएनडी टीआर. जीतेगी. टीआर. इरिटेटिंग मिस्टेक. लॉल. सोलो कह रहा है चुप हो जा, कान दर्द मत करा. Right now. For his team, but then he does get taken out by Reckless. It's going to be that true gun Solo. coming in for the side of Revenant just because of how many points they're already getting. Man, this is true chaos. Solo विजन को राखे. One, you ask me. Techno, he never misses a beat. Solo Comes in, विजन को राखे. throws one, his हाँ teammates सब find. पूरा सुपर चैट में बात ही नहीं करता. उसको चैट में कोई कोई इंटरेस्ट नहीं. सिर्फ सुपर चैट कर. सुपर चैट में बात करना होता है. उसको ये नॉर्मल चैट अच्छा लगता है. भाई 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 आप मेरे से भी ऐसा बात नहीं करना. जीते कर दो. कर देगा. But so you have to be careful watching that window, that hop-up window, which you can get towards P2. आईएनडी के मैच का क्या हो गया? Good rotation right now. आईएनडी आई गेस आईएनडी में जीत गई इसलिए एक मैच का फायर वाइटैलिटी. यार एक तो आगे भी क्यों दिखाते हैं. वो तो आ गई ना वाइटैलिटी आईएनडी क्वालिफाई. What position by जाएगी वाइटैलिटी? है ना. Team already for True Rippers are going to be there. बात करो. सुपर चैट कर दो. क्या कर रहा है तू माइक के साथ? ये कौन है सही में? ट्राई अरे मैं दूर रखना थोड़ा. फूक रहा है उधर. अबे अंडर द वाटर. घुस के बोल रहा है तू माइक में पूरा. That's what he said. Learn on UPI में चैट कर. भाई ये किसका माइक है? ये मिस्टेक का माइक है. मिस्टेक जोकर का माइक है. ठीक है जोकर. And they're going to be setting up their defense. जो इस The defense set up. A few trophy systems go down just और to protect the जोकर rotation क्या here for हाल? True Rippers. Zyro तो able to find मुंह one. में लेके बात कर रहा है भाई. निकालना थोड़ा घुसा नहीं मुंह में. And also with Revenant क्या picking up a few मतलब kills. नहीं Multiple score streaks around his P2. Here comes the ठीक है. Predator Vitality missiles, and and they're Predator starting to push देते. out a little bit too as well. Just trying to get that I defense guess as far TR out will as win. possible. क्या मेरा bet Reckless TR with a पे. double kill. मैं An I will be entire for sure. kill feed over like the last तू सुअर 15 साले क्या frags सुअर all किसको in बोल रहे favor थे? of Revenant. I mean, it's
really no surprise just You because are how heavily sewer. defended P3 You are a is. sewer. No one can go in. Two माइक को दूर रख sentry guns already. अरे One's कितना gonna be दूर coming रखो out अभी तो with go सही है on top of that अबे roof, तू and माइक one को going बहुत दूर upstairs. रख, That's पड़ोस के घर पे basically छोड़ it. के आ, But फिर वो what I'm really worried about is that they were able Okay. to get a lot of क्या है util बबलू? here, but for the next hill, that's अरे most बबलू important. बंटी का है बंटी? ए वो तो बंटी और एक सेकंड यार All right, True Rippers in P3. They got Confused about हो 20 चुके seconds on छोड़ो। the clock Clutch before किधर गया the बे? hill हट, officially boring कर changes रहा है over, ये but what can Clutch Revenant गांड do क्यों in है? these 10 seconds? We already see the rotation और coming लौड़े out. clutch। They're taking some aggressive gunfight. They know Clutch that तो they'll है ही have नहीं time इधर। to challenge, अभी दिखेगा respawn, उधर still put trading पे। themselves in a position to capture this hill, but they're taking some risky 2 fights. घंटा ही होता है भाई, 2 ए घंटे से बॉबी ज़्यादा नहीं बॉबी करना। प्लीज पोस्ट किया है For their opponent, well, just kind of इंस्टाग्राम पे great कुछ True Ripper setup, उधर से before the hill officially क्या? changes over, but they were अपनी not पिक्चर successful, as you see. जिसमें वो हैशटैग बॉबी गॉट अ चेयर लिखा है कैप्शन में। He can't take out Bones, आज but तू he पूरा brought ही बिठा just दिया enough भाई time उसको। to make the rotation. हाँ लिखा है तो हैशटैग बॉबी गॉट अ चेयर। And once it's बेंच all कर said दिया and बॉबी को। done, I think नहीं Revenant, नहीं चाहिए हम लोग को। they played that ये rotation दोनों flawlessly. बोरिंग हैं। That was perfection. They were able to just flush them ऊपर out. की True chat Rippers read करो, having such a चल hard रही है time with these gunfights. And yes, they had a very bright moment here into P4, but no, in the bakery, you're not going to be having your bread just because of how well Revenant's actually going to be able to do here. And speaking of bread, Blaze actually knows how to make some bread, and I'm so excited for him to actually go make me some. Well, you know what? Yes, I मरेगा do, देखो but I ये। don't get my बोला ना मैं। sourdough started here. We're just gonna have to, you know, just ferment here while we're watching this game instead. It is आई gonna ये require आरएनटी just डोमिनेटिंग perfect भाई। temperature for मैं तो बोलना ही था We will मैंने not बोलना get that था dirty here about bread. मैं आरएनटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। As we're gonna see a बोल रहा हूँ one, PRGT की almost स्कूल टूट है। 120 points on the scoreboard for Revenant. Just 35 more needed to be able to lock it in. Okay, folks. Just to remind you, whoever wins this matchup, they're the last team to go into stage number 5. This is the qualification, and Revenant is looking like किधर they're बैठा gonna है be ये? pushing us अबे, towards अबे, game अबे। number 5. Abyss wins that ट्रेडिंग डे gunfight. अबे What थोड़ा the तो बात hell? कर ले आजा। What the absolute बोला hell ना, is this here trading going दिन to लिखेगा be? ये। That sentry gun in that corner, that's going to be very deadly. ये Everyone संडे को is मार्केट actually going to बंद be होता है, spawning out देख right क्या now. True ट्रेड कर रहा Rippers है। are going to be having a hard time in here for that defense as Learn well. how to But play then Golden just Key. one नहीं, वो big दूसरा player, कर just रहा है one big play. Tecto is not going to give up. Still getting all of those scrap points. लॉन और 20 seconds न्यूट्रिनो is बोल going to रहे be कि huge within the हैशटैग pinch. शो He's going to be ट्रंक coming शो along big ट्रंक। kills, but then he does get traded out. 10 more points needed for Revenant. Enough for the clock. The hill's contested, but not no longer. हाँ हाँ समझे समझे लोग। They can still But win mic off of तो this on one. कर। मार्केट True कभी Rippers, बंद they're नहीं nowhere होता। close by अरे to तो the थोड़ा hill. माइक They're ऑन कर spotting so ले। far away. We're going Yeah, to yeah, a Saturday, game Sunday बंद 5 between Revenant and True Rippers. मैंने What a कल time हेल्थ to be alive. तेरा जरा भी आवाज नहीं आ रहा है मिस्टेक। I thought it was actually मैं माइक के साथ मेरे माइक के सामने लेता हूँ तो बोलते आवाज आ रही है दूर रखो दूर रखता हूँ तो बोलते तू क्या माइक आवाज घुसा मत मुंह में, माइक भाई। पास में रख मुंह के। very बाकी huge कौन बात करता है लौड़े हो गया तो Revenant yet again is always going to be काजू को बुलाते हैं रुक वो आ रहा है। It is always इसको नहीं gonna बुलाओ be. सॉरी Hey, me and बॉटम Mama, फ्रैगर we साले chopped it up. आके बहाना True देगा Rippers, you're done with this one. No way in hell you can Guys, break 2-2, this. let's Just go 3 to seconds needed. let's do it. All of a sudden, I'm like, why do I still hear Revenant, these gunshots Revenant. happening behind me? यार The end यार still goes in favor of Revenant. TR का And full so form पता है far, तेरे they are को? trying to make this True as Rippers. diverse as अरे possible. सुना But नहीं। there's one thing I think What? I've noticed so far. These last two Gender maps have coconut. not been as close as the first two Yeah? maps. So it kind of seems like Revenant's वो waking up दूसरा कुछ here, नाम नहीं याद and आ उसमें। they're dotting their I's, crossing तुम their T's, तुमको ट्राई करके दिमाग घूम गया क्या भाई their gameplay. They're heating up. They're Look just at them. about to get started. Ah, And having that, बात getting करता the हूँ। ball rolling, especially in the search and destroy, अरे काजू it को is not मैं going to be easy खाजा because True कटड़ी में Rippers, डाल they've been absolutely dominating Yeah. in search and Yeah. destroy. I'm not going to be surprised if there's going to be a तुम लोगों 5-6 को पता है here. ब्रेकफास्ट को I won't be ब्रेकफास्ट क्यों surprised बोलते at हैं? all either. क्योंकि बहुत break के बाद होता है। नहीं। रात- ब्रेकफास्ट को लंच नहीं बोल सकते। पता है विजन को कभी कभी विजन ने कह के ना कुछ और कहने का मन करता है। गांडू क्यों बोलते हैं क्योंकि तुम छुट्टी है भी बोल सकते हैं गांडू बोलते हैं लेम लेम। ये जिनमें कंडेंसबल साइंटिस्ट काम करते थे जिनमें चैट हैज गॉन बोर्ड काइंडली डू 10,000 रुपीस सुपर चैट थैंक यू हाँ 10,000 मांगता तुमको। तो आके सिर्फ 2 बार चैट किया जो भी सुपर मैं क्या बोलता हूँ? तू मत बोल विजन मत बोल विजन मत बोल। नेक्स्ट मैच कब है? जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ। अभी आईएनडी वर्सेस have an
या वाइटलिटी वर्सेस टीआर या आरएनटी played होगा, two इसका मैच maps कम तो here होगा। already against NS and Godlike, and they were the team to boot them हाँ, out. IGN the best, best. All right, yeah, and you know what? Both of those teams yesterday, they were hungry, okay? Especially down there towards the loser side Guys, of the 30 bracket. watts BP They give were over, let's not go. trying to get हाँ eliminated. मिस्टेक देगा They ना gave it everything in which they had, but True Rippers, they fended off 10 against KS them. bro, But what can they was fend 10 off KS? against this Revenant I've got team? Guys, 200 10k subscribers कर दो अभी के अभी एंड हम underway. पर नहीं रे चुनाव सब उधर जाके कास्टिंग करेंगे, उधर जाके लाइव स्ट्रीम करेंगे। 3-0 shutdown from मॉमी के Insidious बाजू में for बैठ के। Vitality. मॉमी के बाजू But में now बैठ in के। this series, this one goes the distance to a map 5. Oh, क्या मैच होगा? This Let's is go. the exact opposite of what happened in our game earlier. Matchup number 5 and Hackney Yard Search and Destroy. अरे All सोलो, you need to do is get that kill. सोलो फिर से You're कुछ करता है। good. No matter what game Kick with mistake this for player, you get 500 the lol. the power position is सोलो मतलब 3 बार चैट किया और Man, Mommy सुपर चैट पे। थैंक यू सोलो यार, अबे यार What मिस्टेक the team who wins विजन when they go सोलो to कह रहा है stage मिस्टेक को 5, किक करो फॉर 500। it all comes चलो down ठीक है, to चलो this. मैं किक हो रहा हूँ, चलो तुम 5 पे करो अभी के अभी, मैं किक हो रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 चलो बाय बाय। लेजिट गया क्या ये? उसे कहा था किक, उसने कहा कि खुद से छोड़ के जाओ। ये सच में And this is अबे what they say, right? उसने कहा था Search and किक करो, Destroy ये खुद से wins चला गया वॉलंटियर करके। And like लॉल we did a while इसको ago पता था also, मैं किक कर Frozen दूंगी Fate. इसलिए चला We're gonna गया। be seeing it here, then I'm not gonna be surprised if we get अरे to see रे it again. But then both चन्मय, these teams, 4 जो था people काफी था। still apiece. हम पैरेलल पे So किक hard नहीं enough कर for Reckless big kills. लॉल Head है ना जिगरप्रीत एग्जैक्टली दिस इज माय लॉजिक। And they're going to be able to lock in round number 1. We saw 3 big kills come in from Oil in that round. And I'm happy we did. मैं because निकल as गया you said, VC से, pros don't लुल। think it was him in that play yesterday with the ninja defuse to clutch up and that search and destroy for a squad to progress them on. Man, if you guys missed yesterday to kick off this tournament, where the hell were you? Okay, you should have been here with us watching all the action, but we're happy to have you today for Championship Sunday, and we hope you are entertained because we know that we are. Now Bones, he's on the flank, he takes down Fakes, he sees the second kill in Techno, but does he get too overzealous? Does he want to be aggressive? And he wants to make the play for his squad, and he does just that. Finds ये चालू हो 2. गया मैच? Surely he Oh, doesn't third take last out match. Mystic as well. Cheese comes in. Zyro on the flank. He's going to miss that first free shot. Only one left in. I don't think he can मर गए क्या reload सब? it. In the end, it's going to be a 3v1. It's all मिस्टेक up आ to जा Kevin. वापस आ। And once again, Revenant with a great मिस्टेक start here वापस on आ जा। offense. Revenant has been सब कह doing रहे such a सोलो good प्लीज गिव job throughout 500। the offense. They're मिस्टेक applying क्या so था? much pressure, getting all of those power positions as well. And Kevin is going to be the only person left here in this team, the only hope to win ये this क्या round. If चिल्लाते it's going to हैं be one person, it will be Kevin. Having that top L, having those sights is going to be easy, but then it's not going to be so. But then gets the kill off Quattro, big kill. Kevin says, I'm going to stage 5. I'm going to stage 5. I'm going to do it for the squad. Oil पर मैं versus Revenant को Kevin. सपोर्ट कर Kevin रहा made the wrong read, and it was a 50-50 decision. हाँ In आ the रही है end, विजय, it's going to be Eh? Revenant who wins round आ रही है। number 2. अबे आरएनटी Great effort from जीतेगी, Kevin, but that's a tough spot obvious to be है। in. It's a lot of angles to clear. Just made पता है the wrong कमबैक choice. है आरएनटी का बाय द वे। That would be the last फर्स्ट thing दो you मैच ever हारे want थे was वो to लोग। have that 1v2 or 1v3 situation, and Kevin just played that to perfection. And sadly wasn't able to peek into the left corner, and just Oil was in that head glitch, and he just does not miss. We're going to be seeing an engagement here. Ooh, angle. Bones against Mystic. Who's going to win it? मिस्टेक आजा वापस Okay, he's gonna मिस्टेक back up a little bit. मिस्टेक। But Mystic's gonna see him. The आंटी quick की turn टीम from Bones. Mystic, he gets his अभी first नहीं खेल place, रही है, says, अभी "I'm हमारा outta here." टीआर Okay, और I see a bunch आरएनटी of का already. मैच चल रहा है। Man advantage for True Rippers. बट मुझे पता नहीं था लोग फोर्स वन से यहाँ चले गए, Such पता है an देखो? important round for him. And पूरी surely फोर्स वन the की थी double वो। kill, even though Kevin and मुझे Cole नहीं were पता। round हो गई थी two, पर वो अच्छा पता लगता मेरे था यार teammates, फोर्स they वन। got that reassurance. Okay, our star player, he's फोर्स वन popping off निकल गई ना less कॉर्डन matches. से, You know, अभी वही तो। मेहम भी तो kills निकली। on the तो board, रैकल्स try to get this अभी map number 5 all tied up 2-2, और and not ज़ाहिर let तो it है ही। run away from you. You don't want this to get out of control. ओहे because सोलो Revenant, ने man, the 500 दिया pressure एंड off इज the लाइक start. डोंट ऐड हिम बैक, सर दर्द कर दिया है। Oh, लॉल Abyss with the overpush. Getting one kill, but Cheese is मिस्टेक gonna अब be right below him. Oh Gets my the God. second अभी आएगा kill. वो। Big kills right now for Abyss. Shut up. And Get that's going to okay, be just Lord. like that, a 4v3 situation. But he's going to be getting another. Yes, No he way. does. Get the Remove third. Is he going to be Mystic able to from get mod. the ace? No way. लॉल Abyss, he has his लॉल two teammates with लॉल him. He's gonna be अब पे guarding. क्या Ace चल is रहा not है? in.
not a factor Can anymore. remove Mystic from mod? मिस्टेक तेरे हेटर देख रहे कितने Mystic क्या? और देख अब अली Mystic ना वॉलंटियर करे जा रहे हैं। पहले सोलो के लिए करा, अभी कहते चलो चलो mod हटाओ। For Revenant. ईयरफोन्स मैंने घुमा दिया यार। अरे काजू है। वो नहीं है ओ काजू भाई काजू कतली का है तेरी। They are having a कितना very hard कतली time है with तेरी। the aggressions. ए Gunfights they कतली keep बना देगा losing, सोच and ले। they keep letting individual gunfights. So not only that, लो they keep mod getting gone। multi-kills, and Abyss with that 3-piece ओ was just भाई absolutely तुम पता है crushing ऐसे for them. कंडीशंस रख रहे हो ना वो सुपर चैट्स कि ये कर ही लेगा और मुझे कहने की भी जरूरत नहीं हो रही है। 3 rounds away from qualifying for stage 5. सुपर चैट वो But ईयरफोन्स here in घुमा round मैंने। 4, True Rippers क्या हो says गया it's तुझे? not gonna be that easy. ईयरफोन्स We घुमा will दिया fight मैंने। back 5v3 situation for the defense. सही एक हुआ। काम कर And now they're feeling comfortable. www.amazon.in पे Multiple players जाके grouped up. Fakes is going to be the only फिर player over here towards his B side of क्या the सॉल्यूशन map. देता हूँ भाई मैं वकील बनना चाहिए वाह वाह तो जज बनना। हाँ वकील छोटा बात है चलो गाइस यूट्यूब बंद कर से पढ़ाई करेगा नो मोड नो देश को जिताऊंगा जिंदगी Always सवार with that दो। patience, and we saw it a while ago in firing range. Trailer was his kingdom, and it just seems to be like it's going to be Office 2F as well. That was a very good patience gameplay. It was big kills for him, and finally popping off. आ रही है बोलना आ रही है। ए तुझे अभी अभी बता नहीं ये पागल सुनो ना अगर ऐसा हुआ कि 1-5 चल रही है एंड फिर टीआर कम बैक करेगी एंड जीत जाएगी यार ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखा रहे हो। अनबिलीवेबल हो जाएगा फिर वो मजा आ जाएगा मजा। ओ भाई आवेश भाई They have bombed down, and so now the entire defense. अरे मिस्टेक को मौत से हटा दिया ये देखो मैंने हटा दिया। गान मारो तो सॉरी अबे माँ कसम अबे ओए गांडू क्या मॉड हटा दियो भाग और दो You would always need नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा अबे वो इतना समझदार है कहते हैं तू अबे माइक दूर रखना। ये वही काजू है क्या जो 123 गया था फिर बहाना दे रहा था वही काजू है ना हाँ साले माइक दूर रखो माइक अपने मुंह से कृपया थोड़ा दूर रखी मिस्टेक नहीं तो मैं गरियाट आके गरियाऊंगी तुझे। माइक दूर रख गरिया दिया अरे गरियाट में रहता है ना तो आके इसे बेटे मिस्टेक ये अपना वो ये अपना वही है ना काजू जो मतलब खेल नहीं पाता है 423 वही जो आके फैची लेके घूमता है वही जिससे स्नाइपर नहीं चलाई जाती वो ये एफएच मारने जाता है। अरे काजू वो है कि नहीं तो देखो पहले क्या तुम तेल लगाओ उधर चुप बैठो यार तुम ऑयल उधर इन द सेंस बालों पे तेल नहीं लगाते क्या चुपके सिर्फ उधर पागल है क्या तू बालों पे तेल नहीं लगाता। हटा दिया चिन्ह में मैंने मिस्टेक को मौत से। रुको पिज़्ज़ा लेके आने दो भाई तुम लोग बात करो वही खाते रहो तुमसे होगा तो कुछ नहीं भाई खाते रहेगा बस। मैं काजू से अच्छी स्नाइपिंग कर सकती हूँ। क्यों लिया नाम पिज़्ज़ा का सही में ये जान मुझे बताया तुम कुछ और खा लो फ्रिज पे जा रहा हूँ आइसक्रीम खा रहा हूँ चॉकलेट भी खत्म हो गया ये कर रहा हूँ वो कर रहा वही तो गेम खेलने के टाइम भी बोलता है ना ये अभी भागूंगा ऐसा बोलता है ना बोल के काम इन गेम हकता ही यूनी के डीएम में उसको फोटो भी भेजता हूँ आइसक्रीम की छी भाई हकने का आइसक्रीम का क्या दिया विजय तुमने लवड़े मम्मी का नंबर बट एक नंबर तो मम्मी अबे विजय किसका नंबर दिया तूने नहीं एग्जैक्ट नंबर नहीं है ऐसे देने की वो रॉन्ग नंबर है। गाइस चल तुम लोग रूम में आता हूँ ठीक है मेरे को काम है थोड़ा ये लंडगिरी के लिए काम यार मेरे घर पे गेस्ट आएंगे मैं लाइव कैसे चलाऊं मिस्टेक जा रहा है धोखे काजू तुमसे नहीं हो पाया छोड़ दो काजू इधर से चले जाओ तुम काजू को किसने बुलाया इधर काजू को बुलाया किसने इधर निकालो इसको एक तो साले खेलना आता नहीं है मिस्टेक ही बोल रहा था काजू को बुलाओ नहीं अभी नहीं चाहिए ना तो क्या ना
रात भर ये मेरे ही नाम ले रहा था, पता है? जी भाई, गेम तो खेला जाता है नहीं, क्या मैं चलेगी घूमा बस। क्या करते रहते हैं? स्ट्रीम में सबने देखा है भाई, तू क्या कर रहा था? Exactly. काजू करे जा रहा था। चल चल जी भाई, कान्यो मैं आया। ये देखो कान्यो रुको, ऐसे नहीं बोलो। भाई बार बार उधर ही पिट रहा है, दोनों झगड़ रहे हैं। ये अंकल है, अंकल है, मिस्टर अंकल। With another big kill to kick it off. ये मिस्टर करियर वाली लड़की का विजन है वो, विजन है विजन विजन नहीं कौन है भाई? विजन ओ भाई नहीं जहर की जरूरत नहीं है, केशव का गेम प्ले देख ले। अबे सोलो ने फिर 100 सुपर चैट किया, कह रहा है मिस्टेक माइक ले ले गरीब आदमी। अबे इसको माइक की नहीं, इसको दिमाग की जरूरत है, इसको दिमाग की माइक स्पॉन्सर कर दो को दादा। इसको टिकट टू जेल स्पॉन्सर करो भाई। काजू को चलो कुछ किसी को अगर कुछ फोन पे नंबर, तुम नंबर लेने का ध्यान में ये मत करो, तुम मुझे डीएम कर दो पैसा। यूपीआई है ना, यूपीआई पेटीएम करो। आज तो पैसा ही पैसा होगा, तुम ट्रेडिंग करो ना जाके। हाँ ट्रेडिंग करो। बैंड शोध क्या कर रहा है? भाई इधर से जा, केशव भाग जा, इधर किसको किसको बजा रहा है विजन? किसको बजा रहा है विजन? बजा। ओए केशव सिंघानिया, तेरा माइक से आवाज आ रहा है ना, ब्लोडे निकल। And I like Techno pushing through, taking as much of the map as he possibly can. जाके इधर आया है, देख रहे हो लौंडे खेलना आता है। मेरा एक दोस्त भी कहता था ऐसा सेम जो तूने अभी बोला। फिर से बजा रहा है विजन, किसको बजा रहा है? उसको कहते थे माइक ऑन करो, तो ऐसा कहता था। सोलो आज सिर्फ सोलो बात कर रहा है, सिर्फ सुपर चैट पे बात कर रहा है, लिटरली सुपर चैट पे बात कर रहा है। सोलो बड़े लोग पट्टे लोग पट्टी पार्टी। ओनर ऑफ यूनाइटेड स्पोर्ट्स, बिग फैन। या अरे लवड़े केशव, गरीब गेम प्ले, गरीब आदमी चुप बैठ। सारे तू अभी पिज्जा हैकर पिज्जा नहीं खाता। यूपीआई आईडी है ना उस पे, सुपर चैट करता मैं आता हूँ। नहीं डीएम पे तुम गंदी चीजें मत भेजो उसको, डिस्क्रिप्शन पे है यूपीआई। ऐसा नहीं होगा, गंदी चीजें विजन को भेजो, विजन को भेजो। हाँ मिस्टेक की शक्ल दे दो मेरे को, मैं उसको भेज देता हूँ। अरे वो अच्छी चीजें नहीं भेजना, गंदी तुम्हारी टट्टी जैसा गेम प्ले भेजना है, समझे? ये लास्ट राउंड भाई, आरएनटी जीतना भाई। क्या अबे 3-5 नहीं, प्लीज 5-5 करो, प्लीज 5-5 होएगा प्लीज गाइस। 5-5 हो जाओ, फिर केशव का गेम प्ले देखेंगे। 5-5 नहीं आरएनटी प्लीज नहीं यार, प्लीज यार 5-5 हो, फिर चाहे कोई भी जीते। मैंने गाइस 5-5 कर लो, फिर काजू का नाम लेके खेलो, एकदम प्रॉपर गेम प्ले आएगा। उभर के थैंक यू चिन्मय खंडेलवाल फॉर द यूपीआई आई रिसीव। मुझे करना था लौड़े चिन्मय, मुझे तुमने किसको कर दिया? इसमें वो कुछ नहीं रखेगा फिर। यूनिक जाके डीएम चेक करना। क्या हो गया डीएम से क्या ऐसा भेजा? ध्यान ही नहीं दे रहे क्या चल रहा है तुम लोग उधर? क्यों, क्या हुआ क्या? देख 1v5 किया वो 3। हाँ देखा हमने। अच्छा साले किया ही नहीं, फेक रिएक्शन। रिएक्शन तो अभी आएगा जब यूनी डीएम चेक करेंगे। अरे क्या तूने पिज्जा भेजा है? मुझे पसंद नहीं है, छी। खोल के तो देख। मैंने खोल डर लग रहा है। ए छक्के, मतलब मिस्टेक। वो रेसिस्ट तो भाई। लेट्स गो रेवेनेंट। ये टीआर जीती।
क्या लौड़े टीआर के अबे यूनी जाके देखना है देख रही नहीं मैं चुप कर दो खोल रही लेट्स गो सब बड़े हो गए फंडे। आई नो तुझे बहुत पसंद है बट मुझे घंटा एक जरा पसंद नहीं है मुझे कोई क्रेविंग नहीं हुई यू फेल्ड इनको भेज तो इनको होगी क्रेविंग मुझे तो एक नहीं केशव का गेम प्ले देख के कुछ क्रेविंग नहीं होगा केशव का गेम प्ले टट्टी है गेम प्ले नहीं पिज्जा भेज रहा है वो गार्लिक ब्रेड हट चलो मैं आता हूँ अभी मेरा काम ए यार क्यों बे मैं बंद कर दूंगी मैं बता रही हूँ कभी भी गेस्ट आएंगे मैं नहीं कर सकती ना फिर जायरो ओपी ना हाँ अच्छा खेला अबे राखी है ना नूब अबे गधे अभी आएंगे अभी राइट नाउ एंड इसने कहा था कि ये इसने कहा था स्ट्रीम संभालेगा तो ही मैंने ये करा था स्टार्ट यार ऐसे नहीं होना चाहिए था एक वो यूनी लाइव यूट्यूब पे क्यों नहीं मिल रहा मुझे मेरे इधर देख क्यों जाना है तुझे कोई मिलेगा ऐसा लिखना रुक बता अरे ये पेड़ है गाइस इधर फ्री में दिखा रहा है डे टू साउथ एशिया मिडिल ईस्ट ऐसा डाल कुछ आ जाएगा स्टेज 2 नहीं स्टेज 4 है ओके प्रशांत हम कहाँ से स्टेज 4 हम नहीं चिल्ला रहे हैं ये मिस्टेक है ना मिस्टेक ये चिल्ला रहे हैं मैं ट्विटर से बात कर रही हूँ आईएनडी का मैच तो हो गया ना मैं बता दूं मिस्टेक लड़ता है या लड़की तुम आईएनडी का मैच तो हो गया ना अभी आईएनडी वर्सेस रेवेनेंट होगा and vitality versus TR I guess firing range search and destroy 6 and 5 again it's tooth and nail it's so vitality 3-0 कर दिया the MVP of this series I think it's Oil because it was whoever flipped the spawns on domination in that second half. They don't flip the spawns on domination in that second half. I think they're out of this tournament, but that was the play to get them map number 3 and to keep them in this series, okay? So that's the series layout there for our loser semifinals. But folks, as you guys know, हाँ अबे एंडी ने क्वालिफाई कर लिया ना हाय सनलाइट प्लीज ये लोग सारे मैच आधे आधे दिखा रहे हैं आई डोंट नो व्हाई against our first seed, not one of our better teams, against our first seed in Team Vitality is Sidious. They remain perfect so far. Perfection is the name of the game, and it just seems like Vitality just couldn't handle that. Crossfire Hardpoint, I was not surprised that happened just because Vitality, that's their weakest map in their game mode as well. 41, they didn't even cross over that half mark. So, I mean, that's very impressive for me. But then Insidious has a lot to go for. Yeah, they do got a lot to go for. But just 3 more maps for them, and they will be your regional playoff champions. And have it going towards chance with all the confidence in the world, knowing that they're the best in the Middle East and South Asia region. But we got to get to that point. But before we get there, we got to break down this action that happened. And I can't think of no better people to do so. Casting कितनी difficult होती है बे? जा ए बॉबी आया बॉबी ने उसके कपड़े पहने रफ्तार के चल के नहीं उसने पिंक कुछ पहना था हाँ वो बहुत प्यारा है लेजेंड पूरा फ्लफी टेडी बियर टाइप क्यूटी and win against Vitality. That is going to be insane. Bobby, what are your thoughts so far? That was a back and forth match, man. That was insane. That was so crazy, and the craziest part was in the game 5. That could have gone either way. If we don't see that 1v3 clutch, it would have been tied up 4-4 at one point, going either way. But just mentally shattering whenever that happens, and what True Rippers just couldn't bounce back from it. वहाँ पिंक ऑरेंज अच्छे से याद नहीं है यार बट वैसे ही कुछ था फट्टे चिट्टे कपड़े पहन के आया था वो हाँ क्यूट लग रहा है बहुत ज़्यादा कल भी क्यूट लग रहा था ना आज भी सिम पर व्हाट भाई यार लेजेंड में इस पे सिम कर रही हूँ कल से तो उसे सचल किसी और पे कर उसकी बीवी मारेगी अभी अरे मतलब सिम भी कर रही हूँ मुझे कौन सी शादी करनी है इससे 2 दिन क्यूट लगा भूल पे जाऊंगी अभी के बाद जैसे तू उसको भूल गई है लॉल व्हाट वाज दिस दुख होता है भाई सनी के बहुत दुख होता अबे जाइट है वो कैसे है
तू किसकी बात कर रही है? मैं किसी की नहीं, तू मुझे लगा तूने एक जनरल जैसे कहते ना कि जैसे वो कहा करती थी वैसा कुछ कहा, लाइक जनरल। ये चल तू हट बे भाई। यूनिस बॉबी सिम्प है ना, अभी तो क्यूट है, तुमको नहीं आ रही उस पे ऐसे कुछ? तो मुझे भी अबे नहीं अच्छा है, लाइक सिम क्यूट है। अबे हाँ ठीक है ठीक है जाने दो ना बे। वो अच्छी है टीचर हमारी। हाँ भाई, अरे एक बात बताओ, एक डाउट है मेरे को। एल का क्यूट है बॉबी, ऐसा क्यों है? क्यूट है। ये लास्ट मैच है लेजिट। इधर भी फेमिनिज्म चालू है देख, 3 लड़के और खाली एक ही लड़की, 2-2 रखो ना। मिस्टेक है ना? हाँ तुमको चाहिए ना? इधर नहीं उधर। अच्छा दिस इज अबे वेट अ सेकंड, ये लास्ट है आज का? पागल हो रहे हो क्या? लास्ट कैसे होएगा ये? ब्रैक है अभी, ब्रैक। हाँ ना लास्ट मैच खत्म ना फिर। अबे एक सेकंड, फाइनल्स में कौन है? इसके अभी वाइटलिटी वर्सेस रेवेनेंट। एग्जैक्टली। बाद में इसमें से जो जीतेगा उसका फाइनल्स होएगा एंडी के साथ ना। कुछ भी कहते हैं ये। कुछ देखना है क्या? नहीं राखी वाकी देख, मैं इस पे सिम कर रही हूँ, मुझे से शादी नहीं करनी है कि मैं इसे राखी बहन ये सब कुछ भी कहते हो। जैसे कि राखी को कोई सीरियस नहीं लेता है। एग्जैक्टली। अबे क्या सब नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं लेता हूँ सीरियसली। मैकल इतना अच्छा खेलता है पता है। कॉड देखना इसको, फाड़ू है फाड़ू। नहीं देख, कल मैं देख रहा था किसे? जब आईएनडी और गॉडल वाला जो मैच था ना, वो देखते देखते मैं सो गया। दोपहर को कौन सोता है? मैं। अबे कॉपीराइट लगेगा ना तो समझ जाएगा फिर तुम्हें। मैं नहीं देख रही कुछ, कल ही लगा। कल लगा था क्या? हाँ किसका लगा था? बीबी बोला ना मैं पहला मारेगा वो। सही में बॉबी यूनिकॉर्न के राखी के बंधन को निभाना। लॉल बीबी की जगह बीसी हो गया है भाई। लेजिट छट्टो कि ना 2-3 अराउंड ऑलमोस्ट 3K की वॉचिंग आ रही है तेरी। अबे हाँ मेरी सपने में आ रही है, आके देख ले तू भी। अरे तू अब मेरे अपने सपने में मुझे मत देखा कर ना, अच्छी बात नहीं है। नहीं मेरे सपने इतने बुरे नहीं होते। और नहीं तो क्या, ये उनके रिकमेंडेशन पे शादी की ये। अबे हाँ मेरा वाईटी बहुत जुड़ूंगा बस। सिम कॉर्न ओए दिस इज नाइस, आई लाइक दिस। एटलीस्ट बेबी कॉर्न एंड पॉपकॉर्न से तो बेटर है सिम कॉर्न। बेबी कॉर्न मामा पॉपकॉर्न को क्या पूछेगी? पापा कौन है? नहीं पॉपकॉर्न कौन है? किधर है? इसने ना नेम तूने सही बोल दिया ना तभी से। पापा नहीं पॉपकॉर्न है ना। पॉपकॉर्न हम लोग खाते हैं ना थिएटर में। पापा कौन खाता है? वो भी है सही। ये क्लच माइक ऑफ तो क्यों बैठा है? थ्रेडिंग डे। क्या थ्रेडिंग डे? अबे ट्रेडिंग बोला है, ट्रेडिंग डे बोला है। ट्रेडिंग। अच्छा थैंक गॉड। हम आपके हैं कौन ये पूछा होगा। NCS का गाना भी तो 1 मिनट आ ही गया, अब क्या बचा बताओ। I heard Trunks did 1v5 clutch against Vitality but they didn't show. I don't know यार possible, मतलब कैसे हो सकता है? वो सब तो ठीक है। यूनिट को क्या भेजना पड़ेगा जलाने के लिए? उसने भी किया था। क्या करना पड़ेगा? लॉन और न्यूट्रिनो भी बोले थे। क्या करना पड़ेगा? तेरे को जलाने के लिए क्या खाना भेजना पड़ेगा?
नहीं कुछ नहीं, आई एम नॉट फूड, मुझे खाने का एकदम शौक नहीं है, लाइक मैंने जल्दी सीरियसली। तो अब से मत भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अभी भी एक चौकोबार पड़ी है मेरे फ्रीजर पे। तो मुंह में ठूस के बैठना, मुझे क्यों बता रहा है? जली नहीं, चुप बैठ, शांत बैठ। क्या जलती रे? रहने दो। मेरे कितने भाई है? मेरा एक ही अपना भाई है, एंड ऐसे तो बहुत भाई है, जहाँ नजर घुमाओ एक भाई बन जाए। नहीं लाइक मैं ये सब नहीं करती चोचले कि किसी को भी पकड़ो एंड राखी बांधो, मुझसे नहीं होता भाई। हर रिचुअल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक रक्षाबंधन है जो मानती बस, तो मैं तो अपने ही भाइयों को प्यार करती बस। मैं नहीं बनाती भाई सिर्फ इसलिए ताकि उनको ब्रोजोन कर दूँ। और भी तरीके हैं काटने के, राखी बांधना जरूरी नहीं है। काटिंग हाँ लाइक लोग ये कहते हैं ना, राखी बांध दिया तो मतलब बस अभी सीन नहीं होएगा कुछ, ऐसा जरूरी थोड़ी है। राखी बांध के भी तुम्हारा कुछ कुछ हो सकता है कभी। एग्जैक्टली। तो वो बंदे को गाली देना इजी रहेगा भाई, फिर हमें वो गाली एक्चुअली कुछ मीन भी करेगी। वो इसने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया अपना। ये आंटी बैठ गई। विजन, अगर वहाँ पे इन दोनों के जगह हम लोग होते तो फेमस हो जाता। मजा आता फिर। मैं क्या क्या कहा? नहीं अच्छे दिख रहे भी आज। वो बेटर लग रही है। वो बेटर लग रही है, अच्छी लगती है। ऐसा चप्पल उठा के मारूंगी ना, पता चलेगा तुमको। मुझे जाने तो दो, कोई कास्टिंग मतलब सिर्फ कास्टिंग देखेगा, मैचेस कोई नहीं देखेगा फिर। अरे कास्टर होता है, कास्टिंग सुनते हैं। नहीं मैंने कहा कास्टिंग नहीं देखेगा ना, कास्टर को देखेगा। मैं ज्यादा फेंक दिया, चल मार। तेरे सर पे। मैं ऊपर देख लिटरली ऊपर ही देख रहा था अभी। कुछ गिरा नहीं। ये तुमको ऐसे कभी डर लगता है जब ऊपर देखे कि फैन कभी तुम्हारे पे गिर गया तो? मेरे रूम में है ही नहीं, मेरे रूम में एक टेबल फैन है। देखो स्कूल में टेररिस्ट अटैक अगर कोई बंदा सोच सकता है। यार मेरे को चाहिए था वो एक्सपीरियंस चाहिए था मेरे को, पता है जब हमारे टेररिस्ट अटैक नहीं था बट लोकल गूंस अटैक हुआ था मैं स्कूल में, पता है मस्त पूरा इतना बड़ा स्टील वाला दरवाजा फोड़ दिया। कोलकाता रहती है। हाँ अरे नहीं सीन अलग हुआ था। हमारे स्कूल का जो बस था ना, उससे उन्होंने किसी बच्ची पे चढ़ा दिया था बस को, एंड वो बच्ची का डेथ हो गया था, छोटी सी 6-7 साल की। तो इसीलिए उस सोसाइटी के जितने लोग थे सब आ गए, स्कूल तोड़ दिया था पूरा। हम तब स्कूल में ही थे, हमारी फट के 4 सबकी। किसने तोड़ा था स्कूल? वो बच्ची जहाँ रहती थी ना जो मर गई, तो अरे नहीं, कैसे मरी वो हमारे स्कूल बस से। वो स्कूल बस पी के चला, लाइक ड्राइवर पी के चला रहा था एंड वो उसको चढ़ा दिया उसने उसके ऊपर बस। और इसे स्कूल टाइमिंग पे हुआ। स्कूल वाले ने एक बार हम लोग के सिक्योरिटी गार्ड को उड़ा दिया, वो भी मर गया। ओए ये शुरू हो गया क्या? नहीं मॉन्की आ गया। अबे एकदम सो के उठा है लेजिट, बट क्यूट लग रहा है। ए यार क्या क्यूट भी है मेरी का। बॉबी की जगह अमन रहने दे यार, काश हमको ये मौका मिले, हम फेमस हो जाएंगे फिर। ये फेमस वाला लाइफ सही मिल गया, सिंपल वाला बहुत बेटर। यार हमको भी चाहिए ये वाली कन्या। अबे कल ही तो बताया, फिर क्यों सुना रहे हैं? watch out for and they should do the same. I think a lot of people misinterpret grinding to just playing the game again and again and thinking that like I'll just become a pro out of this. The best of the best I feel in every game, not only on mobile. कोलकाता या कहाँ पे वो मिलती है ना, एक स्पाइरल मिलती है, स्पाइरल पोटैटो क्या बोलते हैं उसको? क्या मिलती है? So yeah, that'll be my advice. आलू वो जो गोल गोल होता है वो हम लोग के घर पे मिलता है।
गोल 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 फ्राई करते हैं बाद में स्प्रिंग रोल। ये स्प्रिंग रोल नहीं, स्प्रिंग रोल कुछ और मैं भेजता हूँ उसका नाम याद है। हाय हार्डी। ओए इज दिस फेंडर वन जो जिसने उस दिन 50-60 किल मारे, लाइक ड्रॉप करे थे विद स्नाइपर? आर यू दैट वन? बिकॉज़ आई एम योर फैन। आप वो हो तो। ये देख मैं यूनिकॉर्न ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अबे स्लम्स में क्या मारा था भाई? मैं गई थी चैट डिमांड पे कि स्नाइप करो। क्या भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? ये देख कौन से ग्रुप पे भेज रहे हैं? अबे तो ऑलरेडी फेमस, हम गरीबों को भी मौका देते। अरे यार सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है। काजू को फॉरवर्ड कर दो। मैं कैसे कर रही हूँ, वो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है। रुक स्क्रीनशॉट लेके भेज देती हूँ। हे भगवान, भगवान को याद मत कर, पाप नहीं कम होंगे तेरे। पर मेरी माँ भी यही बोलती है। ये देख, और ये बोला इसने फॉरवर्ड करने, मैंने कर दिया। भगवान के कान होते हैं? भगवान के कान? अबे मतलब छोड़ो, अबे बोलो ना यार। इज दिस द सेम फेंडर हार्डी? किधर है चैट में? हाँ चैट पे। अरे हाँ, इसको क्या बोलते हैं वही तो पूछ रहा मैं। कुछ तो बोलते हैं। स्प्रिंग, हम लोग इधर पोटैटो स्प्रिंग बोलते हैं। हाँ पोटैटो स्प्रिंग पोटैटो। मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है बे। अरे इसके ऊपर ये तो सादा है, इसके ऊपर ना चीज डालते हैं। पेरी पेरी, हाँ पेरी पेरी। आई डोंट लाइक चीज। पेरी पेरी पाउडर है, मेयोनीज। आई हाँ मेयोनीज चीज नहीं डालते। चीज वाला होगा पता नहीं, मैं खाया नहीं। हम लोग के इधर वो मेयोनीज डालते हैं। ओए बॉबी बॉबी बॉबी, लेट्स गो। बॉबी खड़ा हो गया, लेट्स। ये मोटू है एकदम। क्या हो गया? मोटू बैठा था ना कब से। अच्छा खड़ा हो। ये सब जगह पे डबल विनर है इधर। सही में कॉर्डम, जब से मैं कॉर्डम पे आई ना मुझे समझ जाए, लाइक लेजिट यहाँ पे सिर्फ एनीमे फैंस एंड ये डबल मीनिंग बात करने वाले बंदे बंदी है बस। सी डबल एनीमे दैट द पर्सन इज लाइक, वो डायरेक्टली बोल देता, उसको ऐसे शर्म नहीं है भाई। एग्जैक्टली, बेशरम हो तुम, बेहुदे हो तुम। ए आईडी का या भाड़ में जाओ। आईडी बात ही नहीं कर रहा भाई, बक। इसमें टैबू करके लेकिन यार विजन तेरी आवाज सुनने को तड़प रहा है यार, क्यों ऐसे कर रहा है आज? सुना दे यार, सही में टीम माइंडेड इसका तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे विजन कर दे, खुश हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करना था। True Rippers with दो बजे में it was actually I think Techno and तेरी माँ का बोतना मादर चोद। they got some big kills. They were able to get the final few seconds on the hill. This is where I thought Revenant was going to win it. It was with Bones in a death machine, but in the end they just got a little bit too comfortable, I guess. They felt like they were going to have it. मेरे को मिस्टेक के मम्मी या पापा का नंबर चाहिए, सब क्लिप्स रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा उनको, प्लेलिस्ट बना के दूंगा। बैठ के सुनो अपने बेटे की कार में। यार मेरे को भी डाउनलोड कर। मैं भी सुनाऊंगा तुम्हारा वो क्लास, तुमने जो क्लास करने गए थे। तुमने बायोलॉजी क्लास मालूम है तुम्हारे घर पे? मेरा स्टेटस देखा क्या आपके लिए लगाया था? ए नहीं देखा। अबे रक्षाबंधन मैंने विश किया तो हैप्पी रक्षाबंधन लगाया। ए विजन का हैप्पी रक्षाबंधन बोलो, साजू का हैप्पी रक्षाबंधन बोलो जल्दी। ये बहरम जैसे लग रही है भाई आवाज मेरे को। हैराम मुंह में हैराम। भाई बहन ऐसे नहीं बोलता भाई। अरे अरे ये इतना फनी मीम लगाया तूने, मुझे लगा कुछ प्यारा सा लगाया होगा। थे हार्डी और ओपी डूड तारीफ दिल जीत गया तुझसे मेरा। ये नाइट बोर्ड क्यों बार-बार? नाइट बोर्ड को अच्छा नहीं लग रहा है। अबे सुनो ना, तुम संभालोगे चैट थोड़ा, मेरे घर पे गेस्ट आ गए हैं, मुझे जाना होगा। नाइट बोर्ड को अटेंशन चाहिए। हाँ विजन काजू थोड़े देर चैट संभालो ना। सबकी आवाज से ये हाफ एन आवर में तो हो जाएगा ना खत्म? नहीं लगता मेरे को। तो जो फिर ऐसे रहेगा लोग देखेंगे। घंटा 5K तुझे 5 लाख ना, तो मैं जाके मैं नहीं आ रही आज शाम में, वैसे तो बुआ के हाथ राखी भिजवा दूंगी। अबे बार-बार मैं आती हूँ रुको।
to put themselves in a better position, you do have to give them so much credit for the way that they played this game of domination. Inside in the second half, still able to get that flip for C, and that was really the game changer for them and what saved the entire series. It really did save the entire series because they were set up to lose that dom. Some big plays being made at C, and they were able to carry this energy on over towards the hard point here on standoff, and then that last S&D on Hackney Yard. What a fantastic way to qualify through a reverse sweep. You know, we know some fans out there, they wanted to watch the winners finals, they wanted to watch here in this qualification match, but I think we got the best of both worlds, you know? Like, I would have rather seen this game and watched the 3 towards the back end, rather than watch that absolute stomping by Insidious against Vitality, and we did get a chance to see some of it. Yeah. Insidious definitely came with their A अरे मुझे गेम स्लो मोशन में क्यों लग रहा है? People know this is the most feared team in all of India right now, and there's a थोड़ा reason अरे for वो it, डेड सेलेंस even लगा with के the चल amount रहा of है. experience that Vitality has, the amount of practice they put in. Insidious is just नहीं, on a नहीं, कुछ और different scene है. level, and I think it's a good thing for both of अरे these अरे teams भाई that गलत साइड whoever gets to go on to those winners bracket finals, or rather our grand finals, is going to have an opportunity to get a little bit more of a warm-up and potentially be in a rhythm as they do head into that matchup. Yeah, and being in a rhythm is something that's super important here on the Championship Sunday, because sometimes that rhythm doesn't come through. The kills aren't there. This team synergy ain't there. Yeah. This is still a 5v5 COD, okay? And when it comes down to 5v5, sometimes the comms can get a little bit cluttered. You know, some players aren't playing it their best today. They're off rhythm. One player can mess up the entire rhythm of the squad, but when that happens, इससे कोई भी ऐसा नहीं था ना जो मॉन मेटा चला रहा था. We saw that throughout multiple Fulgar players there Fennec on is Revenant, rather if it was ये नई वाली Oil, sniper. Zyro, Shorty, Bones, Shorty, Abyssal, Shorty. Reckles, each one of them stepped up when Shorty तो भाई वो था. ये क्या है? and now that got them towards this Vitality series. But this is the last S&D, and that S&D right here is the अबे only तेरे घर पे S&D रात के आगे कोई सीन that नहीं है Revenant मुझे. played that didn't go to round 11, मैं but it almost क्रिश्चियन did. होना मतलब इतना तो नहीं मानते और मेरी फैन But भी you see the इधर series नहीं layout आती. of that one on your screen, Fine. the reverse आएगी sweep कल from Revenant. दिमाग खाने. Woo! You love to see it, but what were they playing for? They just got top 3 officially, अच्छा भाई. and that put them at the top अच्छा portion नहीं है of तो the अच्छा. money in our prize pool. That guarantees them $8,000. But this next matchup in the losers finals, that's a $2,000 game. Yeah, that's a huge difference, especially for people that are just getting started in their competitive career. And really, I think Call of Duty Mobile is still at its very beginnings on the esports side of things. Having that money to be able to invest back into your game, give you more time that you can actually just spend time playing the game rather than having to do other things. That can make a huge difference. It can make a huge difference, but I tell you one thing, man, this music in the अबे इनको background, इतने मिलेंगे तो ना अभी it तो. got me going, okay? The rock music got me wanting to make a montage out here. इनको And if you मिलेगा. want to make a montage, you're going to need हाँ तो that rewind time feature अच्छा that IND Sony's के लिए है क्या ये? experience to help फर्स्ट clip एंड all सेकंड your अभी best plays पता नहीं out बोल there नहीं सकते हैं in वाइटलिटी और 120 रेवेनेंट. FPS, Bobby. गॉडल का I क्या know हुआ? you was one of गॉडल the किस biggest पे? content creators गॉडल out there, पे Kyle Mobile. You will love this. Oh yeah, it just makes मैं for एक्चुअली some मैं amazing content. ऑनेस्टली मैं गॉडल को सपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग से. अरे गॉडल का मूड ऑफ हो गया वो आईएनडी से इतना गंदा हारी तो. You want people to be able to see पक्का every डिमोटिवेटेड हो single गया. frame of what you're doing. And इतना at तो बुरा नहीं 120 खेलते वो लोग FPS, कभी. when you slow that sucker down, it is clean. अरे they and threw the smooth. match. Yeah, it is clean and smooth indeed, They just threw like the that match. phone there right there, the Mark III मुझे from तो ऐसे ही लगा Sony's भाई. Xperia. Make sure you बाकी grab नहीं it, पता. especially if you want to be one of the best Call of Duty mobile players out there in the scene. Now, as we come back here and bring it back towards our losers finals between Vitality and Revenant, ooh, this is going to come down to one squad is going home, the next is going to the grand finals to play up against Insidious. And Insidious, they have been playing to perfection. But if one of these two teams can give Insidious ये लॉल रेवेनेंट का रिएक्शन आ गया after मेरे watching पास. them so far throughout 2 days, who do you think it's going to be, Bobby? रेवेनेंट का क्या आ गया? I mean, with the way things are रिएक्शन जब going वो जीते ना today, coming into today, अच्छा. I probably would have said बहुत पागल हो Vitality, गए थे ये लोग but शर्ट वर्ट Vitality, निकल even रहे. up against Revenant yesterday, Yeah. भेज ना भेज. couple of those Instagram पे matches भेज ना. on either way. Instagram पे But I भेज दे think भाई. momentum is such तेरा a big Instagram क्या है? factor that Revenant has IG a really काजू. good shot at pulling off काजू an मारा upset जाएगा. and could potentially take a couple maps or even get the win against Insidious. Now you got to keep in mind, whoever comes out of this is coming out of the losers bracket. So that means not only do they have to win one match of the grand finals,
Hey, girl, GN ranking. Okay, And, I don't know if Vitality have, after losing 3-0 already, even if they get past Revenant, they still have to win twice against Insidious, and Insidious has a lot of confidence against them. You guys see the team stats on your screen so far throughout the day. When it comes down to map wins, actually not even just throughout the day, just throughout the entire tournament, Vitality 6/10. When it comes down to Revenant, map losses, they're gonna have 4, Revenant has 6, but the respawn. क्या हो रहा है? ये यूनिकॉर्न ग्रुप खोल के देखा अबे क्या कसम यार, अबे खुशी तो होती होगी ना, देखा मैंने प्यारा यार, जीते क्या फेंका हेडफोन्स गुड बाय ये जो चिल्ला रहा है उनका मैनेजर है। क्या खुशी हुई तेरे को, हो गया क्या तेरा? नहीं यार, अभी तो सब आए मिलकर आई मैं, अटेंडेंस दे के आई है। हाँ अभी मेरे घर पे आए सब ना, तो बैठना होता है उनको साथ। अरे होता रे, मारवाड़ी फैमिली में होता है ऐसे है ना, एग्जैक्टली, यू नो माय थिंग। मेरे तो बुआ आई थी, तुम आके गई हो फुल? नहीं क्या? हम लोग के मेरा एक दोस्त था स्कूल में, वो लिटरली चिप्स में भी अगर वो पोटैटो चिप्स होते थे ना, वो नहीं खाता था, लाइक इतना जैन होते भाई, मारवाड़ी नहीं। हाँ वो लोग कुछ नहीं खाते। पर क्या भाई, लहसुन नहीं, कांदा नहीं, जो टेस्ट था वो ही नहीं खाते। तो उनके घर पे नहीं वो कैसे जाता है खाना तुम लोग को भाई? मेरी एक्स जैन थी भाई, मुझे पता है। तो उसको अगर तू डेट पे लेके गया चिकन खिलाने ब्रेकअप भाई, चिकन तो उसने ट्राई नहीं किया था, बाकी सब तो खा रही थी आराम से भाई। 18 डेज का फास्ट किया था। अरे वो लोग भाई, हम लोग का मतलब एक क्रिस्पी विस्पी लेके गए ना कॉलेज स्कूल में, तुम पागल हो जाता, लिटरली 4 फुट दूर खड़े हो जाता, उसको अजीब ही कुछ होता था चिकन देख। अबे ये थोड़ा ज्यादा होता है, पता है, जो लोग ज्यादा करते हैं थोड़ा। They were all firing ranges that went to around 11, and they split. They went 1 and 2. And उसको केक बर्थडे के दिन केक रहता था ना, वो बोलते पूछता था एग है, एगलेस है, एगले। वो पीछे में रेड या ग्रीन मार्कर होता था ना कुछ, क्या बोलते उसको पता नहीं। रेड मतलब नॉन वेज। इतना भाई और अभी तो आधे ही हो गए हैं, आधे और आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। रुको मैं पापा को गाली बोल दे के आया था। पापा को गाली पानी देके ना? अबे गार्लिक ब्रेड। अच्छा गार्लिक, तुम गार्लिक बोला, मैं मिस्टेक नहीं हूँ। तुम गार्लिक ब्रेड बोलना, गाली सुने दे। मैंने गार्लिक ब्रेड बोला नहीं, गार्लिक ही बोला। देख ले स्क्रीन पे जाके। On this map in Hardpoint, you're feeling really good. Just imagine गाली मारा इसने अभी। This is the perfect map pick for them and a huge opportunity to get off to a lead in this match. Yeah, man. When it came down, it was their P3 hold right here. When it came down to 2 centuries, they had it locked in. They got the entire 60 seconds. They were able to have a flawless rotation towards P4, and they were able to really just kind of. इनमें से जो जीतेगा उसका फिर आईएनडी के साथ होगा ना? Vitality versus Revenant जीत गया। Vitality ने फेस कर लिया। टक्कर का होएगा, टक्कर का। भाई यूनिट डील करेगी क्या? क्या बता? आज की तेरे अर्निंग्स का 20% मिलेगा क्या हमें? 20% तो यूट्यूब भी काट लेगा। 45 काटता है यूट्यूब। अबे ये YouTube की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, वो तो एडसेंस का काटता है 45। ये भूल गया मैं बनिया हूँ। बनिया था मैं भी उसी तरह। दोस्ती कोई बात कर दो, पैसे ना दो पर। नहीं ऐसा नहीं यार, दोस्त की तो मैं कर देता हूँ। I think you're right. I think we were at takeoff for that. चल ठीक है, तुझे एक चोकोबार स्पॉन्सर करूँगी। एक चल चोकोबार फोटो भेज देगी, फोटो भेज देगी चोकोबार। अच्छा आज मैं ना अपने कमाए हुए रुपयों के फोटोज भेजूंगी काजू को, उससे ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी फिर उसको खाना देखने की। मैं भेज देता हूँ, अभी और है। नहीं आप मेरी कमाई होने दे यार, फिर रात को मैं तुझे एक पिक्चर भेजूंगी। अभी बुआ आई थी, वो काजू की कतली लेके आई यार प्लीज मत बोल, काजू कतली यार, मैं जान दे दूँ उसके लिए।
be able to represent अरे तू मेरे लिए जान मत दे रही इतना तेरे नहीं कौन चाहिए देगा इतना दे प्यार जाना दे Sunday, folks. क्या पता हाँ तू तो डेविल लूट ही ले मुझे South Asia. कितना दे रहा है डेविल आज बता इससे अभी पूछ लेती हूँ समझ जाएगा तू जितना मुझे देगा उतना मैं तुझे देने वाली हूँ Under a org like that and having the fans that you have, you got to be able to use वैसे मैं आ तो नहीं रही हूँ आज मैं उसको It's just that they have been tested. तो उसका गलत फायदा नहीं होगा एक पैसे रख अपने जेब में अबे आना ना रात को चिल करेंगे Yeah, and you can see we actually had Crossfire Hardpoint, so definitely plays way different from Standoff. वो कह रही कि मैं इसको राखी बांधने नहीं जा रही डेविल को ओ राखी especially once those score streaks came in. What the fuck? Obviously. अबे रिप्ले है भाई क्या मस्ती कर रहा भाई तू This is going to be a lot less snowbally and there's going to be a lot more काजू कतली ट्रिगर्ड इंसान बहुत बढ़िया depending on who gets off to the lead and keep in mind Vitality had a pretty tough warm up so that मैं ना बाहर से एक और चक्कर मार के आती हूँ देखो तो फिर से अटेंडेंस से क्या आई है because you know but hey you know this is a tough warm up चली you गई learn a lot from a series like that और बता विजन क्या हाल है you know you got to ask yourself मस्त would you rather lose in a game 5 round 11 चलो यूनी का 25% से 20 का चुका अरे भाई इतना प्यार भाई डेविल बहुत बढ़िया भाई चैट पढ़ना I didn't get breakfast. You know, I can make 1,001 excuses, but sometimes you got to just keep vibes right on the team. चैनल यूनी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें मिलता भाई बहुत बढ़िया I like it You're not really I like it investing a lot of mental energy into it. And a lot of times, if you come out, like, probably one of the big factors for Revenant is going to be they could potentially be mentally exhausted going into this because they played an absolute grueler. Every single match came down to the wire, and it was 5 maps that we ended up playing. So they're going to have to definitely recharge, drink a whole lot of water, and see if they can bring their A game here. Chat, make sure you hydrate, but hopefully Revenant does not get complacent after Charlie, qualifying for stage 5, right? It's like, okay, we got that pressure off our shoulders, we feel good, we achieved our ultimate goal, but the tournament's not over with just yet. Vitality, भाई लोग मैच कब स्टार्ट करेंगे yesterday, surely you want अभी ये लोग स्लो ले रहे हैं शायद surely you want to knock these guys out the tournament. You heard us talking about Vitality all yesterday as they are the best team Vision in by this Poppy. tournament. Insidious wanted to shut us up. I think they did. Insidious said, okay, Poppy. we proved you wrong on that one. चलो And now 1v1 Revenant यूनिवी wanna come काजू through हु against विंस well. कल पोल डालूंगा लाइव चैट में As they are currently बहुत undefeated, बढ़िया ये कर दो not तुम dropped a single map. वो iPad पे खेलती डेविल iPad पे That's crazy to think about. मैं एंड्रॉइड पे खेलता जो बूढ़ा हो चुका है Well, KD, no assist involved, but that probably skyrocketed up against that last series from Vitality. Yeah, especially with all the score streaks and operators that we saw him play at the end. Anytime, like in CDL, you got the 100-point club. They 50-point club, the #1 seed in the entire tournament. So That says a lot. Yeah, for you to be able to do that, incredibly impressive. Not something we've seen much, even in the super lopsided ones. I don't think Vitality was able to win by that much, even when they were playing up against NS, who is brand new and was not really expected to make a whole lot of noise. So, Vitality, they've got to put it all out there. Yeah, they got to put it all out there. When they played up against NS, man. DC यहाँ पे तो फोन का डिस्कशन चल रहा है लुल में आगे on average when it came to the respawns or the one round. किसका डिस्कशन चल रहा है It was absolute. ये चलो आगे फोन लाइक मोबाइल किसी को खरीदना है तो बस ये फेनिक मेरा नॉक हो फोन ले गई लिया है उन्होंने इंक्रीज रीलोड टाइम बाय 10% रहने दो, मैं तो ऐसे भी यूज नहीं करती थी 10% स्लाइड डैमेज चलती नहीं तेरे से बोलना ए जाना क्या है ना मैंने पैसे देते भाई वो क्रेट पे तब मेरे को जाके मिली थी वो फेनिक अमीर लोग मैं क्या बोलूं अमीर लोग विजन को पता है क्या दुख होता भाई खोलने का उसको मेरे पास तो एक भी स्किन नहीं है मैं एक भी है अरे मैं क्रिप्टो पे प्लेयर हूँ ओ भाई जितनी बार देख लो कम है कितना खुश हो रहे हैं भाई ओ क्यूट वे यार भाई कहाँ दिख रहा है तुमको नर्स कोई वीडियो डाला है किसी ने
हाँ इंस्टा पे डाला है किसी ने, होलकर भी और एसवाल अबे एसवाल डोंट नो एसवाल प्लीज अबे भेजो यार, मेरे को भी भेजो भाई। अबे चैट पे लिख रहे हैं, मुझे भी नहीं पता ऐसा हो रहा है कि एसवाल नहीं हो नाटक कर रही रही बस। ये सवाल तो ठीक है भाई, वो ना तो मेटा है ना वैसा है भाई, जिसको चलानी है तू चला लेगा। But when it comes down towards the summon hard point, that's the only match in which we had the first time these two teams played together. चालू करो भाई, Went in favor of Vitality 150 to 120. नहीं चाहिए उधर टाइम पास करते हैं, अभी एक एक करके मैच भी दिखा सकते थे ना, इतना 2 घंटा टाइम पास किया। You know, outside of that, take it back. It's all new game modes. Okay, it's all new game modes for these guys. Yeah, it's going to be a fresh look, and definitely we'll get a better idea, I think, once we do hop into it. I think the standoff hardpoint is really going to set the tone ये for मुझे this घूमने match, जाना है and यार। especially give us a better idea of who's going चले to be जाओ, stronger in बाहर जा, the घूम के आ जाओ। respawns. I think that gun skill is going to be really, डीसी 2 साल से कहीं गई नहीं ऐसा लग रहा है। over on the side of I'm Revenant bold. just because they are so warmed up and got to play 3 respawns just now. Yeah, man, just being able to play those 3 respawns is gonna have ठीक है, your मैं shot हूँ first. अफगानिस्तान की वजह से। ये आने दो, मैं आती हूँ। Here, as we are about to head into the losers finals here soon, folks. After seeing the series layout, are you leaning in favor of one team outside the other? Are you guys going to be changing your picks in the chat? Because Revenant and Team Vitality, man, this is going to be probably the closest series in which we've seen so far throughout our tournament, especially if it's going to be indicative of the first time in which we watch both these squads play. Yeah, I think the map pool currently favors a little bit more on the side of Revenant because standoff game mode that they won, or standoff hardpoint game mode map that they won, or domination game mode map that they won, both really, really looking good for them. But I think we're going to throw it back to the desk real quick before we hop in to our losers bracket finals. Yeah, let's see what the guys got to say. Veli and Mommy, take it away. As we're getting in the lobby together and we're waiting to get Bobby a chair right now, I just want to break things down just a little bit. So, Mommy, you follow these regions heavily, right? So far, I would like to say that South Asia and Middle East, they haven't disappointed. And now we have Revenant facing off against Vitality. All right. What are your predictions for this match? Who do you think is going to wind up on top to go to the grand finals? We've seen both of these squads before. Vitality AS Vals वो 7% recoil प्लस 10% बुलेट स्पीड कम होगी। अबे वो काफी ज्यादा है, पता है 7% इट्स ओके, वो तो इतना अफेक्ट नहीं करेगी, बट जो क्या बोलते हैं उसको, बुलेट स्पीड वाली है ना, स्पीड है, स्प्रेड है, स्पीड कम होगी, तो उसके लिए वो 200 mm वाली जो बैरल नहीं है क्या, वो यूज कर लो। Against Insidious, because Insidious, they're dominating right now. We're seeing a AS Val gun तो BGMI में भी आ रही है, this is how good that they are. Yes, now let's go ahead and take a look at और this क्या है? bracket to see how things Hey have Vision, unfolded please so far this give week. us And it has DC been link. such a good Your one. channel Even is from showing day one, we saw expired. bangers this, unfortunately, अरे teams Vision, went home. And still, Vision, I still पीछे? have hope for Team Revenant. I don't know what it is. देखो, I think that one match मेरा that we आवाज saw नहीं आ against Team रहा Vitality, they knew how to beat them, but they just couldn't hold on. I think that they were able to steady what happened last night, and they were able to come back. Now, if you're the coach of that team or you're an in-game leader, how would you prep Vision, for a आवाज आ matchup रही? like this? Vision का mic off It's है। all down to the experience and the practice that they had हाँ हाँ, prior अरे to क्या this हुआ? match. Like what I said, अरे वो Revenant किसी is को a डिस्कॉर्ड का different लिंक दे team दे, just काजू because कास्ट of कर how रहे हो, मैं यूनिकॉर्न वापस लाइव स्ट्रीम कम्युनिटी पे डालने वाला हूँ कितना थोड़ी दे देर रही है। domination match एक really मिनट अरे में comes आ नहीं down गया। यार, वो कुछ नहीं दे रही हूँ, सिर्फ उसको फोटो भेजना पड़ता है ऐसे खाने का, जलाने के लिए। If they ever lose the first 2 maps, they will definitely for sure want to sweep it again. Okay, now hear me out for a second. So, Vitality, they got 3-0 against Insidious. अबे ये काजू ट्रिगर्ड इंसान क्या है भाई, मेरे को कोई बताएगा? मिस्टर इंशियन भाई बताना भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। If I'm on Team Vitality, wouldn't you think that you're kind of at a disadvantage by taking such a big loss after being so good at this event? This is where you see pros come into play. La, This la, is where la, we see la, la. noobs and pros really la. finally step it up. Even though that you are at the face of adversity, you are not going to give up. Both of these teams, for sure, they're going to battle अरे it out. काजू They are और so ट्रिगर्ड close. They are इंसान head बहुत to head. गजब का Now, सीन है। who are some of the standouts to you on these teams? Which players do you actually like watching? अबे तो क्या है?
For Vitality, obviously, अच्छा ट्रिगर्ड इंसान की लेटेस्ट वीडियो देखो मैं देखना absolutely popping off in the console, which would be so great for them. And also Moon. I mean, Moonscope, you've seen such greatness from his snipes as well. For Revenant, obviously, you got so many people. You've got Oil. He clutched out that 1v3. Exactly. That's absolutely crazy. क्लच पी के पैसे दे देगा साले अंकित इधर आना तू क्या उधर चला गया Now that was my favorite clutch this event so far. We had a 1v3 today as well. Oh. We have a favorite clutch. ट्रिगर्ड इंसान मैं नहीं देखता भाई मैंने सुना इसके बारे में और ऐसा कुछ देखा नहीं I'm pretty sure it's that 1v3 that we saw a while ago in half BR. That was absolutely crazy. That was a turnaround. That was a turning point for Revenant to win that search and destroy. It was supposed to be a 4-4, but no, they were able to step it up, make it into a 5-4, and eventually this is why they're here. Now, when it comes to both of these teams and their strategies, do you think trading to now going to pull the bag? Because I'm expecting nothing but just top-level gameplay. Absolutely, and that's going to be in that search and destroy matchup. I think Vitality has an edge over Revenant just because of that. They have that double sniper, they got Monk and Moon. That tandem is going to be unstoppable. Depending on that map choice, we're going to see how well both of these teams really perform. Now, I have a question for you. Now, both of these teams ट्रिगर्ड इंसान सर्च कर ले बस मिल जाएगा अच्छा देखने when it comes to respawn game types and also search and destroy, do you think that this could be possibly one-sided? Do you think one team is in particularly stronger than the other at this? Yes, Vitality, hardpoint is their kryptonite. They've been losing a lot of their hardpoint matches, and Revenant was able to pull one map from them. अरे कृष्णा, you said something ना yesterday or day before yesterday. Was able to pull through in that game. You said something I was able forgot to win against Revenant though, but who knows? A lot can Vision बात कर भाई hello. Blaze and Bobby talk about the matchup. We got the maps in. We got Vision where are you? Phases. So in this matchup, you said that you believe that Vitality is going to pull ahead. Just making sure. Yep. Okay, so we're going to be going head-to-head at this one. Bobby and Blaze, I actually want to pull you guys into this discussion as well. Who do you guys have predicted to win this matchup to go to the finals? Because this one is going to be an absolute... मिस्टेक कहाँ गया? अबे उसका क्लास था यार मेरे ख्याल से. After watching today's gameplay and seeing how close this matchup क्या बोला ऐसा मैंने कृष्णा एक है. I'm heavily leaning in favor of Revenant. कुछ तो बोला था भाई मैं उस दिन पढ़ा तो था फिर मैं बोलना भूल गया. Like Vitality, you know, they had an easier day yesterday, but the 3-0 loss to Insidious, I didn't like how they played that one. I felt like as the #1 seed, you're going into the winners finals, the first matchup of the day, you gotta contest. Insidious is better than that. And with Revenant coming off that reverse sweep, I think they're going to be a little bit too much for Vitality. Bobby, you know your stuff when it comes to COD Mobile. Okay, you're the expert here. I'll look to you for all the answers. Do you think that Vitality is going to pull through and win, or are you leaning with Revenant right now? तेरे Discord का लिंक भी दे दे भाई किसी को उसमें. कोई तो मांग रहा था. देता हूँ देता. आजू कारे संभाल रहा. कल्ले अच्छा कल्ले अकेले. Moonscope for the longest time has been known as one of the top snipers. कब चालू होगा? You got Monk on the team, who is also very, very established. भाई हम भी उनका ही उसका इंतजार कर रहे हैं कब चालू होगा. Come down to the amount of time that these guys have invested into the game, and I think overall the experience level for Vitality. यार मेरे को भी ऐसे कोई shout out दिलाएगा क्या? कृष्णा shout out दिलाना मेरे को भी भाई. All right, let's bring it back over to the desk for just a second, though, because you brought a great point right there, Bobby. When it comes to sniper play, I mean, where does it show off most? Is it search and destroy? Is it when it comes to respawn game types? How important is it to have a great sniper on your team? And when does it really pay off? रिएक्शन दिखाओ ना. अरे पता नहीं वो अच्छा है कि लाइक शेयर करने के लिए वो लोग भड़क गए तो हम पे. Get those opening picks is going to be essential. Consenting है हमारे your map पास. is going to be raid. You need to get those picks, and unless you are going to be going in there for the rush, then it's a really sniper's game. For Shout out to you, buddy. One more time, I would like to take a look at the maps. I'm going to hear your thoughts about सुना सकते हैं ना अगर काजल so सुना ask your सकते हैं predictions about who's going to win, but actually सुना look at सकते the हैं. maps and just क्यों see सुना where देना? the series will go. अरे मेरा See what you would think. अरे हाँ रुको. अरे पर वो सेम फोन में भाई Just वो because माइक. I see crossfire हाँ तो वही तो domination बोल रहा है. again. मेरे पास We दूसरा saw फोन नहीं True है. Rippers and मम्मा बाहर गई Revenant हुई है. go in that map, and that's where everything just turned around for Revenant. If they win that crossfire domination, it might be the same story. कर रहे We're हैं. going to find out right now. The lobby is ready. The players are good to go. Bobby and Blaze, take Bye, Revenant esports. Waiting a Bye, long माँ कसम time for दे. this one, but you लो have मिस्टेक to आ wait गया. no बैरम आ more. गया.
The losers finals is about to start. भरम Revenant versus Team भरम Vitality. We have भाई क्या चिल्लाया, पता है वो कौन था जो चिल्लाया? वो मास्टर था। मास्टर था वो? हाँ मेरे को जो क्लिप भेजा वो बोल रहे हो उनका मैनेजर है कोई। नहीं मास्टर था, मैं उसका मैनेजर नहीं है भाई। वो जो कपड़ा उतार दिया वो शायद बोन्स था। सबसे काम था बेस, सबसे काम था बेस। नहीं भाई आवेश भी नहीं, अबीस तो जो लास्ट में दिखाया ना वो था बेस। मैं अबीस को डीएम करता, रुको। अच्छा वो खेल रहा है ना अबीस? अभी मैच है ना, रुक जा। हाँ, चालू हो DM करेगा उनका। फिर से ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। अरे विजन तेरे डिस्कॉर्ड का लिंक दे दे भाई इसको, जिगरप्रीत को। ब्रो मैं मेरे इसमें डाल दूंगा। दे जिगल, दे जिगल भाई। जो भी बोलो, इतना प्राउड है ना सब, मतलब हम सब। इंडिया की 3 टीम जा रही है। हाँ भाई, और भी लोग हैं भाई। अरब की कोई भी टीम नहीं जा रही ना, मतलब कोई नहीं जा रही। नहीं अबे उससे भी, अबे चलो अरब की जा रही है छोड़ो, बट इंडिया से 3 टीम जा रही है, ये समझो। अरे जिगरप्रीत तेरा इंडियन नाम जिगरप्रीत है ना? दे जिगल ए मैच चलोगे लेट्स गो। Abyss here on the outskirts. He's looking to move in. He's going to flank one. Has 2 more players in front of him. He gets the second. Not able to take down Sims, but मैं टॉप 3 तो आ गया ना। आई स्क्वाड में आया भाई, आई स्क्वाड में आया। for a brief second. One that they look like they will be able to capitalize on as they move back into P1. नहीं उधर क्यों फॉर यू गया उधर। Yeah, and this is pretty much contested the entire way. Oh, भाई Fennec बढ़िया। Vitality forming a little bit of a lead right there, and you can see players already rotating for. Fennec दिख रही है अभी मेरे को, कोई ऐसा नहीं चला रहा। One in that next hard point, and they're going to be able to get the scrap time. Really good start, and obviously that experience showing for them right now. That perfect discipline, that rotation coming through, and you can see nobody getting past Jokos with a shotgun in his hand like that. He's going to find number 1, seeing if he can find number 2, but shut down. 3 big kills going on in Revenant. Well, I guess you need to just be able to have a grab slam to take down Jokos with the shotty in hand. When it comes down to P2, so far Revenant has had a good hold on an Abyss and Bones, picking up multiple kills there. Abyss looking for another one. Bones finds the एक क्लोज जाएगा, but IND वापस वन साइडेड कर देगी। He gets shut down. Moon and Sam ना IND बेस्ट है। मुझे देखने की IND इंटरनेशनल पे क्या करती है। लैंड वाले इवेंट पे भाई बहुत अलग फील आएगा। मुझे जाना है भाई। हम लोग को इनवाइट आएगा। There will be no VPN। नहीं एक्चुअली है भाई, जो अगर किसी का चलो कोई बोल रहा है कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है या कोई बोल रहा है नेट की प्रॉब्लम, व्हाटएवर भाई, लैंड पे कुछ नहीं, सबका सेम डिवाइस भाई, अलग है। Not able to make the turn would have been a huge gunfight right there. मैं तो आइट मारे जाके जाऊंगा लैंड पे। In those early rotations, paying off once again, but they got to get the hold. I gotta say, ये यूनियन लोग उड़ा के यहाँ पता है ना तेरे को ऐसे डीएम में उधर चैट में उसने पिन किया भाई। I'll be back इनसे काम चलाओ। बहुत है यूनिकॉर्न को देखने कोई नहीं आया, हमारी वजह से सुपर चैट मिला उसको बस। And they're gonna have it locked in. 30 seconds left. Multiple kills coming through for Vitality. The kill feed light up for him, but Abyss will be able to find a flank. But here comes the Predator missile, able to take out 2. इनके 20 सेकंड्स के आसपास भी इन लोगों का रोटेशन आ रहा था भाई, अलग ही चलता है इनका। हमारे हम लोग जब रैंक खेल रहे होते भाई 15 तक तो बोलते भाई बैठो क्या ही है, क्या ही जाएंगे, नहीं जाना है, रहो ना, 15 सेकंड ले लो। We do see Revenant getting that early rotation. Zyro already spotted out on the inside next, Oil spotted as well. Monk not in a great spot to take a long range gunfight, and that's definitely not the fight you want to be taking with the Fennec. The corner, but he takes the katana to the face. Vitality with the lead, but it is going to be Revenant in control of the next hard point. Oh man, you see Oil, he cuts him up in half there. Now you're going to start to see the deficit get cut in half as well. Grab slam comes through, but the death machine is in the hill, and Reckles finds 3, may get the 4th, but
Close जा रहा है बहुत. बहुत close जाएगा भाई. In the area to be able to clean up these kills India and continue to lock in top. time on P4. This is a big one here for छोड़ो Revenant casting as we're देखो about to काजू be heading कतली on को. over towards P1 next. मिस्टेक को देखने ये आते UAV हैं. यूज किया वो. Go back here towards mid-map. What? And with the way that Revenant is What playing, meaning? with the कुछ और हुआ. Inbound आया rotations, कुछ तो. Zyro hits a huge two-piece right there, gets himself some more score streaks. It seems like when Revenant is disciplined with making those अबे वो rotations, नीचे स्पोर्ट्स they're देखना winning the नहीं है ना majority किसी of को the भी. gunfights. They have a very good इस chance पे तो at नहीं winning है. this. It might be a little bit late for Reckless to try to go ये for a देख break score right sheet there, कर but रहा है fortunately Bobby. for him, his teammate Abyss able to find a two-piece. He can clean that one up, slows the push on into the next hard point a lot. This could be क्या a close huge जा रहा है भाई. Predator missile, and even though he's Revenant not OP पे able to बहुत get अच्छा two, lineup forces इनका them बे. back into Delhi. Force one में That's perform more नहीं कर पाया, hardpoint but time and still a kill on the board for Revenant. Also with some Piece of beautiful footage. intel that Revenant played ये off to एक as ही well. He got the call outs to his team, was able to trap them there inside Delhi, एक and now दो Zyro दो with a फैनिक है जो मतलब beautiful अलग ही angle चलती है. here एक तो डेथ towards मशीन the वाली front side और of the kill. ascended. Won't be able to connect with the hunter drone, but he's going to get flooded by two players. He finds one kill. He is able to get a sentry क्या turret कर as रहा well. OP भाई RNT. Takes him out, but Zyro has put the utility that his RNT team माँ needs. का अरे बोल. RNT full charged है They भाई. need to get a जी mid भाई. side. Zyro वो with a भाई sniper क्या missile मारा used भाई to be able to इसको find a कोने में. kill. RNT जीती कि ना जीती, RNT ने दिल जीत लिया सबका आज भाई, सच बताओ तो. जीत जाएगी RNT easy. दिल तो जीत लिया उस वीडियो ने भाई, राम माँ कसम. और मास्टर ने जो चिल्लाया ना चूतिया, रुको उसको डीएम करके बोला मैं कि ऐसे मत चिल्लाओ. क्यों भाई? भाई गान फाड़ के मैं फुल वॉल्यूम पे सुन रहा था, ठीक है. माँ कसम मैं सोचा कौन लड़की रो रही है भाई. फिर देखा कि नहीं मास्टर है वो. भाई मॉन्क फिर से ऊपर जा रहा यूनिकॉर्न सोडी. One death machine kill. See if he can make it more shots भाई from the कितना top क्लोज side. है. Once again, going the way डिस्क्वालीफाई of क्यों भाई? Revenant. क्लच And with क्या the कारण way के लिए? these fights are going, Oh no! like a bad Oh no! He botched the nade. UAV. It ended up working. Oh no! Machine. 4 straight Wow. kills. ओ भाई कितना क्लोज मैच है. They've got a shot right भाई They do have a shot. 139 With a come on plunder, but easy. Monk in the death machine. He went on a plunder, taking out अरे those भाई players off the Discord power link एक मिनट position, भाई. taking them out the top of the window. Blacklist कर रहा है. ओ भाई. भाई भाई घुसा 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 ऊपर से घुसा. Change in late game. वो भी गया भाई भाई निकाल लिया. निकाल लिया भाई निकाल लिया. नाइस वन. RNT बहुत हो. Top 1 second needed. Oh Vitality, do they get it? Or we going to another hill? ओ We can go either way, भाई and Vitality घुस गया अंदर घुस गया भाई. in which they अरे मैं इधर क्यों नहीं Rotation. शेयर कर रहा पर डिस्कॉर्ड का लिंक, क्योंकि यूनिकॉर्न का चैनल है. मैं मेरा प्रमोशन करूंगा, ऐसा हो रहा है इसलिए. Wow. Close match. कर दो तुम तो हो ही चुकी है. I mean, that really could not have मैं been खारी. any ये closer. लिखती है It मैं looked खारी. like Revenant had those rotations, but Monk making the huge plays, those kills on अबे the खारी inside होता है. of that PG खारा थोड़ी rotation होगा. at the very end. खा रही होता है खारी. खारी क्या होता है खाड़ी. मैं खड़ा होता है खाड़ी क्या होता है भाई. मैं नहीं बोल रहा. ये RNT जीती ना. लेट्स गो भाई. ओए रुकना है 10 मिनट. RNT वाइटलिटी जीती. क्या नशे भाई. ये चूतिया है ना मादर शोध. तू है काजू बीजीएमआई डाउनलोड कर, ठीक है. मैं नहीं खेलता भाई. अबे मैं खेलता ही नहीं. खेलता ही नहीं भाई. अरे खेलेंगे. खेला जाता भाई. मेरे से नहीं खेला जाता. यूनिकॉर्न भी आज स्टार्ट करेगी, इसलिए बोल रहा हूँ तू भी डाउनलोड करना. डाउनलोड करने का क्या कर दूं. आधे 1 घंटा लगेगा. खेलेंगे चलो ठीक. ओ भाई anytime we're seeing any of these plays, most of the time it's score But the streaks coming dog in, but do that it. last push from Monk. He Vitality made for the win, initial push bhai. into the hard point. He gets the death machine. भाई वो ये वाले पार्ट में तो नेट भाई ऊपर नेट क्या था ना बंदे ने. पीछे जितना क्लोज LMGs to be able to spray and जो pray through खेला है those ना. doorways, shutting down those final pushes. Absolutely incredible for them. Absolutely incredible indeed. Congratulations to Vitality for taking map number 1, 150 to 140. Another banger of a season. Now we got to move on over. I believe we are going to raid Vimjin is back. next.
And when it comes down to both these squads, gameplay and search and destroy, you know, for me, they both have kind of had their struggles. But if it's one thing, भाई God, Team Revenant Esports, God. Make some big time plays to keep their team in it. They played the most round 11s out of anyone in our tournament so far here at the regional playoffs for the Middle East and South Asian region. And so Vitality, they're going to have to respect their resilience in search and destroy. Yeah, and this is going to be one where, once again, the snipers dictate the pace of the game. Moonscope and Zyro going to be the two main players we want to take a look at. Obviously, we do have some LMGs that will probably be in play, and that's actually what Monk has been going with, but it's going to be first blood for Vitality. Bones taken out off the start. Easy bomb plant over onto B, and now the setup trying to slow down the retake. It's a couple Revenant players. भाई उन्होंने उतना ग्राइंड भी किया भाई, कितना खेलते होंगे वो लोग, कितना ग्राइंड करते हुए भाई। मैं देखा इनको हमेशा स्क्रिम खेलते रहते, स्क्रिम मुझे नहीं पता। Vitality, they got the bomb down early, stacked up, but Oil will find a kill. We fucking did it. RNT Abyss ke डाला, nice. It's a 3v1. It's all going to be up to Abyss, but in the end, Vitality will get round number 1 on the attacker side. So what a comeback! इनसे मैं देखने के बाद डाली हो भाई, अभी तो समझ भी नहीं आ रहा मुझे। RNT Abyss भाई स्वाद आ गया। One person defending over there, and I think the आ गया, next match start हो गया भाई। SND. Obviously, you do have to kind of weigh it. There's definitely a lot more expected of the B push right here. It's going to be Moonscope, big first blood onto Zyro, and that's going to eliminate the sniper, but it's double. Bones taking out Death and Moon. That's going to be crucial. Monk can be able to win his gunfight. 3 players remaining for each team. Bomb is in the hand of Jokos, and they're still chilling over by the B site. It looks like Revenant might be expecting the counter rotation over toward A as they chill mid-map right now. And they have some angles where they could cause some issues, especially with those Vitality players out of position with Phoenix trying to take long-range fights. The aggressive plays from Reckless. He gets one, can't get the second. Yes, he will. Now a 1v2, but Reckles with a 3-piece as he's going to clear out the B site. Revenant, they're going to get their first round on the board. And so when we go back and we kind of look at how that one was played, I love the initial stacking more people towards the B side because they said, hey, you know what? Great first round strategy, but we do want to force them down towards A, towards the basketball court. And, you know, force them into the sight lines of Zyro and that sniper. Hello, I'm back. चल निकल। तू खा रही है क्या? तू खा रही ना? हाँ। चल निकल। खा रही है तू जा। खाने से बोर हो गई तो दिमाग का ना गया। चल निकल। कैसी बातें करती है मतलब। No Moon can make those big plays. He's made it happen time and time again. They're going to run together. 2 players, they both get shut down. A huge 2-piece for Vitality, and now Zyro himself, but he is no rookie when it comes to making his मेरे को एक डाउट है, मैं पूछूं क्या? तू पूछेगा तो है ही, तो पूछ क्या रहा है? मैं चैट पे पूछूंगा, ऐसे नहीं पूछूंगा भाई, सही नहीं लगेगा। बोल लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करता। इसका बोलना फिर मत बोलना कि मैंने बोल दिया, ठीक है? रुक जा, पहले देख ले तू क्या बोल रहा है। That's a nice 2v1 there for Vitality. But, you know, when we look at that round, Abyss made such a great play. He gets a double kill, being aggressive, pushing red. Oil finds one as well. The advantage is there, but you see multiple players of Revenant, they line up. They line up for Monk & Co at the end to be able to clutch up that 2v1. ए यार, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। छी बे गंदगी। मैं वो इस पे कुछ ये मैंने पूछा। अबे यूनिकॉर्न कोडेम बीजीएमआई डाउनलोड करो। ए मिस्टेक बीजीएमआई डाउनलोड कर अभी कल तू पता नहीं कब खाड़ी कर लेगा क्या सोड़ी मैं तो सोएगा फिर अब ए यार हमारे अभी तो मारवाड़ी है ना, हमारे ऐसे ही बात। हाँ तो मारवाड़ तो ऐसे अजीब लगता ना फिर भी। ठीक है ना यार,
मैं जब से कॉर्डम में ना तब से मैं वाला एक्सेंट आया मेरा, नहीं तो हमेशा से वही वाला था। कौन सा वाला? जो मारवाड़ी खानदानों में यूज होता है। ए मारवाड़ी खानदान क्या होता है? यू आर नॉट मारवाड़ी, आर यू फक ऑफ यार। मैं बताता हूँ। अरे भाई क्या क्या काजू यार, क्या काजू बनेगा रे तू? क्या 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 काजू और काजू कतली बनने में ना फर्क होता है, ठीक है? काजू सिर्फ काजू ही होता है, काजू कतली नहीं बन सकता, ठीक है? अब ये सोया क्यों है? मारो मारो इसको, जो मर गया है क्या? किसको बोल रही है? अरे वो जो सोया है उधर, उससे कह रही हूँ। गाइस सुनो, ये फुकट की बातें बंद करो और गाइस सब लोग इंडिया ओपी कर दो चैट पे। 3 टीम इंडिया से जाएंगे। यूनिकॉर्न ओपी होगा बस, और कुछ नहीं होएगा। लौड़ा ओपी कर दो गाइस। आई मीन यूनिकॉर्न ओपी कर दो गाइस। एक ऐसा चपेट पड़ेगा ना गाल पे। ये गलती से सच बोल दिया। लौड़ा ओपी कर दो गाइस चैट पे। लौड़ा, अबे तुम यूनिबोर्ड का काहे स्पैम कर रहे हो? लौड़ा ओपी स्पैम करो ना। ओ भाई क्या ही चल रहा है भाई। अरे मॉड दे मुझे, मॉड दे। ये एक तो प्लान सब हमसे लो, कंटेंट हमसे दिलवा, फिर नाटक छोड़ो। ओए ओए निकल बे, जा बे। जल्दी मॉड दो। 69 लाइक्स गाइस, ऑल लाइक मत करो प्लीज। 69 लाइक्स, ऑल लाइक्स मत करो। ऑल लाइक्स मत करो, अच्छा नहीं दिखेगा। और जो 4 ने चुपचाप 70 ठोको। और जो 4 डिसलाइक दिया है, जो 4 डिसलाइक दिया वो सब फ्री फायर प्लेयर्स है। यार मैं जब फ्री फायर खेलूंगी तो 69 डिसलाइक्स होंगे और 4 लाइक। हाँ तो वो 69 बंदे पबजी प्लेयर होंगे। भाई हम लोग तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, तुम्हें पता है? गाइस मैं फ्री फायर खेलने वाली हूँ। BGMI she means. Why are you guys so vulgar? Sorry भाई। What happened bro? Sorry Mystic के लिए sorry। Who is virgin? Why are these guys so vulgar? देखो ना लेजिट, इनको ना बच्चे हैं अभी, अपनी डोरेमोन वाली एज से तो निकले नहीं है बाहर, बट इनको वल्गैरिटी फैलानी। 68 मतलब पता नहीं होगा, करा होगा नहीं। क्या करा नहीं होगा? ये मिस्टिक मैक ने पता क्या उसने एक लाइक लेके डिसलाइक डाल दिया। आई नो 5 डिसलाइक हो गए। गाइस एंजॉय द मैच, ओके? बहुत इंटेंस मैच हो रहा है, तुम्हारी बकवासों के लिए ना कुछ इंटेंस नहीं है। Guys, T3 streamers crying on stream. इसी से तो क्या बताऊं यार। Guys, ये सब छोड़ो, जल्दी PMC और साउथ एशिया वाइल्ड कार्ड सेमीफाइनल देखने आ जाओ। माँ कसम बे। Savage Esports, hi. हेलो। माँ का मादर चोद लौड़े, कान फाड़ दिया गांडू। छूतिया है क्या भाई? गाइस कौन से जिन्होंने डिसलाइक किया प्लीज लाइक कर दो। जो भी डिसलाइक किया उसकी शादी नहीं होगी। लेट्स गो। तो विजन ने किया, जल्दी देखो जाके। विजन ने किया। मेरे तो शादी हो गई भाई। हो गई कितनों से? 10 12 25। मिस्टिक तेरा और मिस्टिक की शादी काउंट नहीं होती अभी भाई। ओए छनाल चोदे निकल इधर से। ये क्या बोल रहा है? अरे ये कुछ भी बोल रहा है, मैं भी बोलूंगा। मादर चोद। गेम देखो बैठ के। हां भेज सकते, भेज यार। ए मैं फ्री फायर स्ट्रीम करने वाली हूं गाइस, बी रेडी। गाइस बीजीएमआई, गाइस बीजीएमआई गाइस। अपन फ्री फायर अब दूसरा टोटल गेमिंग बनेगा। गाइस बीजीएमआई ओनली कॉम्प। मेरा 5 सब्सक्राइबर्स होंगे। विजन किसको बजा रहा है तू सुबह से? ऐसे हाइप क्रिएट नहीं होता, ऐसे कुछ और क्रिएट हो जाता है। तुमको समझ नहीं क्या? यार मैं पता भूल गई थी कि मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। क्या चिल्ला के क्या बोल रही? मिस्टेक की स्ट्रीम निकाल। सॉरी माफ करना, किसी ने कुछ सुना हो तो। देखो आवाज चेंज कर ले चूतिया। मैं बंद कर।
भाई बेटी चो मैंने 2 मिनट के लिए लगा ही मैंने बोला गलत चीज है अभी नहीं मैं मस्ती कर रही थी मैं नहीं खेल रही फ्री फायर प्लीज डिसलाइक मत करो लाइक करो आई वाज किडिंग अपन अंडी मंडी शंडी काजू है बड़ा रंडी Another round for Vitality, and they are looking like a different beast today as they get the win 6-2 in the search and destroy as well. Okay, Vitality. They're going to go up 2-0 in this series. They seem a little ticked off, if you ask me, after that 3-0 loss to Insidious. They may have been listening to us as we were breaking down this matchup. जीत गया आरएनटी नहीं सारी मैं डाल दी अरे कोई नहीं आरएनटी बहुत ए यार वाइटल आरएनटी वर्सेस आरएनटी देखना था मेरे को ये वापस वाइटल के हार गए आरएनटी वर्सेस आरएनटी कैसे देखोगे तुम against Insidious, and obviously you do have to take into account different levels of competition, but just really decisive with the plays that they're making. They seem trusting their IGL. They seem to be communicating really well, and they've अरे ऐसा मत बोल केशव यार वॉइस चेंज करके क्यों बोल रहा है भाई गाइस मैं नहीं खेलूंगी फ्री फायर प्लीज डिसलाइक करना बंद करो फिर से बजा रहा है विजन फिर से बजा रहा है तू बंद करो बजाना आदत हो गई ये देखो इसको देखो वनडे संटी लेट क्यों आ गई ये अपना ही मजे कर रहा है बैठ के अंडे मंडी शहरा मैं भरा अबे लेजिट मैंने बोला मैं फ्री फायर नहीं खेलूंगी डिसलाइक मत करो एंड 4 डिसलाइक आ गया लेजिट मुझे फ्री फायर की वजह से डिसलाइक्स मिल रहे थे क्या फ्री फायर सुनते ही डिसलाइक कर दे मेरे गांव वाला है क्या ये Yeah, it just seems like Vitality has the way they made that comeback. और उसका ये तू ये है वो देखो था ना गाय गाय तो गाय अच्छी होती है गाय नहीं होते तो तू नहीं होता इतना बड़ा गाय का दूध पी के तो बड़ा गया तू तुमने तो किसी और का दूध पी के मैं तो भैंस नहीं भैंस लड़का होता है अरे वो ब्लैक कलर की कौन होती है बफेलो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैंस होता है लौड़े ए भैंस बुल होता है वे बुल को क्या बोलते हैं अबे ओए शांत बैठो ना अरे बफेलो मतलब क्या है हिंदी में भैंस भैंस हाँ भैंस का दूध या ना जिगर कैसे पियोगे तुम्हारा दूध निकलता है क्या भाई भैंस का कैसे दूध निकलता क्लच कह रहा है सांड दूध नहीं देता कुछ और दे हाँ एग्जैक्टली तुम्हारा दूध निकलता है क्या विजन तुम ऐसा बोल रहे हो अभी मैं तुम सबको टाइम आउट देने वाली हूँ किक करूंगी सबको यहाँ से टाइम आउट ये मेरा रूम है ना मैंने क्रिएट किया है तो पैनल से किक कर दूंगी ना मेरे स्ट्रीम पे जा रहा है नहीं जाएगा करो फिर पैनल से किक कैसे करोगे तुम ये मेरा पैनल है तुम अच्छा बेटे तुमको ठीक करके दिखाओ एक मिनट एक मिनट इसका वॉल्यूम आउटपुट वॉल्यूम एकदम जीरो कर दिया आपको हाँ बोलो न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोलते हैं क्योंकि हैप्पी ओल्ड मतलब गाइस ज्वाइन करो पैनल का वॉइस क्योंकि अभी 2019 में बोला था हम लोग ने हैप्पी न्यू ईयर बट वो न्यू ईयर हैप्पी नहीं निकला तो अभी नेक्स्ट ईयर क्या बोलेंगे एग्जैक्टली बोलने से हो जाता They're still not able to make it happen. Revenant's just dominating with that Holger over. हो जाता भाई हैप्पी तो विजन तुम्हारे लिए तुमने कितना ट्राई किया बताओ तो Even on weak side, Revenant still तो विजन का हैप्पी था मैं बहुत ट्राई किया That's so good for them because when they actually गाइस जिसको भी पैरेलल के बीच में वही है तो क्या हैप्पी का डेफिनेशन गाइस जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ मैं पैरेलल का लिंक देता हूं आके बातचीत कराओ and then we start to see them अरे पैरेलल का लिंक विजन का है देना in the second half of the game but actually ये एडिट कर दे ट्रेडिंग के sorry Revenant start off on good side first okay so
we'll see, you know, if गाइस इसको भी आना है जल्दी आ को जाओ मेरी याद आई क्या एकदम नहीं प्लीज भाग जाओ इधर से they have a nice setup across the map. प्लीज इधर से जाओ तुमको बुलाया नहीं मैं आया गाइस join the parallel link if you want to talk to us and take me out over please man up thank you so He's much going to continue to lock it in setup here for Vitality. They're going to get their first lead change here in the map. और केशव लौड़े ये दोनों एक कपल है चुप कर साले Your goal is not necessarily to try to be at the end of the half beating the other team. Your main focus is just to try to minimize the snowball effect of being on the wrong side and having that ability to typically get kills easier. And it looks like we might see a C-flip. बल्ले 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 अबे मेरा ट्विटर देख It looks like he might be able to evade. Sam's is pushing up, and maybe an unfortunate situation. He doesn't have a whole lot to work with right here. He's got teammates backing him up, but it looks like Vitality Happy Onam everyone Oman बोल रहा था कल से तो आई क्यों Oman नहीं है Oman for Revenant. And he was a मालूम है बे away from doing just that. I thought he was just going to hop in and just take his chances there, spin around in a circle, see if he can get a cap. मुझे follow करो please To decap it. somebody followed me somebody followed me somebody followed me He may get the slank on Sam's. He is going to be behind enemy lines, but Oye, he is Melo. by some Vitality members off the respawn. Oye, Melo. And as we're getting closer towards that 75-point marker in the first half of this S&D, sorry, not this S&D, Oye, Melo. it is looking like Vitality is Oye, gonna Melo. lead, and by a sizable margin from their good Oye, side. Melo. Yep, and seeing that Vitality's already had to invest some of their Oye, operators Melo. and their score streaks in order to maintain Oh, that एक मिनट especially if Revenant has been Oye, able to Melo. save those for the ये second कौन है ये half. बीबीबी योशियो है क्या हाँ टीम आईएनडी Unless अप you're just अप trying to अप अप maximize the number of kills you ये can get. बीबीबी वाले लोग बहुत अच्छे हैं Oil, बे even though he's जापानीज only लोग got 4 कितने kills प्यारे on the होते हैं ना board, already going to be on a death machine right here, and if they can get him to start performing a little bit पता more है क्या solidly, विजन especially on वो एक strong लड़का side, है ठीक है वो बीबीबी बोल के जापानीज टीम उसका मैनेजर तो मैंने उसको बोला कि वी हैव स्क्रीमिंग 30 मिनट्स उसको याद दिलाया वो बंदा इतना खुश हुआ वो बंदा बोलता है थैंक यू आई लव यू ये क्या देख लिया ये क्या देख लिया मैंने ये क्या देख लिया मैंने व्हाट और विजन का इमोजी कैसे आ गया ये विजन Zyro moves in with the Fennec. He's able to win that gunfight. He backs up towards the shifts in with the whole thing. He wins that gun battle. And now they're feeling comfortable in this moment. Vitality is trying to desperately make that play for C now, but we'll see if we're able to keep defending it. Man, we got 100 kills going up in the air, and the kill feed is all Revenant right now. They just have the better map control, and honestly, if you're watching closely in game number 1, this isn't too surprising. They were outslaying Vitality pretty significantly, and it was just a last-second push that actually allowed Vitality to get the win. That's a lot tougher to do in a game of domination, because when you get a solid setup that allows you to have good vision onto both B and C, and you're outslaying the opposing team, it's going to be next to impossible to take control. Big gunfight for Jokos winning that one right there, but it looks like we're getting to that point where the lead is about to go in favor of Revenant. There's still a lot of time to go, but Vitality's going to need to make some type of a push to get map control, as they've not really been able to find anything so far. Jokos with another point-blank shorty shot. He's going to be able to find that kill, but Monk comes in with his death machine. He's able to take down a sentry turret. We got some trophy systems going down. Some nades coming through. He hasn't flipped just yet in favor of Vitality, but yeah, they will have it. But now, using their score streaks, it's in the hands of Jokos, and now is the time in which he has to use them. The spawn won't be flipped just yet. It is going to be chaos for these players that are spawning here towards the mid-map. It seems like it's getting threatened by some of the members of Revenant here towards the later portions of this map. The pressure there, I love that pressure coming in from, I believe that was Monk towards the, actually no, that was Abyss towards the backside of spawn to kind of really distract these players to allow Revenant to get a little bit closer. क्या नाम है तेरा विजन इधर आना Vitality may close it out now.
Yeah, that was a huge double kill over on B to keep them in it. Reckless gonna try to evade, but it's gonna be Chocos. Hits the no-scope right there, and that could actually be a game save for Abyss trying to win the gunfights over on that B flag. He's still alive right now. Sam's making play after play. He got the double kill. He gets the closer right there. They've only got to hold it for a few more seconds, but Revenant players are pushing in. They're taking it back down. I don't know if they got enough time to get the cap. I think they're in triple cap territory, and with Death right there with the Death Machine, that could be enough to seal the deal for Vitality. He's spraying and praying. It's connecting. That's going to be the end of the road. They need a triple cap and fast if they're going to make the comeback happen, and it looks like there's just not enough time for Revenant to turn this one around. The clutch plays from Vitality were just too much. Too much indeed, and Vitality once again takes down Revenant, but in a more dominant fashion the second time around than the first. This Vitality team, like I said before, folks, they're playing pretty ticked off, right? And Revenant had to receive the blunt of that force. Now Vitality, they move on towards your grand finals to get revenge up against Insidious. Yeah, that's what they needed. They need that confidence boost, that warm-up. Insidious is going to be coming into this with not having played any matches within the last couple of hours. This is a huge opportunity for Vitality, who is looking iffy coming into it, but without a doubt a top 2 team currently in this South Asia region. Yeah, Vitality is definitely a top 2 team in this region. Them in अरे IND का 100% win ratio है ना? You're 1 seed and you're 2 seed. There has been, when it came down to the other 6 teams that played the tournament, we saw a lot of squads. Final आज नहीं होगा क्या? अभी है बात final. अच्छा हाँ ये हो गया ना. But as we know, we only had 3 spots to get there. Went to Revenant, Vitality, and Insidious. But in this $2,000 losers finals matchup, Vitality, man, they're gonna just keep stacking on the cash. They go on to the grand finals in a $5,000 match. Yeah, and really crucial plays for them. That no scope is clean. And the fact that they were able to hold B control for that long from weak side, not an easy thing to do. It felt like Revenant got a little bit too passive, and they weren't what they needed to do. They were so focused on playing defense. स्टिकर के बना के रखा है तुमने? हम लोग के ग्रुप में होता है ना इस उसमें. A good bad side half, okay? You know, they're only down by 25 points, and then you go back and you look how the second half happened. They got the lead, they broke that 100-point marker. Trading day. Trading day क्या है बे? They won some big gunfights, and Vitality saved all their score streaks for the right moment to close out that game. What a 3-0 victory there from Vitality. I'm happy to see finally have woken up here for the day. But केशव को निकालो बे. केशव पोद्दार को मैं कर दिया म्यूट कर दिया मैं केशव पोद्दार को. Oh fuck. मादर मैं ना केशव पोद्दार को म्यूट कर दिया. अगर वो लौड़ी जैसी बात किया तो बताना. ये सब बड़वा है एक नंबर. ए आंटी आ गई. How exciting was it to watch it all go down to the wire in that last series? I'm getting goosebumps because Revenant was just that close to getting that domination. But you know what? The play for me was RNT का रिएक्शन सुनना था ना. did in that field was just absolutely nuts. Took down 2 players, and after that took down म्यूट करना म्यूट. ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओए आरएनटी का रिएक्शन दिखाओ ना. ओए आरएनटी का रिएक्शन दिखाओ ना. बता रहे वो प्राइवेट रहेगा. ऑन स्ट्रीम. हाँ ठीक है. नहीं सुनो मैं हाँ सुनाता हूँ. रुको ये देखो सुनो. सब चुप करो. यूनिकॉर्न उसका वॉल्यूम कम करो. स्ट्रीम को बंद करो. स्ट्रीम बंद करो उसका कॉडेम का. करके बताओ. हाँ कर दिया. अब सुनो. ए मादर चोद बंद कर. सुनो अभी चुप. forklift corner. एक बंदा पता है सीधा दौड़ के गया फिर से तो दौड़ता है. सेम मैंने सुना था अफगानिस्तान में.
क्या बॉट हो तुम लोग? एक वीडियो दिखा पाते तो ज्यादा मजा आता। नहीं एकदम मजा नहीं वो आता। प्राइवेट रहेगा तो मुझे एक ने कपड़े उतार दिया ना तो वो नहीं दिखा सकते न्यूडिटी का। अच्छा। यूट्यूब स्ट्राइक कर देगा पूरा जो मोनेटाइज्ड हुआ है वो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड आवाजें अगर कुछ आ रही है तो आई नॉट हेल्प इट। ओके काजू खा गया, काजू नहीं है। अरे मेरे बिना रह कहाँ पाती है, आ जाओ यार मैंने सोचा कि जान छूटी बला टल नहीं, मैं तुम्हें सर पे मंडराएगा। चल बे चलना। कहाँ चलूं बता? अरे बाय गाइस 18+ मेरा बात सुनो, हो गया है क्या ये बताओ पहले मुझे। स्ट्रीम खत्म, लास्ट मैच बाकी है, मेन मैच इंपॉर्टेंट। ये आंटी दो सारी क्यों दिखा रही है? ओ भाई ए यार अभी भाई ये संडे को कौन ऐसे फेस्टिवल लगता है यार? क्या विजन किसको मार रहा है सुबह से? तू क्यों मार रहा है? तेरे दिमाग में कौन विजन चार्ज स्मार्ट प्ले लॉन्गर व्हाट द फक। अच्छा ये ऐड था इसका, मैं डर गया कि क्या है ये। चार्ज स्मार्ट प्ले लॉन्गर व्हाट द फक भाई। ओ ट्राइब इज बेस्ट। अरे ये ऐड दिखा रहा है सोनी एक्सपीरिया का, चार्ज स्मार्ट प्ले लॉन्गर। ओ भाई ये बॉट इतना बात करता है। देखो दूसरे कौन से। हाँ तुम तो भाई दिमाग में यही चलता है तुम्हारा। अब 5 मिनट की छोटी कर लो। 5 मिनट का बकचोदी। क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ पूछो। अच्छा सुनो यूनिकॉर्न, बाय द वे ये हम लोग जो इधर पे आए हैं स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, मुझे और विजन को पेटीएम कर देना ठीक है, वो जो 2-3 लाख है। हाँ बताओ विजन। पेटीएम के लायक सुनो यूनिकॉर्न, तुमको पता है कि इतना तुमको जो मिला है ना सुपर चैट, उसमें से सोलो ने जो दिया है मेरे नाम पे दिया है, चिन्मय ने मेरे नाम पे दिया है। ठीक है चुप बैठो वे। तो ठीक है ना, वापस दे देना मुझे। उसने 200 रुपए दिया था, नहीं उसने 100 रुपए दिया था मिस्टेक के बारे में बोलने का, 200 दिया था मिस्टेक को हटाने का, 500 दिया था मुझे हटाने का, बस। के बीच में तुम पैसा ला रहे हो। ठीक है वाईटी पे पेमेंट गिफ्ट कर देते। दोस्तों के बीच में क्या लाते हैं विजन? एक मिनट दोस्तों के बीच में क्या लाता है विजन? दोस्तों के बीच में फ्रेंडशिप ले आता है भाई। और क्या तो वेल से कुछ बचा ये कैसे क्वेश्चन? मुझे लगता है कि विजन सिंगल कैसे है? विजन तो है ना, मैं सिंगल कैसे हूँ? मिस्टेक तो पूछो। I'm single because मेकअप मेरे मेरी बिल्ली है, उसको दे सकते। बिल्ली से शादी हमेशा बिल्ली। विजन तुम क्वेश्चन पूछो ना, बिल्ली कैसे बीच हो गई भाई? तो बीच बिल्ली थोड़ी ना होगी, तुम बताओ ना यार, क्वेश्चन पूछो। अच्छा सा बिल्ली लड़की है लड़का है क्या? तो मैं बोल दूंगा उल्टा सीधा, तुम पहले बताओ कि क्या क्वेश्चन था तुम्हारा। क्वेश्चन ये है ईयरफोन क्यों बोल? क्योंकि गांड में नहीं डालता ना, ईयर में डालते, तुम ईयरफोन बोलते हैं। कैसा क्वेश्चन है? बोलते हैं फोन से हम कॉल कर सकते हैं, ईयरफोन से कॉल सिर्फ क्या बोल रहा है ये? विजन आज मांग I will ask a question, जिगरप्रीत। हाँ पूछो ब्रो, जिगरप्रीत पूछो। ये मेलोडी चॉकलेट की दे जिगर। हाँ मेलोडी चॉकलेट पूछो, बोलो नहीं, क्वेश्चन बोला नहीं जाता, पूछा जाता है। हाँ क्योंकि विजन का दोस्त है। What is dark matter? अब बता। What is dark matter? What is dark matter? Dark matter वो है ऐसा मैटर जो डार्क तुम्हारे दिमाग में। कौन पूछा डार्क मैटर वाला? अच्छा हाँ जिगर जे दे आई गेस दे जिगर पूछा ना।
डार्क मैटर तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता किसका एक और है ये मेरा नहीं है बे। तेरा विजन का हो रहा है, विजन का आवाज आ रहा है। डार्क मैटर जितना देखो, मैं जितना बोलता हूँ सुनो, डार्क मैटर का जितना देखो, डार्क मैटर हाइपोथेटिकल एक मैटर होता है, ठीक है, जिसका नहीं, अभी ये तो सबको पता है, हाइपोथेटिकल है, वो कुछ प्रूव नहीं है ना, वो जो यूनिवर्स का वो है, और उसका कुछ फॉर्मूला डेंसिटी ऐसा कुछ भी है, वो पता नहीं मुझे, बट इतना तो पता है कि हाइपोथेटिकल कुछ एक मैटर इस यूनिवर्स का। करके सो जाओ। तुम चाटू क्यों ए हट साले, गूगल में वही लिखा है डार्क मैटर, गूगल में लिखा है डार्क मैटर। अरे छूती है मुझे लगा इसको मेरे को ये छूती, सुनो, ये सबको पता है कि हाइपोथेटिकल है, तुमने क्या बोला खुद कि साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया, अगर कोई कुछ प्रूव नहीं करता है प्रूव नहीं कर पा रही तो चूतिया है कि साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया, कैसे बोला पर हाइपोथेटिकल का मतलब बताओ, तो हाइपोथेटिकल का मतलब बताना एक बारी, जिसका सेंस नहीं बनता। अरे वो क्या बोल रहा है तू? ओ भाई इसको निकालो यार, हाइपोथेटिकल का मतलब नहीं मालूम इसको। भाई डार्क मैटर कौन पूछता है? जिगरप्रीत बोलूं तो क्या तो कौन की स्क्रीन पे देखो मैं पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मेरा क्वेश्चन नहीं है तो हाइपोथेटिकल का मतलब नॉनसेंस, पागल, गॉड्स आर नॉनसेंस किसने बोला? अबे वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा भी वो है या फिर नहीं है। हाँ उसको assumption बोलता है हाइपोथेटिकल को, हो रही है क्या? मेरा रिमोट किधर गया? देखो कुछ ना जाए। क्लच कर रहा है, गॉड्स आर हाइपोथेटिकल, यूनिवर्स इज प्रैक्टिसिंग एंड यू आर यस। ए फर्क आ गया। कहाँ है फर्क? उसका थोबड़ा दिखा फर्क, तुम्हारा थोबड़ा दिख। फर्क, लेट्स गो फर्क। मोलोटोव मार रहा है? वो अच्छा, ये कब का वीडियो दिखा रहा है माँ का? भाई तू बंद करेगा बजाना प्लीज? भाई तू एक बार उसको देख रहा। मैं देख नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ भाई आवाज उसकी। तेरे को बचाया जा रहा है, तू उसको देख जा रहा है। देखो बॉबी डर गया। हाइपोथेटिकल बॉबी नहीं डरा बे, पॉपकॉर्न वो मुझे जापान का देखना है, 8/28 को स्ट्रीम करेंगे गाइस, ठीक है, 6 से 28 अगस्त को स्ट्रीम। हाँ अभी WC स्ट्रीम करेंगे, सब पागल हो क्या तुम लोग? WC स्ट्रीम करेंगे हम लोग, पूरा WC। अरे इडियट, अरे गांड मारा रहे तू अपनी, गांड मरवा लेना। मैं जानता हूँ जापानीज की टीम को, बहुत अच्छे प्लेयर है भाई और बहुत काइंड है। काइंड तो मत कर लिया। काइंड तो मैं भी हूँ। अरे भागो इधर से। The antonym of hypo is practical। अबे ये बंद करोगे इधर तुम लोग? Guys only 77 likes कैसे? इधर आजा, ट्रेडिंग डे चोद रहा था अच्छा बैठ के। ये तो चूतिया बंदा है बे। आइसक्रीम लेके आ रहा हूँ, गांड लेके आ रहा हूँ, सिर्फ खाना है चूतिया। देखो अभी आवाज सुन रहा है, तोड़ दे उसको, हाँ तोड़ दे उसको पकड़ के। तेरे से बॉबी चेयर पे बैठा है, अभी ये दफ्तर बैठ गया। लेकिन जो भी बोलो इनका मस्त है प्रोडक्शन में। बॉबी एंड मॉमी खड़े हैं। आईडी वर्सेस वाइटैलिटी गाइस, लेट्स गो बेट, दिस इज द बेस्ट। क्या हंसेगी ना अभी तो वो होगा। काजू ये बोला कि क्लच से बड़ा चूतिया कोई नहीं।
ऐसा बोला, मैंने मना किया उसको, मैंने मना किया, ठीक है, मैंने मना किया मत बोलो, बट फिर भी बोला कि क्लच जैसा चूतिया नहीं देगा, मैंने मना किया फिर भी। अरे ये क्या पागल है बे। बॉबी का शर्ट घुसा किसने दिया अंदर और निकाल किसने दिया बाहर? अबे इसने उसे निकाल दिया। छी भाई, छी भाई, अरे भाई यूनिकॉर्न को बीजे में डाउनलोड करो, स्ट्रीम करना है। ओए लाना वो पहले का ही है पागल। हम फिर देखेंगे। उसको बैठा दिया किसने पकड़ के, बैठ 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 इधर। न्यूट्रिन ने मारा होगा, बैठ इधर पोजड़ी के, इंटरव्यू दे। नहीं तो बॉर्नविटा नहीं मिलेगा। पागल साले आईजीएन है वो इंडिया का IGN है, बट इंडिया आगे तो बढ़ ही नहीं पा रही। कैसे इंडिया वो इंसीडियस है बे। लन नहीं गाइस, लोग उसको लन बोलते हैं, लन। अबे लर्न है, और कुछ लोग तो लंड बोलते हैं, मालूम? न्यूट्रिनो खुद लंड बोलता है। तुमको विजन क्यों बोलते हैं? तुमने विजन क्यों नाम रखा? परसियस विजन गाइस। हैशटैग परसस या क्या नाम था? परसियस। इसका हाथ देखो फटाफट। परसियस विजन। वो देखे ना मोबाइल कितना ऊपर आके खेल रहा है वो सर के ऊपर। अभी मांग पाएगा मंक। लोग तो इसको मोंक बोलते हैं, मोंक। अरे मोंक ई लगाना भूल मंकी। परसियस विजन। अरे भाई लैन आया। अबे नहीं आया अभी तक। प्रेशियस विजन नहीं। अरे मैं कर दूंगा। इतना पैसा है ना। विजन तुम्हारी कितनी गाड़ी है ये बताओ? गाड़ी टेम्पो। स्नैक्स। हाँ स्नैक्स तो बहुत। ये देखो मंक आया, मंक विटालिटी। उसको नींद से उठाया, उसको नींद से मैंने उठाया। उठ मंक उठ, इंटरव्यू है। मेरे पास एक गाड़ी है रिमोट वाली। हाँ बचपन में थी। तो गिफ्ट पहले दिन। लेकिन सबसे अच्छा मॉन्क बोला। मैं तो सुना monk. Going into something like stage 4, we don't have a set list of teams that would be a threat to us. I think every single team would be. ये हंस क्यों रहा है तू? ब्लश कर रहा है क्या तू? We have to treat every single team as the same threat. So I won't name one. अबे what the fuck, ये क्या देख लिया? Watch out for, and they should do the same. I think a lot of people misinterpret grinding. सब टीम मुझसे डरते हैं, समझ गए? Again and thinking that I'll just become a broker out of this. मेरे पास एक घोड़ी है कॉडम। मेरे पास एक घोड़ी है कॉडम खेलने वाली। अरे आई थिंक अंकित meant this. That would be my advice for everyone, always. आज उसका शर्ट ऊपर नीचे कर दिया किसी ने। किसी ने खींच दिया, किसी ने कपड़े पहने उनके कपड़े कलर बदल के। चुप बैठे भाई। मेरे को काम आ गया था, क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, फाइनल कितने बजे देख लो। अभी फाइनल है ब्रो, फाइनल लास्ट ईयर हो गया। अभी ये फाइनल है। IND has lost 0. ओ भाई देखना 100% इंडिया में तो बेस्ट है ना वो, एक रीजन की वजह से। विजन अगर वो जियो वाली टीम जिसके सामने तुमने खेला था वो आती तो उसका क्या हाल होता? कुत्ता बनते हैं वो लोग। बिना VPN
just for an individual player, but across the entire मजा तो team. लैंड How मजा तो do you लैंड get to that level of ये dominance? सब क्या ये सब It's क्या just so hard just because the हेलो individual ने बोला था मैं Insidious इनको is absolutely crazy, लैंड में आधा तुम्हें with a leader उधर like हाथ भी क्रॉस नहीं कर हाथ भी क्रॉस नहीं कर his पाओगे video in the Call of Duty Mobile esports सीधा page. I बोल learned a lot from him, but you know what? Monk is no joke as well. Monk, He's going to be Monk. guiding his teammates, especially seeing Insidious yet again here. They're not going to give up. Yep, I believe we have our maps for this matchup, so this is going to आपको be BGMI a really खेलनी fun है one to watch. Anytime that I ठीक see है कैसा this, तेरे को तेरे को immediately I get मेरा excited. So we got एक्सपेंसिव है Summit मिल गया Hardpoint Game number 1. मैं And this वापस is नहीं one where करता we actually अबे saw things sensitive get करके pretty खेलना lopsided for इंस्टॉल कर Insidious versus Vitality. Maybe not a great sign, but we got Hack the Yard, Search and Destroy, and if there's anything that I feel like Vitality can trust right now, it's their Search and Destroy, rate domination. Need I say more? It's just beautiful. Firing range hardpoint. If we go to a game 4, and if we end up in a game 5, it'll be standoff, Search and Destroy. Why does it feel like the maps are kind of favoring Vitality right now? Just because of the snipers in Search and Destroy. Hacking Yard is going to be so good for them. But knowing Insidious, they're not going to be an easy team to beat. From their track record below us, it's going to be that, oh, they have 0 losses. There's a reason why they're that top team. That top team in South Asia. Not only that, they really want to win this without any flaws. Yeah, I think right now, if you're Vitality, you've got to focus on these initial gunfights heading in to Hardpoint on Summit. You cannot allow for Insidious to get an early snowball. If that ends up being the case, it's going to be a quick match. But we are here. We're underway. Vitality spawning bottom side right here, and it is absolute chaos. Nades, left and right, concussions. They've got it all. It's Insidious winning those first couple of gunfights. Vegas, Learn, picking up those early Let's go guys. Let's go guys. अब फिर से आ गई ये भाई That's going to be very Let's surprising go! because we see IND! 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 India India they are getting the positions. India! 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 I don't know if I've seen Vitality win a gunfight. तुम लोग स्टेज 1 क्वालीफाई हाँ मैं हुआ था स्टेज 3 तक क्वालीफाई हुआ था मैं बट टीम नहीं थी Sims wins a gunfight and then immediately gets traded out by Vegas. They are just zero vitality India building and building and कुछ तो जियो का एचपी समिट जैसा ना हो जाए समझ रहे हो ना confident in what they're doing right now. IND गाइस स्पैम कर दो IND गाइस चैट स्पैम करते रहो वही तो बोल रहा हूँ गाइस IND स्पैम करते रहो चैट में गाइस सब लोग IND इंडिया स्पैम चैट स्पैम करो चैट स्पैम करो चैट स्पैम मार रहा है लेट्स गो but then just like that is going to be so what the fuck मारा वो गाइस स्पैम करो चैट स्पैम करो here in P2. It's going to be absolutely hard for them to go in for the break. Yeah, this is just rough to watch right now. Joko's gonna find it too. विजन स्पैम करने लगे चैट मून किधर है अबे मून तुम इधर स्पैम करो चैट आके मून किधर अनबिलीवेबल बोला Oh my god, IND god. Not able to connect there either. Death pushes in. They get 2 points, but that's not going to be enough. मुश्किल से इधर चैट करो इधर जस्ट फन इधर स्पैम करो to turn this one around. I feel like they're on a mission right now. ये नाइट बॉट किस स्पैम करो Scrap points are going to be given right now, and Trunks is going to be the only person. IND is the proud of India. Oh my god, भाई god, क्या कोच हूँ मैं बे IND का बहुत Let's go IND. IND ओपी स्पैम कर दो Be the IND स्पैम करो 90 अरे वो वैसा होगा Be the IND Snacks Gaming ये कर रहा है ये 150-14 जैसा इन्होंने किया था ना गलत IND भाई विजन IND का अकेला बंदा बैठा है एग्जैक्टली भाई
भाई 150-14 विजन याद है 150-14 किधर हुआ था? सेम 150-14 ओ भाई गोल गोल मार रहा है। लेट्स गो आईएनडी लेट्स गो। लोग बोल रहे हैं न्यूक देम नहीं इतना भी नहीं इंडिया की अबे तो क्या हुआ विजन पैरिस से ऑर्डर नहीं है शायद इस बार। अरे ठीक है चलो मैं दल जीता है बोल रहा है बीटी आईएनडी। क्या बोल रहे 47 किल्स किसके हैं बे? पागल है क्या? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me, bro? कौन है 47? BTIND easy 3-0 स्मैश लिख रहा है BTIND easy 3-0 उनके लिए तो कुछ था ही नहीं। ओ भाई वार्म अप मैच है विजन क्या वार्म अप मैच चल रहा है रैंक मैच चल रहा है शायद। जोकोस गो इट चोकोस अबे माँ के साथ क्या मदद कर आईएनडी भाई इन लोग अबे इनके बूट कैंप में देखता है मेरे को जियो क्या चल रहा है भाई इनके बूट कैंप में क्या चल रहा है? जी जी भाई इनके बूट कैंप में क्या है? वो सो गए शायद बोले कि चलो ठीक है 2 गेम जीतते हैं फिर $15,000 भाई। एग्जैक्टली इनके लिए $15,000 कुछ नहीं है भाई। होगा बे हाँ UnicornCODM XGP Julda they have such a hard time. Those gun skills on, and that is important here. We already saw it in that second hill. V for Vegas कर दे ओए V for Vegas कर दे V for Vegas मैं तो V for Vegas करूँगा V for V for हम कैसे होता है भाई तुम क्या इंग्लिश स्कूल से पढ़े हो क्या? वी मतलब क्या है हम ना वी वर्जिन वी वर्जिन में क्या गलत है बे? दूसरा कुछ नहीं मिला वी फॉर वैलोरेंट भी है ये देखा अबे लिख रहे हैं मैं तो वी फॉर वेगास स्पैम किए जा रहा हूँ वी फॉर वेगास against Revenant, and I think if they're gonna make let's go IND गधा लग रहा है भाई IND is the best bे कैसे calm down too bad vitality is so much देखा मुझे बोल रहे थे चैट में तेरे को बोल रहे हैं वो मैं तो कॉडेम के चैट पे हूँ ए स्नैक्स वो क्या बोल रहे हो सुनो I can't see V for victory in chat. Let's go India. Oh भाई Frax Gaming आके चैट पे बोल रहा है I can't see V for victory in chat. Let's go India. Oh भाई abusing caught live. Okay भाई इतनी जल्दी खत्म कर दिया ये क्या हुआ? Vegas is going to be going down, and this is going to be this dude. Clutch up. Moon is let's go no क्या हो गया सीटी क्यों मार रहा है मुझे देख के ऐसा मत कर ये अच्छी आदत नहीं है ये सारे V for defeat ये क्या है भाई V for Vodafone V for वड़ा पाव M for missile crouch walking, not able to hit the first shot. You only need him though. Needs to hit the quick scope. He's not going to be able to make it happen. Neutrino with the slide, able to evade. Insidious takes. bye That was a tough spot to be in. And if you're Moon, it's like that
clutching up that 3v1 clutch. अरे एक मैच हुआ That's क्या? the last thing that you need to be as a team. You should always, पागल है क्या तू? always not make it to that नहीं मैं अभी आया हूँ right now. Very aggressive इसके पहले वाले मैच में आईडी ने वाइटैलिटी को 150-26 कर दिया। क्या? 150-26 एग्जैक्टली ये रिएक्शन था सबका। ए भाई फॉर विक्ट्री के बाद हनी का फोटो क्यों लगा रहे हो? अबे तो उनका सिंबल है ये, चांद का सिंबल है। तुम्हारी बहन वाली भी उसका पेटलिंग नहीं हनी भी तो नहीं है भाई, फिर मार दिया। तो भाई क्या ही सब करेक्ट चला रहे सबके सब। There is no reason why they should be aggressive here. They overpushed. They even have the advantage. इधर ही हूँ, मेरी याद आती है इसको। देखो भाई मैं आई हेडफोन्स पहने, यूनी कहाँ है? मत कर ऐसे, उसको उसको लग रहा है कि उसको याद कर रहे हैं। छी भाई भागो भागो इधर से। जब मैं नहीं रहूंगी ना तो मुझे सब याद कर। याद किया ना अभी तो चुप रहे ना। ओके अबे यार आईडी यार देखना ही नहीं है मुझे, आईडी पहले ही पता ही है भाई। ये क्या लैंग्वेज है यार? ये सब क्या पहले की क्या लैंग्वेज है यार? आईडी ना धोएगी इसको। मिस्टिक भी ऐसे गंदे तरीके से बात नहीं करता यार। हाँ मैं कभी बोला कि काजू चूतिया है, ऐसा नहीं बोलता मैं। मिस्टिक नहीं बोलता बट मिस्टिक तो पढ़वा है। काजू और भी मिस्टिक की साइड पड़ गई ना भाई। ये लोग 6-0 एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही, फायदा ही नहीं है देखने का भाई। जियो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग था पता है। हाँ पैसा वापस दो अपने भाई कोई इसका पैसा कब लिया भाई? इससे इंटरेस्टिंग मैच वो था टीआर वर्सेस आरएनटी। वी फॉर विक्ट्री कहाँ गए? चैट में दिख रहा नहीं कोई। और स्नैक्स गेमिंग लिख रहा है वी फॉर विक्ट्री कहाँ गए? चैट में दिख रहा नहीं कोई। अबे कोरा पीछे से कोरा पीछे के तुम्हारा है कोरा। चुमतिया भाई। Justice for BR community lol. By himself right now. He's going to slide the top side. Not even in that gunfight. The sniper's there. Finds one player right outside the window. Shotgun to the face. Shuts him down. Shotgun. 4-0. Shotgun. 4-0. भाई क्या भाई कुछ भी चल रहा। V for Vegas, let's go. कर दिया। By 6-0 or what? नहीं ये राउंड निकाल लेंगे। ये कॉर्डन को सुपर चैट देने का ऑप्शन नहीं है ना। 5 people watching. 5.5. V for victory but it's for IND or V for victory but it's for IND or। वो यार क्या न्यूट्रिनो क्लच कर पाएगा? यार न्यूट्रिनो से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हम भी याद करते हैं, आपको काजू का ही दिखता है। नहीं कोई याद मत करो मुझे, भाड़ में जा। अरे क्लच समझता नहीं है, ये अंदर की बात है। साल तक वो भाड़ में जा। And obviously, team's not really hurting. They're still up 1-4 right now, but you know Search and Destroy can turn on its head at any point. We're switching sides now. Vitality's going to be on offense. This could be a huge turn. This could really work for them, and aggression isn't going to come. And that's a good thing, just because, Monkey hits a hit marker. That was very unfortunate, 1-6 होएगा। क्या लगता है तुमको? Whoever got that hit mark. The top L patrol is going to be so important. बैट लगाते क्या? हाँ चलो हाँ बैठ लगा ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1-6 होगा। मैं बोल रहा हूँ 2-6 ठीक है चलो 1-6। काजू अगर 2-6 हुआ तो तू मेरे से बोलेगा मिस्टेक भाई तुम गॉड हो, ठीक है? अगर 3-6 हो तो मैं बोलूंगा काजू भाई तुम गॉड हो, ठीक है? 3-6 हुआ तो मिस्टेक टैटू करेगा। क्लच कह रहा है 6-4 होगा, इसका तो अलग ही चलता है। चलो नहीं देखते हैं ना, देखते हैं अभी कितना अलग होगा। बनने के चक्कर में
क्या मत बनो यार। मैं बोला 6-2, थोड़ा ये बोला लॉजिकल। 6-3। मैंने ये तू 1-6 वेगास में बोला। नहीं है, तू लीगली बैटिंग नहीं कर सकता 1-6 ही होएगा, देख लियो। बस जीत गई आईएनडी समझ लो। अच्छा हाँ, मिस्टेक तो 18 प्लस भी नहीं है भाई, बेचारा बैट भी नहीं कर सकता। हम मादर चोर में 18 प्लस हो गए लौड़े। तेरे को बम्पर को अलाउ करते हैं? ओह 6-2 होगा। ओ भाई क्या मार रहा है, वाह कसम। लाइव कर दिया। फुल रश किया दिया भाई, इन्होंने। विजन वाली बात सच हो भाई। सकती है। एक और विजन वाली सच हो। 6-2 एक और निकलेगा भाई। 6-2। हाँ बट लॉजिकल बात करें ना, स्कोर क्या चल रहा है। ऑब्वियसली आईएनडी क्या गंदा पेल हुए इनको। ऐसा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी 0-4 रहते हैं, फिर हम जीत सकते हैं। वो हम लोग होते हैं काजू, ये आईएनडी होता है। वो जब तुम नहीं हो, वो जब तुम नहीं हो, हम लोग का कमबैक रहता है। जब तुम आते हो ना, नहीं तब 4-0 से 4-5 हो जाते हैं। भाई सिर्फ मैं और यूनी खेलते तब मैं बढ़िया खेल लेता। अच्छा कुछ भी, हाँ कुछ भी है। पैसे की तो घूमता है। चल लेट्स गो। सॉरी बोल मुझे। चल इजी 2-3 कम ऑन। अबे नहीं आईएनडी जीतेगी, 2-6 ही होगा। 6 तुम्हें बोला ना 6-2। 2-6 होता है 6-2। ओह मां कसम। मून बेचारा। मून बेचारा भाग भाग भाग। भाग के बोचड़ी के बोचड़ी के भाग बोचड़ी के भाग बोचड़ी। सब इसके मारेंगे भाई इसको। ओए बोचड़ी का। भाई हमें पता है ना वो कौन आने वाला है। सुनो तुम चुप बैठो ठीक है, हार तो गए ना, अभी बोलो मिस्टर तुम गॉड हो। ओए इश लेट्स गो। विजन में ना सेम खेला कि एक दे देता क्या यार काजू, गेम में भी हगो, प्रेडिक्शन में भी हगो। अच्छा बैट, थैंक्स। ठीक है चलो, ये अच्छा बंदा है, अच्छा तुम्हारा उखाड़े क्या हम? गाइस चलो जीत गए, आईएनडी जीत गए। लेट्स गो। एक और है ना बेस्ट ऑफ 5 एक क्लच कह रहा है, आईएनडी का हेटर है। आईएनडी का हेटर है। इसका एसएस लेके भेजो न्यूट्रिनो को जल्दी। बोले नेक्स्ट अरे वाइट They went to Bravo, gets 2, not even, they don't even BD hit it, IND, they could have planted there already, but they just wanted to make it work and show everyone how good they are where they place. Rotated all the way back into spawn, going back into that planet Alpha, that was absolutely insane. Yeah, right now, things looking pretty grim. ओए पुजारी They find themselves down 2-0 to a team कम्युनिटी को डोमिनेट करने वाले लोग above a 2.0 KD in respawn. And they're getting ready to hop back into respawn. Is there anything Vitality can do to prolong this series? Domination is a game that they can actually clutch up. We've seen it already. A reverse sweep can actually happen. They have the hardest time to really beat Insidious just because of how hot they are in those past 2 games. And it's not even like a really big win. It's a really huge margin of the points. Yeah, it's just not looked remotely close. Hoping that the match that Vitality had earlier, that Rio could give us confidence, but it just shows you there are levels to this. Like, the fact that Revenant able to beat True Rippers, but then Vitality so easily beating Revenant, Insidious easily beating the number 2 team in the region right now, just shows how dedicated they are to the game. A 150-26, a 6-2, and looking like they are well on their way to that $15,000 first prize. Those numbers don't lie. Now 150 and 26, that was just spare change right now for Insidious. They gave a bit of points. They could even push it further and make it even into a 20. We'll see. If domination is going to be the same one that we saw Insidious give the other team, it's going to be so आईएनडी सही बोली ना, मतलब If
there's a time to make it happen. IND बोली थी ना तुम लोग ओए मुझे जाना होएगा तुम बैठो मैं spot in stage 5, but you want the brand to that #1 spot. You want that extra $5,000. We'll see if Team Vitality can turn it around right here. It's trades off the start, a little bit of progress for Insidious. It's going to be Neutrino trying to hold top laundry, control Sam's right there around the corner. Wins a crucial gunfight. That is exactly what they need off the start, especially keeping in mind that Insidious is spawning over on that A side where they have that easy access to top laundry. Big plays for them right here. Yeah, Sam's was so impressive there. Getting that 2 kill in top laundry is essential. And we can see that it's going to be Team Insidious having that favorable spy of having that alpha flag. Because if you don't get top control laundry, you won't get that Bravo flag or you're going to have such a hard time. It's not going to be taken yet though, as this one person over here is going to be one person. Moon is going to be in gallery creating that pressure. Yep, and it looks like Vitality is actually going to try to push for the A flip right here. Monk is all by himself over there, seeing if he can make something happen. Trunks will be able to get the assist, learn with a 2-piece right there. And Moon pushing out, but they actually get the AC cap right there. That's not easy to do at all, and Monk able to do it by himself. Death throwing out the nade right there. That's going to slow down the C cap. That could give them some early laundry control. This is a huge opportunity for Vitality. Okay, I'm pretty confused as to why Insidious actually gave up the A flag. As you already know, the A flag is what you need to get, but then it just seems to be like they're having a little bit of a struggle going into that cap, even though they have that strong side. Vitality, though, a 3-man push into this flag is going to be able to actually get that problem flag, but no! Learn with the triple kill! Oh, and that's why these players love the Holger, the ability to do such high damage with 100 bullets in it, making that 3-piece look like nothing, and what looked to be a massive opportunity from Vitality immediately erased by Insidious. Okay, I have a theory. Maybe they did it on purpose. Maybe they went to Charlie just to challenge themselves even further, knowing very well that, okay, if we're going to be an alpha, we're for sure going to be getting this round, and this is what we're seeing. A 2-man push going into Bravo. Will they be able to get it? Oh, just slowly like that was able to get it, but then there's going to be 2 members on the side of Insidious. And Sam's able to win the gunfight right there as well, so he's going to be able to get out. They could potentially reposition to hold this mid-map control as well. 2 players pushing from the backside. Monk loses the gunfight. Trunks going to be able to regen, but he's hit by a concussion. Sam's time and time again making the big plays when Vitality needs him, and right now they need him more than ever. Sam's is going to be so vital for Vitality. He is the lifeline of this team right now, but then the cap in Bravo, Insidious is going to be unstoppable, and even at the unfavored side, they have top laundry control even though they're spawning out in Charlie. Yeah, and honestly, if you're Vitality, you don't need to worry a ton right now. You know you're going to spawn an A side. You can get that top laundry control. If they play it well, they very much still have a really good chance at winning this game, even if they're not able to get B back. We see Joko's only 2 kills on the board. If they're going to win, that has got to change. You cannot have players struggling that much, especially against one of the best teams in the world in Insidious. They win a big one right there. They get the AC split once again. Looking over at Insidious, Vegas struggling more than we expected as well. Only 12 points separate these 2 teams. IND जीत जाएगी 75-63 स्कोर है. Vitality really went. Let's go IND. First round में. Now that they're going to be spawning off the stronger side here. फिर BGM डाउनलोड करके आना पे. At the same time, you need to do mid control as well. So really just absolutely shut BGM आई खेलेंगे. Yep, both teams making a push over for B. Death, top side of the statue right here. Vegas slide in the corner, able to win 1. Trunks wins the other. क्या कर रहा है ये गंदी चीजें मत किया कर स्ट्रीम पे. हम गड़ाई ले रहा है कि क्या ले रहा है तुम, वो दिक्कत है. Guys, don't forget to like, share and subscribe. Most players are not going to be able to hold top laundry with a Fennec, but he's one of the players that can do it. 15 kills on the board. Dead Machine ready to go. He's ready to make that push on over to A. We'll see if maybe they can get that ये बोल के गई बोल के. the top side to give his teammate a little bit of time to get that B flag. Trunks with Death Machine, but not winning the gunfight right now. It's going to be Moon with the shorty, just getting rid of him. And just like that, we're going to be seeing another control right now. Moon is going to be making big fights, and just one person is going to be able to 74-85. Sam's is going to be that person
person अबे for sure. स्कोर कितना होगा एंड में 150 130 के अराउंड अगर ऐसा चला तो मैं फर्स्ट राउंड में देखा नहीं है फर्स्ट राउंड में 75 63 था ना नहीं पूरा गेम नहीं देखा potentially an opportunity to turn ट्रिपल around क्या this entire series. नहीं They've got a long डबल way to go, but this is the start that they need. Moon set up with the Holger trying to beam off those headies, but the shorty, it comes out. He still wins the gunfight. It's going to be huge. Neutrino trying to clear out this mid area, but a huge play for Moon right there to keep that mid control. Neutrino just went for that gunfight so far away from him, knowing very well there's going to be one person from Vitality right beside him. It's going to be so tricky right now because the shorty is just so overpowered. And that AB control, now that is what Vitality needed. Right now we're going to be seeing it. They're going to be surpassing Insidious just like that. 102 and 102. It's a very strong hold. Solid defense here in Bravo. And I don't even know why Insidious went in for the swap in that first round. The composure out of Vitality, just unbelievable. The level of dominance that we saw in that respawn didn't even look like these two were from the same world, but somehow they managed to come storming back. They've finally taken the lead in this matchup. Learn going to take that top laundry control, and that could be a really big issue for Vitality. You need to get it back, you need to make it fast, but Sam pushing in, he's got that operator, he finds two, his teammate Moon finds the other. Death is winning in mid-map right now. It's gonna be Insidious trying to get control, but they're running out of time. Joko's taking it back down time and time again. They're making the big plays. They got a death machine ready to go as well. And it's Insidious, they're so close to this B control. Another player slides on. They've still got control. I don't Let's go, bro. ओ भाई एक मैच तो हारना चाहिए मजा नहीं आएगा Big kills, almost 130 हो गया but then his teammate was there for the assist to just top it off. Now this mid-map control is क्या going to be guys नो ये क्या स्पैम कर रहे हो रजा Learn is going to be having big kills, 22 already for his name. Moon is going to be having a death machine of his own. करने दो पता क्या वाइटलिटी और मन नहीं कर रहा स्ट्रीम करने का प्लीज ओ नो 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 अभी भी चांस है मां कसम बैंग क्या मार रहे हैं ट्रिपल कैप में सिंगल कैप किया ना क्या ट्राई हार्ड आईएनडी क्या ट्राई हार्ड कर रहा है मां की ओ भाई क्या स्पॉन ट्रैप दिया है बे ओ नहीं आईएनडी कम बैक करेगी आईएनडी जीतेगी ओएमजी आईएनडी जीतेगी लेट्स गो जीत गो इसको कहते हैं ना ऐसा मैच होना चाहिए जीत गए मैं ग्रिम को कॉल करके आता रुको ग्रिम को कॉल करेगा क्लैरियन स्पैम कर रहा है बी दी आईएनडी कब से कर रहा है ग्रिम अबे स्कोर का आउट कर जीत गए से 140 कुछ 147 These Insidious players are just so talented. They still found a way to snowball it and get the win. Not only did they get the win, and I feel like that was an experiment on their end. That really was questionable. हो गया ना ये रुको मैं भी लर्न को मैसेज करूंगा ऑनलाइन है बंद कर सकता है ना नहीं कुछ बंद नहीं कर सकते क्या गधा है क्या हो गया Yeah, I mean, that's just the perfect way to cap it off, like showing, yes, we have our flaws, we make mistakes, but even when we make mistakes, we bounce back and find a way to win. Let's go, babe. अभी BGMI डाउनलोड करो यूनिकॉर्न मेरे पापा ने मुझे लुक पे लुक दे रहे हैं क्योंकि मैं ये आईपैड लेके बैठी हूं सब आए मुझे जाना पड़ेगा तो रात को BGMI और तो BGMI के लिए अभी नहीं अभी सोचा नहीं मैंने ड्रॉइंग में प्रेशर में डाल ए गाइस प्रेशर डालो गाइस चलो बाय बाय आईडी जीत गए I was about to mention that actually.